जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खैरियत से। सर हमने आपको सुबह सुबह तंग कर दिया एंड नो वी प्रॉब्लम। हैव डॉक्टर आमिर सगीर सीनियर एग्जामिनर सुपरवाइजर एंड very good neurosurgeon from Yakut Mission Hospital, and we will take the opportunity to uh, I mean ask him कि सर इनका भी 1 महीना रहेगा एग्जाम के अंदर ना ऑलमोस्ट। सो जस्ट आप एक क्विक सा अगर आपको कोई सजेशन उनको देना चाहें। मीन भाई कोई भी कैंडिडेट, सर हमने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था बट वो किसी वजह से वो अभी सुबह ज्वाइन नहीं कर पा रहा, सो कोई बात नहीं। तो कोई हमें और ज्वाइन कर लेता। मुझसे बेटा कोई और होंगे ना जिनको एग्जाम देना, उनसे कहना वो तो प्रेजेंट ये करने सारे कोई एग्जाम मसला। वाले हैं बट माशाल्लाह अभी भी माशाल्लाह। ये लोग इतने रिलेक्टेंट हैं कि जो है वो नहीं तो फेस नहीं अभी करना चाहते। प्रॉब्लम ये होता है, तो मैं चल बात कर लूँ इनसे ना कि एग्जाम तो तुम्हें धक्का दे देंगे कुएं में कि तुम्हें जाना ही है। ठीक है, चाहे तुम्हें तैरना आता हो नहीं आता हो। ठीक है। अब हम्म, के कहते हैं बेहतर है कि कोशिश कर लो तैरने की एक दफा, ये कहते हैं कि तुम्हें जबरदस्ती धक्का दिया जाए। ठीक है। तो ये तो अपॉर्चुनिटी है, कहते हैं कि अपनी झिझक निकाल दो। ठीक है। और एक प्रेजेंट कर क्या होगा, इसमें कोई फेल पास तो नहीं होगा ना। ठीक है। और कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा तुम्हारा। ठीक है, सब एक ही कश्ती के सवार होते हैं। किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही होता है। किसी को डिस्टिंक्शन तो लेनी नहीं है। ठीक है। सबकी वो होता है इमेज के वो कि पास करना है हमने। ठीक है, पहले तो ये होता है, हाँ किसी का अच्छा गया, अच्छा चल रहा है और अच्छे उसके मार्क्स मिल रहे हैं तो वो तो एक एडिशनल उसको एडवांटेज। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यही होते हैं सबके गोल के पास करना एग्जाम। ठीक है। तो उसमें कोई झिझकने की बात नहीं है। झिझक होती है तो अभी तुम आ जाओ तो ज़्यादा अच्छे है। आगे जाके बहुत अच्छा लगेगा, आसानी हो जाएगी कि तुम पहले फेस कर चुके हो इस चीज़ को, फिर तुम्हें एलियन नहीं लगेंगी चीज़ें, क्योंकि गुजर चुके होगे। तो किसी भी बच्चे को ओके तुम सर। चुन लो। सर मानिक है, सर डॉक्टर मानिक इज फ्रॉम नेपाल and गुड, ग्रेट। he's already here in Karachi for the exam preparation, ग्रेट। and so he will do the case. Just for the um, uh, information, we will share a very brief history initially, and then Manik will just describe what else he wants to know in the history. Okay, very shortly. So we will have 5 minutes for history and examination to complete. I mean to take the history. So basic जो important चीजें सिर्फ आपने वो पूछनी है और हम आपको उसके हवाले से गाइड करेंगे। एंड देन द होल डिस्कशन विल बी विद डॉक्टर आमिर, कि वो आगे हाफ एन आवर का जो भी डिस्कशन जैसे नॉर्मली होता है आफ्टर हिस्ट्री एग्जामिनेशन, सो दैट विल बी। एंड देन इन द लास्ट मतलब आफ्टर 35 minutes we will have 10 minutes to disclose whatever he did about the case। और इसके अलावा भी डॉक्टर आमिर हमारे साथ होंगे, तो वो जो भी इस केस के हवाले से या और भी इसी से मिलते जुलते जो डिफरेंशियल्स के हवाले से, इफ ही वांट्स टू सजेस्ट एनीथिंग, इफ ही वांट्स टू गाइड एनीथिंग, सो वो हमारे पास 10 मिनट का डिस्क्लोजर टाइम होगा। एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट केस। सो सर वी शुड स्टार्ट नाउ आई गेस। प्लीज मानिक, डू यू नो उर्दू एज वेल एज इंग्लिश? किस सर उनको आती है, थोड़ी बहुत उर्दू आती है, बस सही है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm good, sir. I can speak a little bit Urdu, sir. ओके, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, आई एम ओके। ठीक है। Okay, sir. Okay, so now we have station one. So this is a brief history. ओके मालिक, यू कैन स्टार्ट नाउ। Uh, okay, sir. Good morning, everyone. So, I would like to ask more about the detailed history about headache. First of all, I'll ask about the site of headache, and then I'll ask about the onset of headache, whether it's a sudden or slow progressive. And then I'll ask about the character of headache, and then I'll ask her about more detail into radiation, associated symptoms, exhilarating and relieving factors. I'll also ask about the timing of headache, whether it's continuous, intermittent, or whether it is progressive, or is there any specific time of the day he has more headache. And then I'll ask more about other associated symptoms, which is like blur vision. She mentioned about it. And I'll ask about whether the blur vision was sudden or like progressive, or it started slowly. And I'll ask about whether the blur vision is on the both side of the eye or just only on the one side. And
After that, I'll do screening about the video system. I'll ask about whether she had any other symptoms like seizure, fever, history of trauma, and weight loss. And then I'll go into history of past medical and surgical, and then I'll ask slightly more detail about her occupation, and I'll ask her yes. After that, I'll go and ask her more about what she thinks about the current problem could be due to, and then I'll ask more about her concern and her expectation. And then after that, I'll go for physical examination, sir. Okay, you can continue. While doing physical examination, I'll also ask a few things that I have missed, which is like any contact with the person with the TV, or if she has a past history of TV, or see if she had any history of surgery. And then I'll take her vital examination, and then once I take the vitals, I'll do general examination at the same time while taking vitals, and then I'll check her head and neck as a part of general examination after taking permission. And then I'll start with the higher mental function test first. And if a screening test, asking a few questions regarding individual lobes. And then I'll follow the cranial nerve examination starting from 1 to 12. And I'll follow same sequence with the cerebellar examination. Once I've been done with cerebral examination, before I'll ask her whether she came by herself or assisted for ambulation. And if she said she can walk, I'll check her gait, including tandem gait, Romberg, and pronated drift at the same time. Then I'll ask her to sit down, and then I'll check her motor and sensory in the upper limb and lower limb, and in with the Babinski and frontal release sign like glabellar tap, Georgia. And then I'll summarize my history and physical examination. So, Okay. Okay, Farooq, can we show him the history? Yes, sir. Okay, Manik, this is the history. Okay. Based on this history, it seems like she has some active problem related to ICP, most likely hydrocephalus. Good. And then she has a vision issue with some personality changes. So I'd like to localize my lesion supratentorally. Okay, and in supratentoral, she has personality issue, so most likely it should be somewhere with the frontal lobe. She has no difficulty in speech. If she, during my examination, if there was any sign of speech difficulty or grave personality changes, including inattention, memory problem, probably I would dig more into the frontal lobe side during the history and examination. So, okay. Okay, we can move on to examination. Okay, sir. Okay, this is examination. Okay, Manik. So definitely she has bilateral papillary edema, so, which is sign of ICP due to hydrocephalus.
So I'll be suspecting something that's obstructing the ventricular system. The frontal lobe. So most So in likely, all, what other symptoms you are Yeah. expecting in this patient apart from headache? I'll be expecting some memory issue. Memory issue and 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 what are probably the signs urinary of raised incontinence. ICP? That could be You should be looking for the signs of raised ICP, no, right? If you suspect, you one is already headache. headache and Yes, sir. what else? What are Vision the signs of problem, raised nausea, ICP? vomiting. Thank you. Uh, So go for common ones first, okay? If you have already told me that you are suspecting hydrocephalus. You have already told me you have pressure suspecting supratentorial pathology, and especially around ventricles, and you can have signs of raised ICP. So go for signs of raised ICP first, okay? Headache is already mentioned over here, okay? We can ask leading questions during your history taking, okay? You should ask about nausea, vomiting. These are common complaints. Since when she has this nausea, vomiting, is he taking orally or not? Is he on IV or any kind of parenteral route? Okay, so unluckily we don't have patient over here. Okay, we have to live in an hypothetical situation. Okay, so you should go for yes, sir. uh, asking from initial symptoms like the signs of raised ICP. Okay, these are basic of neurosurgery. Okay, now then go for other things Yes, like sir. higher mental function or Yes, sir. whatever. Okay, then difficult, obviously, when the ICP Yes. is keep on raising. Okay, then what else she can develop apart from nausea, vomiting, and headache? Hello. I'm sorry, sir. Yes. So this is again coming back to the history. Sir is asking, what else do you expect in this patient? Apart from nausea, vomiting, and vision problem, headache, These are the basic, I no, cannot Manik? think Okay. of. Yes, sir. Why? Yes, sir. These are the basic. If the patient remains untreated in your ward for a week, what happened? It is already written over here. She is losing her vision. She will be completely Yes, sir. blind very soon. Okay. If Yes, we sir. have not treated her, or Yes, sir. and She might also develop progressive hydrocephalus leading into loss of consciousness and probably life-threatening and what are conditions. the signs? What happened to her blood pressure? What happens to her pulse? The blood pressure will go up, pulse will go down. It's most likely signs of Cushing's triad. Thank She you might so develop much. respiratory irregularities. Okay, I should not be guiding you for the signs of raised ICP, Manik. Okay, you should be, these sir. are should be on your Yes. tips. Okay, if I am asking you the signs of raised ICP, this is the first basic question I've asked you, right? Okay, and why you are not Yes. able to answer me clearly? I think How I'll can I just. go further, dear? Okay, Yes, sir. continue, please. So Okay. I'll monitor her for signs of raised ICP as you mentioned, sir. And then first thing will be my primary goal would be to add. Okay, right now she's deteriorating in your ward, okay? Or whatever from where she came from, okay? She came to you in deteriorated condition, okay? Now, how will you investigate her? So first thing I'll do CT scan of the brain, sir. What do you like to see in CT scan brain? Status of ventricles to rule out acute hydrocephalus, and then probably other finding as well. Okay. If a person came you with a history of deteriorating neurology, okay, or for few weeks, okay,
and there is no history of trauma, why you want to do CT scan? Why not MRI? MRI takes slightly longer time than normal CT. CT can quickly guide us to whether her current active problem is due Why to you want a quick raised guidance? ICP Dear, why to you want manage a her. MRI screening take hardly 5 to 10 minutes, right? Okay. She is in your tertiary care I unit. think You do have an MRI machine easily available. Okay. She is not irritable. She can do it easily. Then why you are doing CT scan? Are you suspecting anything else? Normally we go for so if CT in patient trauma was patient, right? yes, sir. If patient was comfortable and her general condition and level of conscious was not that deteriorating, probably I would definitely do MRI examination. But like if patient showed any sign of deterioration and I need to take quick action, then probably I'll still do CT scan. So Okay. As I already told you, screening MRI take hardly 5 to 10 minutes, okay? And this is the time we can shift the patient, enough time we have normally, okay? We don't need normally CT if you are not suspecting SAH in a non-traumatic patient, okay? You are not suspecting SAH, you have no history of sudden severe headache, okay? To my liking, we should go for an MRI. What do you think? According to this history, right? If she is not deteriorated, okay, further, she's not unconscious, okay, okay. Even if she is conscious, we can do it MRI if it is easily available in your unit. But if it is not available in your unit, you have to go for another hospital about 1 hour of at the distance of 1 hour. Then it is not sensible to do an MRI. Okay, but it is easy. Nowadays, tertiary care units do have MRI easily available. Okay, so I think we should go for MRI. What do you think? yes, sir. Okay. Okay, as you already told me, you are suspecting hydrocephalus in this patient. Okay, and okay, you have done an imaging, right? Okay, Hello. sir. Yes, sir. Okay. Now, where you are Yes, sir. suspecting this lesion supratentorally? You have the history, you have the examination. Most likely any lesion arising from the base of his skull compressing on the frontal lobe and ventricles as well, sir. Okay, base of the skull compressing frontal lobe. Where frontal lobe? Okay. Where in It frontal should lobe? be to. Where should it compress It the should be. frontal lobe to develop an hydrocephalus? You are already suspected hydrocephalus, no? Right? Yes, sir. Yes, sir. Mm-hmm. It should be either large lesion compressing from the top or any lesion compressing from the base of the skull, obstructing foramen of Monroe. Okay. Why you are going for large region from top or base? Can it be a simple cyst of foramen of Monroe? Yes, sir. It can be simple cyst of foramen Monroe, but that might not But cause personality changes, sir. why not? If he develops a gross hydrocephalus, okay, gradually he will develop personality changes. Okay, you are right. Basically, if the frontal lobe involved, we used to read that it develop personality changes. Okay, acceptable. Okay, if we forget the personality changes, okay, then where you are suspecting lesion, and it is Then it just causing hydrocephalus.
It can be any lesion from foramen of Monroe to lateral ventricle up to the third ventricle, or Mhm. even up to the posterior third of lateral ventricle. And then if we can still can go, if there is no personality changes, then we can go all the way up to the fourth ventricle and up to foramen of Monroe, so foramen of If magnum. we have gradual development of raised ICP, we do have front personality changes, right? Okay. Things do compress the frontal lobe, right? And we do Yes, have sir. personality changes, right? Okay. Yes, sir. It is not only the frontal lobe which is causing the personality changes. There are other areas, the supratemporal region, which are concerned with personality changes, right? Okay. Yes, sir. Okay. Okay, Farooq, we can move on to MRI. Okay, sir. Okay, this is the MRI. Kindly describe So, it. yeah, I can see there are 4 images here. First one on the right is T2 image, axial cut, where we can appreciate there is a huge lesion occupying in the center of the bilateral ventricle. The lesion is heterogeneous in intensity compared to the brain and CSF. And in axial T1 contrast, the lesion is vividly enhancing. Most likely, predominantly, the lesion is on the right side of the lateral ventricle, frontal horn of lateral ventricle. In coronal image, we can appreciate the lesion more or like looks like arising from the midline. And sagittal image also, the lesion, I don't think it's a midline sagittal, but however, the lesion is obstructing the most like lateral ventricle outlets. So, So, yes, sir. okay. So it is causing hydrocephalus, right? Yes, sir. So where this lesion specifically is situated on, It's in the septum pellucidum, sir. and arising from septum Septum pellucidum. pellucidum. Good, great. Yes, sir. Okay, what it could be? So there are not many pathologies that arise from septum pellucidum. So I'll put my first differential diagnosis as central neurocytoma. When patient is being young, 25 years old, I would also put any lesion that's arising nearby ventricles, which is subependymal astrocytoma. And then these are 2 things that I can think of looking at this images. But there are many. What intraventricular tumors you can have apart from these 2? Central neurocytoma, coryphexis papilloma, even simple colloid cyst, and then as I mentioned, SEGA, and it could be dermoid in the midline, and then And not much time you have. Okay, you have mentioned subependymoma, right? Meningioma can be one of the possibilities. So. Thank you so much. Yes, sir. Okay, meningioma can also. So you have mentioned subependymoma, right? Yes, sir. What else? Why you are not Central- mentioning ependymoma? Simple ependymoma. Yes, sir. Ependymoma could be one of the. We do have Okay, the most probable diagnosis with neurocytoma is ependymoma, right? And Yes, when sir. we have the large tumor like this, we are not sure whether it is arising. Yeah, we can see in coronal cuts that most probably it is arising from septum pellucidum. Okay, but other Yes, lesions sir. can also be can have similar appearance like this, right? Especially the ependymoma. Okay, only the histopathology can confirm it. Okay, okay. Apart from arising from septum pellucidum, what else you can? How can you differentiate between this neurocytoma, as you already mentioned, and ependymoma?
What feature it could have? Okay, you go for neurocytoma first. Okay, you mentioned what features it could have in typical features in an MRI scan. In central neurocytoma, there's no calcification as compared to ependymoma, sir. It has calcification. It can have calcification, and apart from both can have calcification. Okay, and I cannot think of any differentiating in that way, sir. Usually, ependymoma might come from the lateral side of ventricle rather than in the central. Okay. I already told you apart from our origin, site of origin, what else you want to see in this lesion to diagnose neurocytoma or ependymoma. Okay, one you said calcification, and what about enhancement? Another is both can enhance vividly, sir, ependymoma and What about cystic central lesions? neurocytoma. Is it cystic? It's more common in ependymoma. Cysts are more common in ependymoma. Yes, sir. Okay, which is not typical of what you call the neurocytoma. Okay, it's like more of the cyst over here, should have more cyst over here. Okay, it may be a neurocytoma, you're very right, arising from septum pellucidum. It can have calcification, it can have cyst also. Okay, mostly it have a bubbly appearance, right? And it is a cystic like and mixed type of lesion, right? Solid plus cyst. Okay, okay. And further, you told me what is different between you told me ependymoma and subependymoma, right? Now, what's Yes, the sir. difference between the two? Subependymoma is like astrocytic. No, Astrocytic origin. ependymoma and okay, good. And then Astrocytic origin means subependymoma, it's more from the glial. okay, are they different entities? Subependymoma and ependymoma, are they different tumors? Yes, sir. Or they are name of the same tumor? They are different tumors, different origin. Very good. In Different terms of origin. histology also, sir. Okay, so ependymoma arises from Ependymal lining of the ventricles, sir. good, great. Okay, which one is more aggressive? Sega, sir, astrocyte, subependymal giant cell astrocytoma is more Subependymoma is more aggressive or ependymoma? I cannot exactly recall, sir. No problem, no issues. Okay, usually, okay. First of all, this already mentioned neurocytoma. Neurocytoma are basically these are rare tumors, right? Okay, Yes, it's okay. You are not member more about it. It's okay. Subependymoma are less aggressive than ependymoma. Okay, when you are suspecting a less aggressive tumor, it must be a subependymoma, not ependymoma, right? Okay. Can you grade these tumors, which you have already mentioned in your differential diagnosis, like neurocytoma, ependymoma, subependymoma? Are they all yes, grade sir. 1? The WHO grade. ependymoma can be graded into grade 1, grade 2. And what about neurocytoma? Because we have to decide our treatment modality according to grading of tumor, right? Whether we just go, whether we just go for biopsy or for gross total resection. Mostly benign, okay, depends on the grading, right? Mostly benign. Okay, which grade you are suspecting, 1 or 2? Yes, sir. Is it 1 or 2? The tumor is quite WHO. large, so grade 2, sir. Very good. Okay, tumor is quite large.
So ependymoma and neurosarcoma, all they are according to WHO classification, they are grade 2 tumors, okay? And the subependymoma is slightly lower than these, and it is grade 1, okay? And other you have mentioned, right? Other tumors, other differential, what you have mentioned? You have mentioned, right, choroid plexus papilloma, right? Choroid plexus. Yes. So, Yes, sir. okay. Now, what about choroid plexus papilloma? From where it is, right? What the age group you're suspecting in choroid That plexus can papilloma? also be graded. Usually, it appears in a younger patient group, Good. sir. Very And good. most of choroid plexus papilloma, as we mentioned, it's papilloma, most likely grade 1, sir. Okay. Okay. Any more differential diagnosis? You have mentioned, right, meningioma also at the end, right? Yes, sir. How you differentiate it with meningioma? Intraventricular meningioma mostly in a trigonal region, and it enhances vividly. And it's the only meningioma where we don't have a broad-based dual enhancement. So it can mimic any pathology that we have mentioned above. It is more of the uniform region, right? Uniformly Yes, enhanced, sir. right? Okay. Yes, sir. And what else we can have intraventricular? What common things? Other common things like it can be cyst, it can be Good. colloid cyst or arachnoid cyst. In the lateral ventricle? What else when we can have in lateral ventricle? Common things. Okay. In older patients, right? In elderly patient, sir. what can we have in the lateral older- ventricle? Elderly patients. Simple It can thing, be very common. like meds, sir. Thank you so much. Okay. When I'm asking in elderly patient, okay, you should say immediately meds. Yes, sir. Okay. Whether it is spine, brain, whatever it is. Okay. You should always include meds in your differential diagnosis. Right? Okay. Yes, sir. And also, other than neoplasia, neoplasms, what else we can have here? Other than neoplasm, neoplastic lesion. Infective causes In fact, can very be. good. Can be a cyst, right? Well, oh, Yes, sorry, abscess. Okay. Yes, sir. Cystic abscess, right? Okay. Yes, sir. Now, with MRI, if I say you can go for spectroscopy also, right? Yes, sir. Yes, sir. What can you have in this lesion in the spectroscopy? This is the highly dividing and homogeneously enhancing. So most Very good. likely it will have a choline peak. And then probably this is being neurocytoma, NNA might be low, and lipid and lactate also we can look for. But I NNA is think I'll always look low. for. Good. And I'll so you look know for basics choline. of spectroscopy. I just want to ask the basics of your spectroscopy. You know it. Good, very good. And And then you say high choline, you said Na is low. yes, And okay. I will What is look high? for lactate peak also to differentiate between. Very good. Choline is high, sir. Choline is high. And if it is an abscess? Lactate peak will be there, sir. Very good. Okay. You have this diagnosis, you have everything. Okay. What else you like to do to go for your definitive procedure? You have the MRI. Anything else you'd like to have apart from MRI? Sometime we can use Any other assistant investigation? Sorry? we can also check किससे ट्रांसफर कर दिया MRV. यहाँ पे रास्ता आईडी होती है MRV. Okay. Yes, sir.
Why MRV? Whether the lesion is extended into the inferior sagittal sinus or whether it's causing some. Okay, you want to have MRV, you don't want to have MRA, and you MRA don't want also. to have MRA also. Okay, and what you like to see in MRA? Yes, sir. I would work up more about like vasculature. Which vessels, which arteries, Sorry, sir, I which cannot get. veins, which vessels you like to see In MRA and MRV? So I would like to. I'd like to see more about septal veins. Sorry? And then I would like to see more about the anterior AC. I would like to see more about septal veins in MRV, position of septal veins and inferior sagittal sinus. And in MRA angio, I would like to see position of ACA, especially callosomarginal pericallosal artery. Good. Okay, you have MRA, MRV along with MRI detail with contrast. Okay, how will you manage now? How? What treatment modality you want to use? How you like to manage this patient? So I'll divide my. I'd like to divide my management into acute management and definitive management. After addressing her headache and probably I'll discuss about the prognosis about the disease and possible complication related with surgery and the treatment option available for this kind of problem. And once the patient is convinced that I'll advise for definitive surgical management. So okay, if they don't want to do surgery, then anything else you can offer? We can offer about the option regarding radiosurgery, but I don't think that will resolve our problem. Or we can just go for biopsy, but that will also not address our active problem. So very good. Because nowadays patients came to us and ask about radiosurgery first. Whenever you told them that they need a surgical intervention, they always ask you for stereotactic radiosurgery, right? Okay, but you have to tell them that it is not a definitive treatment, right? yes, sir. Okay, that's great. Okay, now how Yes, you sir. like to proceed for surgery? What approach you like to have here? Surgical approach. So I have two options regarding the surgical approach for this patient. I'll choose right anterior intrahemispheric approach in this patient after reading the MRV and MRA, and then another option will be endoscopic option as well, and third will be least likely I'll choose transcortical approach in this patient. Okay. Before going for surgery, anything else with respect to investigation you'd like to do? Before going for an invasive procedure, okay. Anything else you like to do? Any more investigation you like to do in this patient apart from MRA and MRV and MRI, if you are deciding for surgical intervention? I would check whether this imaging is neuronavigation compatible or not, sir. Okay, it is compatible to neuronavigation. Anything else? You are not sure in MRA and MRV about arteries and veins, then what you do? MRA is not very good in this region to show. CT angio or good?
BSA can also be done. So Okay, thank you so much. Okay, we can go for angiography to be sure about the vessels over here in this area, right? Okay. yes, sir. Now about the approach, surgical approach. What approach you like to have? I'll choose. I'll read the images in detail more than the sequences we You have. have these images. And Now, what studying approach the you'd like to do? Surgical approach. I'll choose interhemispheric cross-callosal. Good. Okay. Interhemispheric cross-callosal approach. Right? Okay. Okay. What would be the site of your incision? How big craniotomy would you like to do? I'll go from the right side. It will be in the 2 centimeter U-shaped Good. incision, base nearby coronal suture, 2 centimeter behind the coronal suture, and 4 centimeter in front of coronal suture. Then the bone flaps with the Good. with the caution about superior sagittal sinus, and I'll reflect the dura towards the superior sagittal sinus. Good. After reflecting the dura, I'll carefully dissect down until I visualize both callosal marginal arteries. And once Okay. I visualize the callosal marginal artery, I'll make an incision in the corpus callosum. Okay. And then What about okay, stop there. in this You have case, mentioned. we'll. I'm sorry. Can I interrupt, please? Yes, Okay. What about callosal marginal artery? Okay. From where you retract these arteries? In the middle of the both arteries. Medially, Sir. laterally, Laterally, sir. laterally, both arteries. If you Separate visualize to- both arteries, Yes, sir. okay, then you are saying you should retract it laterally, both of them, right or left. No, sir. We go from middle of the pericallosal artery. So one Thank on you. Between the lateral, two, no? one on. Okay. Yes, Okay, sir. right. Good. Then We into the corpus callosum, and then probably we'll see fornix. So most likely we will have to go to transformation in this case. Sir. And which then, gyrus you once can we reach damage over here during your approach? Cingulate gyrus, sir. Good, great. What will happen if you damage it? Cingulate gyrus, sir. What will happen if you damage it? What complication it can cause if you damage the cingulate gyrus? Patient might, the patient might develop. Sorry, I can't hear you some- clearly, Manik. Patient might have some. Most of the time, the biggest fear about cross-callosal approach is cingulate gyrus injury, which might give apathy, and patient might have psychological symptoms. And good. Concentrated. Hmm. And What else? What complication can occur if you damage the cingulate gyrus? Corpus callosum to the greater mechanism, sir. Okay, I can't hear you clearly. Sorry. What you said? What you told me? So there are two things that can. Okay, sorry. Two things. What? Sorry, sir. Can you repeat, please? I couldn't hear you clearly. Complication of When we damaging damage cingulate gyrus. cingulate gyrus, Yeah. the patient might develop apathy, depression, Good. and Behavior, memory issues, all can occur by damaging cingulate gyrus. And you also mentioned fornices, right? You can damage fornix also, right? Hello? so can you hear me? What else you can damage here apart Yes, from sir. cingulate Yes, sir. gyrus? Yes, sir. I can hear you. Okay. Corpus callosum itself, fornix cell, Okay.
Okay. Okay, Farooq, we are finishing soon. Okay. Our time is up. Manik, you can tell me rapidly. Fornix, corpus callosum. Okay. Okay. What's your goal? You want to resect it completely, partially, subtotally? What you want to do over here? My goal is to do gross total resection, sir. If you are unable to do gross total resection, then what? So What are the chances of regrowth? yes, sir, there is a chances of residual because the tumor has extended on the other side also, and sometimes it's quite difficult to reach up to the other side of the ventricle, and sometimes the lesion might have been attached to veins, critical veins, so we might have to come back with the I'm just subtotal asking, resection, are sir. there chances of regrowth in subtotal resection? Yes, sir. Okay. If you go for total resection, then are there chances of regrowth? I think it depends on the pathology. If it's a central neurocytoma, it might grow back, but Okay. You have subtotal resection. What else you can do now? we can post-operatively we can discuss with the multidisciplinary team, including radiation oncologists. Okay. What type of for radiation you want to possibility give? of stereotactic radiation, sir. Which one? Gamma knife or cyber knife, both can be used, sir. Any difference between the two? Yes, sir. One has a acceleration, the acceleration movement artifact, I mean precision. So I think cyber knife has less factor by respiration, so more precision. So Okay, both are good for us. Okay, in brain, both are okay. yes, sir. Okay, good. Okay, any recent advances you can think of in surgical approach? As I mentioned, most likely we can use some endoscopic approach in this patient. Endoscopy, good. And what else you can use in combination with endoscope or without endoscope? Any more gadgets you can use? We can use nowadays there is role of MacFirst, what do you call it? Ultrasound can also be used. We can have intraoperative MRI, right? We can have fluorescent microscope, right? Alternately. Yes, sir. Okay, these are all recent approaches, right? Yes, sir. Okay, we can take help of these two if these are available in our Yes, sir. Okay. Okay, thank you so much, Manik. Yes, sir. Thank you. Okay, Farooq, we are done. Okay, thank you so much, sir. And we would like to have your comments Thanks, on sir. the case and anything else you would like to add. And there will be a few questions directed towards you as well. And at the end, we can take those questions as well. Okay. You are taking too long to think, Manik. Okay, you are good, but you're taking too long to think things. Okay, and especially the basic things like signs of raised ICP and if I'm talking about recent advances, this should be on your tips. Okay, these are not very recent. So we have of MRI from decades and operating it elsewhere in the world. Okay, not with us, but we have the signs of raised ICP. These all should be on your tips. Okay. Except that these are some rare tumors like neurocytoma, which are visible in this MRI. Okay, but the other things you should be go quickly. Okay, it will save your time. Okay, if you lose your time, then you will lose your questions. If you lose your questions, you will lose your marks. Okay, simple as that. Okay. So I suggest you to go through the basic things quickly.
ओके Yes, sir. So there are a few questions. One बिल्कुल is one जी जी is बिल्कुल one is approaching through the endoscope and doing a biopsy and septoscopy first, and then according to biopsy plan the major surgery. Is it अजी ये लोग an option? खुद क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे क्या ये लोग आपके सर जरिए उन्होंने पूछना लिखा है इन्होंने अजी चैट में सर मेंशन किया हुआ है सर इसको चैट दस पे किसने पूछा क्वेश्चन सर ये तैयबा है तैयबा पूछ रही है तैयबा क्या पूछ रही है कि एंडोस्कोपी यस वी कैन गो फॉर एंडोस्कोपी लेकिन कहते हैं दिस लार्ज लीजन okay there are some limitations okay we can do it from endoscopy or biopsy is not an option in this lesion because we already told that this is a grade 1 or grade 2 lesion we always go for gross total resection but god forbid if it is not possible then we can have subtotal resection and then later on we have to go for radiation therapy. Yes, sir. Another question is from unknown person, but the Unknown question person. is, yeah. क्यों छुप के बैठा है अननोन पर्सन बस है सर चलो बोले so बोले question ये है कि hydrocephalus भी है साथ में, so can we do the transcortical approach rather going from the interhemispheric approach? कॉमन फर्स्ट थिंग इज दिस कि जितने भी दुनिया में सेंटर्स हैं सब जगह ये अनकॉमन है सिर्फ हमारी अनकॉमन नहीं है ठीक है तो अनकॉमन चीज के लिए हमने जो यूज टू होते हैं जिस अप्रोच से वही अप्रोच यूज करते हैं ओके वी शुड मास्टर वन अप्रोच ठीक है और फिर हर एक में ये कहते हैं हम वो ही यूज कर रहे होते हैं हम लोग अब जब भी ये सेंटर में हमने जाना होता है तो ट्रांसकॉट ये जो हमारे ट्रांसकैलोजल अप्रोच यूज करते हैं वी कैन यूज अदर अप्रोचेज ऑल्सो ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जितना आदमी मास्टर करेगा एक अप्रोच में उसको कॉम्प्लिकेशन कम होगा ठीक है तो उसमें कहते हैं वो बिटवीन फॉर्नेसिस भी जा सकते हैं इसमें ठीक है हर एक की अपनी अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है तो जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं इस किस्म के इंट्रावेंट्रिकल ट्यूमर्स में तो उसी पे जाना होता है क्योंकि हमने दूसरा एक जब हम व्हेन वी गो इनसाइड वी हैव टू डिसाइड और जब ट्यूमर इतने बड़े होते हैं तो हमें यही नहीं पता लग रहा होता है कि हम लोग क्या कहते हैं राइट वेंट्रिकल में या लेफ्ट वेंट्रिकल में ठीक है ये किस तरह पता करेंगे हम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में Manik, get back. हेलो Yes, मानिक sir. Yes, sir. हाउ कैन यू डिसाइड यू आर इन राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल Uh, during intraoperative, sir. या ड्यूरिंग राइट what is structure what normal anatomy you can see at the base of your So ventricles when we enter, Sorry, come again. लेकिन उन्होंने कहते yes, हैं sir. कोराइड प्लेक्सस I किसने think लिख के there भेजा is ना हमने two things गुड to look for. One is वेरी गुड yes, sir, direction of choroid plexus and septal vein. Also location of foramen of Mondra, if we can visualize it. you have heard about thalamus vein ये मिशाल ने भेजा ना तो थैलेमस वेन इस लिख के Yes, भेजा sir. in the right side your thalamus vein would be on your right side ठीक है right side of your आपके choroid plexus ठीक है मिशाल ने आपका आंसर किया ठीक है अगर थैलेमस वेन आपके जो choroid plexus के राइट पे then you are in the right ventricle if it is on your left side of your choroid plexus then you are in the left ventricle right तो अंदर जाके तो हमें पहले ये देखना होता है हम राइट पे हैं लेफ्ट पे ठीक है इतने बड़े Yeah. ट्यूमर में Yes. ओके और क्या पूछना चाह रहे हैं सर एक लास्ट क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन वो कमेंट है शायद उनका कि व्हाट इफ वी पुट अ ड्रेन और शंट बिफोर द सर्जरी? यस वी कैन डू बल्कि ये कहते हैं अक्सर लोग ड्रेन ही डाल देते हैं पहले ऑब्वियसली इसको अगर कोई लाइफ सेविंग प्रोसीजर होगा ठीक है तो ड्रेन डाल सकते हैं ऑब्वियसली उसमें आप ये मत सोचें कि उसका कोई और वो अगर कुछ नहीं करना तो ड्रेन ही डाल देंगे यहाँ पे आप डाल सकते हैं ठीक है और ड्रेन के लिए फायदा ये है कि आप वो आपके कंट्रोल में होता है उसको करना रेगुलेट आईसीपी को आपने कर लिया जितना करना है फिर डेफिनेटिव प्रोसीजर के लिए आप अगर आपको वेंट्रिकल्स को डायलेट करना है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं ड्रेन को ठीक है वी कैन इंसर्ट ड्रेन ठीक है लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी टेम्पररी प्रोसीजर नहीं सर ये पोस्ट ऑप हम इसमें कोई ड्रेन या शंट रखें कि नहीं पोस्ट ऑप की मैं पूछ रहा पोस्ट था ऑप के एक इंट्रावेंट्रिकल बटन रखना चाहिए हमेशा मेरे हिसाब से मैं तो प्रेफर करता हूँ कि ड्रेन इंट्रावेंट्रिकल जो भी प्रोसीजर हो उसमें आप एक ईवीडी एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन रखते हैं ठीक है देखने के लिए कि आगे फिर सीरियल स्कैन कर लें ठीक है बंद करके कि प्रेशर रेस तो नहीं हो रहा ठीक है रखना चाहिए सर ठीक है थैंक यू
Okay, welcome. So any other question? I guess we are done with the case. And with that, I would like to thank Dr. Amir Saeed. And No एक issues. चीज और मैं आप लोगों को बता दूं सर, इज वन ऑफ द वेरी हम्बल पर्सन एज वेल, ठीक है। और जब भी मैं खुद भी एज एन ऑब्जर्वर जाता हूँ एग्जाम में, तो आई वुड लाइक टू सिट विद हिम, ठीक है। मुझे बहुत मजा आता है कि वो कैंडिडेट्स के साथ में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। सो गुड लक टू यू गाइस एज वेल कि आपके एग्जाम में डॉक्टर आमिर हो जाए तो नो बट इश्यूज। जस्ट अच्छा, सेइंग, मैं तो हमारे फिर भाई लास्ट, एग्जामिनर्स भी अच्छे हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, बट जस्ट सेइंग। आप उनको डराओ नहीं ना दूसरों से, फारूक। अच्छा, नहीं ये मैं कहते हैं, डरा अच्छा, के मैं बस। इनको ये क्या उनको समझा दूं कि तो एग्जामिनर को चेहरे पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि वो तुम्हें खौफजदा कर रहा है या तुम्हारे साथ रिलैक्स है या तुम्हें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तुम रिलैक्स होके जो तुम्हें अपनी बेसिक को स्ट्रांग करो। अब जैसे मैं से मानिक से पूछा था, इसको साइंस ऑफ आईसीपी निकलवाने में मुझसे 10 मिनट तो इसी में निकल गए, ठीक है। वो बोल ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई इसके आगे और इसको इतना हाइड्रोकैफ है पेशेंट को, ये तुम बोल रहे हो, तो अलावा वो एक हेडेक के और उसके बोल ही नहीं रहा, इवन वो नोजिया वॉमिटिंग भी नहीं बोल रहा, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि बेटा आपको रिलैक्स करने के लिए बेसिक से शुरू कर रहा है, तो उसको उसमें आप उसको वो डिसअपॉइंट मत करो, ठीक है। तो इस पे तुम्हारा इंप्रेशन बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। जितने आगे मैं गया हूँ उतने आगे वो जाएगा नहीं एग्जामिनर, ठीक है। वो उधर से बाय कर देगा कि नेक्स्ट टाइम आपको हलो करेंगे। तो साइंस ऑफ आईसीपी और बेसिक्स जो है वो तो बेटा जी तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए ना, ठीक है। फौरन बोल देना ताकि आगे बढ़े। एग्जामिनर पूछता है ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए ताकि आदमी को रिलैक्स हो जाए। उसने कह दिया 4-5 चीजें बता दी, फिर हम आगे बढ़े कि क्या होता है कोचिंग वगैरह ये सब बता दिया, फिर हम आगे बढ़ गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। पहले ही तुम उसको पहले स्टेप पे इस तरह करोगे तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, ठीक है। बस ये देखना है कि बेसिक को जल्दी बोलो, ठीक है। और घबराओ नहीं, घबराओगे तो बेसिक जिस तरह ये घबरा रहा था मानिक, ठीक है, ये शुरू में इसने फिर गड़बड़ करना शुरू कर दी थी, बाद में फिर लाइन पे आ गया ये, ठीक है। चलोगे, गुड लक टू यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो मच सर, Thank you, sir. आपने बाय टाइम बाय, दिया अल्लाह सर, थैंक यू हाफिज। सो मच सर। अल्लाह हाफिज सर। Okay, for the next case, we have Professor Riaz Ahmed Raja. He's one of the senior most examiners. He is the president of the Pakistan Society of Neurosurgery, and he's actively participating in all these exam courses. And इसके अलावा भी research के हवाले से भी कोई भी conferences or workshops, so he's always there. And I really appreciate and thank sir that he's with us today for the next case. And sir, I welcome you, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. So sir, now you young generation has put all the burden of the seniors on your hands, and everywhere there are everywhere there is courses in Hyderabad, in Karachi, Yes, sir. maybe in the other cities. So this is a good thing for the our postgraduate students. Yes, sir. Seniors like you and few others as well, they help us a lot. So हम भी वो आगे जो है रेसिप्रोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जूनियर्स, ताकि जो है वो कंटिन्यू रहे हमारा जो भी एक स्ट्रगल है, वही सर उसी में फिर मजा भी आता है। और हमारी अपनी लर्निंग बस इसी में होती है कि बिकॉज वी स्टे इन टच विद दीज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सेशन, तो हमारी अपनी लर्निंग भी इसी में रहती है। So, sir, we will do the next case we do. We have Dr. Ramsha with us. She will be the candidate. Dr. Ramsha, kindly turn on your mic. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Walaikum. So, sir, we will have 35 minutes for the case. Actually, we will discuss for 5 minutes regarding the history and examination. हम उनको थोड़ा सा brief review देंगे. हम पहले उनको थोड़ी सी complaints बताएंगे, and we will ask them what they would like to know more about the history and what kind of examination they will do, and then we will provide the history and examination findings. And for the next half an hour, you will have the discussion on the basis of history and examination, differential management, and whatever जो भी हमारा पूरा plan होता है. And in the last 10 minutes, after 35 minutes, we would like you to give a disclosure about the case, about the person who is the candidate, and we will take few questions regarding the case as well. और उसके बाद we will move to the next case. So it will be like 45 minutes, but actively 35 minutes for the case and 10 minutes for the disclosure, sir. I want to share one meeting decision Yes, sir. of the CPSP that from this
this exam, or maybe, still we don't know, maybe from the other, from the next exam, the pattern of the examination will be changed. And that would be the 2 long cases. And one is for 45 minutes and other is again also for 45 minutes. So at least you people know about that, and you prepare yourself for the 2 cases. Maybe at the nick of the time, you will be informed that, or in the morning, you will be informed that there would be a pattern of the 2 long cases. So always those who are appearing in this exam, or may not be, but the decision has been happened. But the time that we can start this pattern from this examination or the next is still in ambiguity. So all you should know about that, this exam may be of the 2 long cases. So prepare yourself like as a 1 long case for the 1 hour, or the 2 cases for 45 minutes of the 1.5 hours. ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने सारे सारे एग्जाम के कैंडिडेट्स हैं सारे हमारे पास. वी हैव मोर पीपल, पर हमारा थोड़ा मॉर्निंग का सेशन है, तो कुछ लोग अपनी ड्यूटीज की वजह से दे आर नॉट जॉइनिंग. सो बाकी एक सर, वी शुड स्टार्ट आई गेस नाउ. सो डॉक्टर रमशा, आई होप यू आर रेडी. ओके सर, शुड आई मूव टू द केस सर? Yes, sure. Thank you so much. So this is the very brief history for you, Dr. Ramsha. So first of all, should I start? आपने सर से पूछना है. मैं Sir, बस- जी start करें डॉक्टर रमशा. Sir, first of all, I would introduce myself and tell the patient who I am, and that I'm going to take a brief history and examine them. We for the know comments. we know your name, so don't disclose where you are working. So Okay, sir. so that we mean again the same pattern of the examination. Nobody knows who where he is working. Otherwise, there would be a problem. Okay. Okay, sir. And then I would confirm the patient's name, and I would take his basic biodata. His age is already mentioned. He's a male patient. I would ask him his hand dominance, if he's married or not, where he lives, and what work he does. And after that, I would start off with the presenting complaints which have been given to me. That is neck pain for 1 year and left arm pain for 3 months. So then I would ask a few more questions in the history. So shall I do that? Yes. Okay, I would ask about the pain. Where exactly is the pain? If you could place his hand and show me, and how long it's been present for 1 year. But did it start off suddenly, or was it gradual in onset? And is it radiating to the left arm, and or not? And is it present at all times of the day or not? Or is it present intermittently? And has the pain intensity increased from previously? Is it been progressive? And has it led to any restriction of his activities of daily living? And उसके अलावा what does he take any pain medication for it? And if he does it relieve it? Does it relieve the pain? Is it changing with position? Is there any position that gives him relief or that aggravates the pain? And yeah, that would be it about the neck pain. Is there any pain in any other limb apart from the left arm that he's telling me about? If there's no pain, then I would ask about the left arm pain. Again, the extent, where is it exactly in the left arm? Is it throughout the arm, or is it in a specific place? Is it radiating from the neck, or is it separate from the neck pain? Is there any weakness associated with the pain? Is he able to perform his normal tasks or not? And is it associated with any numbness or any paresthesias in the arm? And has he had any trauma to this to the neck or to the arm? Is there any history of fever or weight loss? And is there any history of any TB contact as well, or any history of any surgery in the past? And does he have any other predisposing conditions? Does he have any other comorbids, any diabetes, any hypertension, or any other complaints? And then I would take a brief cranial survey as well. I would start off with the lobes and lobar survey.
and then I would go to the midline. I would ask briefly about any midline, any drop attacks, any hormonal changes, and then a brief cranial nerve survey as well. And then I would, based on what I find, then I would proceed to the examination as well. I would take a brief family history, a brief systemic review as well. Yes, Farooq. Yes, Is this sir. the complete history? Yes, sir. She has completed the history. So if you want, we can show her the history. I mean, detailed history, and then But ask Dr. her. Dr. Ramsha, you said that I will start from the lobar function. What that means? Oh, sir, I would ask the patient if he has had any changes in his sir उर्दू में हम मिजाज पूछते हैं जब patient से पूछ रहे होते हैं तो any changes in his moods, any urinary incontinence, any memory impairment, and then I would move on. This would cover the frontal lobe. Then I would move on to the parietal as well, and I would ask him if he has any problems in dressing himself, in caring for himself. Does he remember the way to his home or not? Does he have any issues in understanding right and left or not? And then I would ask him about any history of fits. Has he ever had any fits? Does he have any hallucinations, any feeling of fear that is not rational? And then I would also ask him about any visual hallucinations as well. I would move on to the midline, and there I would ask him if he has any. I would ask all the hormonal questions as well, briefly, if he has any specific heat or cold intolerance, if he has noticed any change in if he has any gynecomastia, any discharge, any change in the hands, in the size of his hands and feet, any change in the shoe size or the ring size, and has he ever had any drop attacks where he would be walking and he would suddenly fall, and up. Then I would also cranial nerves. I would assess one by one very quickly if he has any change in his sense of smell, any visual disturbances, any numbness on his face, any weakness on the face, any change in his taste, any problem chewing food or swallowing food, and any changes in his voice that he has noticed, or any breathing difficulties that he has been facing, any changes in any problems in balance that he has, and that would be assessing my cerebellum, and the fact that Dr. Ji, sir. Ramsha, what is Ji, the sir. problem with the patient? So the problem is the what I'm localizing it is to the spine, but I would do this very briefly. What I'm telling you. नहीं, इसकी जरूरत महसूस हो रही है आपको? सर इसमें मुझे फिलहाल नहीं हो रही, बट जस्ट एज अ कंप्लीट हिस्ट्री. नहीं, अगेन कंप्लीट हिस्ट्री का मतलब नहीं है कि हम जो है ना टोटली एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की किताब में घुस जाएं. अच्छा. आपने कंप्लीट हिस्ट्री ली, डेफिनेटली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम. ओके, आपने जी, उससे सर. फीवर का पूछा, पेन है, रेडिएशन का पूछा, ये सब जी, चीजें सर. कंप्लीट हिस्ट्री. और ये है कि हेड में तो नहीं जाता, ऑक्सीपिटल रीजन में तो नहीं जाता. ज्यादा से जी, ज्यादा आप इससे कोई और सवाल कर सकते हैं कि इसको जो है ना चलने में कोई डिसबैलेंस तो नहीं है, कि रिलेटेड टू द सर्वाइकल स्पाइन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द पोस्टीरियर फोसा. कोई उसका जी, जो है ना सर. हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है. ये बाकी ये कि उससे आप फ्रंटल लोब साइंस पूछना शुरू कर दें. फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर एग्जामिनेशन यू कैन परफॉर्म एट द एंड, बट दिस लुक्स रिडिकुलस एज अ रटूत होता कि आप जो है ना बैठ के अपनी हिस्ट्री में ये सारी चीजें पूछें. You ठीक are है. appearing in the examination which make you a consultant, and I जी, don't think a consultant should be like that. ओके सर. Always think about that, what is the problem with the patient, and with your skills and knowledge you can you cannot miss those things which lead to a misdiagnosis. Otherwise there is no any need of going into the lobar functions and facial nerve, this. You can ask the patient about the uh, repeated history of such type of the problem, or any kind of the other problem like visual loss, like paraparesis in the past. ये आप पूछ सकते हैं. ठीक है? जी, क्यों सर. क्यों पूछेंगे? क्या आपके माइंड में हो सकता है? Sir, then it would be in the posterior fossa, some pathology that would also cause neck pain. It would also cause left arm pain, and at the same time जो है वो नहीं, मैंने अभी आपसे पूछा कि आपको इसको जो है ना पास्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो फॉर एग्जांपल इसको पास्ट में इसकी विजुअल लॉस हुई हो, रिकवर हो गई हो,
पास्ट में इसको जो है ना इसी तरह से कोई एक लिम्ब या 2 लिम्ब्स इसके वीक हुए हैं और वो सही हो गए हों? तो सर ये तो PIAs की हिस्ट्री लग रही है कि इसको और कुछ? इस्कीमिक अटैक्स हो रहे थे। और कुछ? सर नहीं, आप समझती हैं कि इस्कीमिक अटैक्स इतने सारे होंगे और जो है वो बार बार ठीक होते जाएंगे? और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको यही जो है लेफ्ट आर्म में जो है वीकनेस या पेन हुआ हो सकता है इसको कोई और प्रॉब्लम हुआ हो किसी और लिम्ब में या विजुअल डिस्टर्बेंस हो। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, सो Okay, जब sir. भी जब भी आप जो है ना कोई चीज पूछते हैं तो आप सिर्फ न्यूरोसर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछते, आप पेशेंट को एज अ होल देखते हैं कि ये ना हो कि कल को ये पेशेंट आपके पास आए और फौरन आपके पास MRI नेगेटिव आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? आप इस चीज को देख के आप जो ये समझते हैं कि इसको या तो ट्यूबरकुलोसिस होगी या इसको जो है डिस्क होगी, लेकिन हो सकता है कि ये जो है ना कंप्लीटली निगेटिव हो। तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि क्या क्या जो है ना इसमें हो सकता है। ठीक है, चलें आगे चलें। ठीक है सर, ठीक है सर। देन हिस्ट्री जी। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि एग्जामिनेशन ये चीज़ें नोट कर रहा होता है कि आपकी हिस्ट्री टेकिंग भी जो है मैच्योर है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग आपकी इसी तरह से होनी चाहिए जैसे लगे कि आपको मतलब पेशेंट आपके पास सिर्फ नेक पेन के साथ आया है, तो अब आप उससे जो है ना बैठ के ये पूछें कि आपको जो है ना याददाश्त तो खराब नहीं है, आपको लेफ्ट राइट समझ में आता नहीं आता, पैराइटल लो फंक्शन, मतलब वो चीजें जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, आपको अगर आपके पास आप इतना रैप अप जल्दी करती हैं और आपके पास टाइम है, तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर एग्जामिनेशन यू कैन परफॉर्म द लोबार फंक्शन, यू कैन परफॉर्म द अदर काइंड, बट नॉट द फॉर द सेक के ये आप जो है ना हिस्ट्री में पूछना शुरू कर दें, उसका कोई ठीक है तुक नहीं बनता। जी सर। So, so this is the detailed history, and then you can answer. So the cervical pain radiating to left upper arm, persistent, progressively increasing in intensity. Numbness of arm is present, more pronounced in the forearm and hand. There is no history of trauma. All right. And sir, there is no history of weakness in any difficulty in holding pen or performing tasks with his hand or Not any. significant, nothing significant in that regard. Okay, and the hand pain is not more at night. Not specifically. Okay, and there is no issues in the lower limbs at all, No, and no sphincter disturbances either. no. Okay, and so that would be it. I would go to the examination then. Sir, should we move to the examination, or we would like to discuss on the basis of history? Sir, आपका माइक म्यूट है, सॉरी। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि आपके वर्ड्स भी बड़े खूबसूरत होने चाहिए। अगर मैं आपकी जगह पे होता, डॉक्टर रमशा की जगह पे, तो मैं डॉक्टर फारूक से ये सवाल करता, ये कभी नहीं पूछता कि इज देयर एनी स्फिंक्टर प्रॉब्लम, मैं सिर्फ ये पूछता इज द रेस्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल। अगर फारूक Alright. साहब भी जो है ना मुझे ये कहते नो, तो सारा बर्डन फारूक साहब पे, आप पे नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि कहीं पे मैंने देखा है कि उसको सेंसरी प्रॉब्लम है, स्फिंक्टर प्रॉब्लम है या कोई चीज है, आप सिर्फ एक सेंटेंस में जो है ना ये बोल सकते हैं कि इज देयर एनी रेस्ट ऑफ द, और एग्जामिनेशन के टाइम पे भी आप ये कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल। इट मींस आपको ये भी पता है कि उसका जो है ना ब्लैडर भी नॉर्मल है, उसको नमनेस नहीं है, यू शुड बी श्योर अबाउट दैट। उसके बाद सिर्फ आप एक स्टेटमेंट बोलें, जरूरी नहीं है कि आप इतनी सारी बताएं कि नो एनी नमनेस, नो एनी वीकनेस, स्फिंक्टर्स आर नॉर्मल, ये वो, तो बस आप एक जुमला भी बोल सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये समझता हूं कि एक मैच्योर कैंडिडेट जो है ना बोले भी इस तरह से कि वो जो है ना दूसरे दिन कंसल्टेंट लगे। जी सर। Yes, sir.
चले आगे जो है एग्जामिनेशन पे आ जाए। So tell us what would you like to examine in this question? I would start off again by my vitals and subvitals. And in this particular patient, a focused examination would be I would like to examine the neck, the range of neck movements, if the patient can perform them without pain or if he has any pain in movements. And if then I would also check I would ask the patient to check the Sperling and the Lermit sign. And then I would move on to the limb examination. I would examine the upper limbs first and compare them both simultaneously. I would expose the upper limbs first. Then I would look if there was any gross asymmetry, and I would measure the bulk if such was the case. And then I would also check the tone of both the upper limbs and if there was any discrepancy in both. And I would then move on to the powers in all the myotomes. I would check from C5 to T1. And after checking the powers, I would go for the reflexes and document the reflexes, the biceps, triceps, the brachioradialis reflex. I would check the Hoffman's reflex as well. And I would then move on to the sensory examination. On sensory examination, I would check the pinprick and light touch in all the dermatomes and compare both the upper limbs. And once this was done, I would also check, since the problem is in the upper limb, I would just check the joint position sense distally if it was intact, well and good. And then I would move on to the lower limb examination as well. Very quickly, I would examine the lower limbs and in the same pattern, and I would check the planters if they were upgoing or downgoing, and any issues in the lower limbs as well. I would perform the sensory examination, and that would include the perineal area as well, and check for any saddle anesthesia just in case. And I would ask it, I would check the anal tone as well, if it was present or not, and I would perform a back examination. Then I would ask the patient to stand and walk, and then in the end, very quickly, if I had time, then I would just do a cranial survey quickly. आपने जो है कहा कि क्रेनियल सर्वे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप जाएं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में। कौन सा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा रिलेटेड है इस केस के साथ जो आपको करना चाहिए? Sir, pulses, I would check the pulses. गुड। And sir, vitals, ma'am, I would check the pulses, I would check the blood pressure, and sir, the temperature of both the hands, if there was any change in the temperature. ओके। And sir, in GP, I think that would be it. इससे रिलेटेड And I cannot think of anything else right now. हाँ, लेफ्ट नोट्स एनलार्जमेंट अगर एक्सिला के हों तो वो इम्पोर्टेंस नहीं जी। रखता, जी सर। ठीक है। तो जी, एक जी। पेशेंट है, हो सकता है उसको सर्वाइकल में भी लेफ्ट नोट्स एनलार्ज हो और इन्फेक्टेड हो, और उसको जो है एक एक्सिला में भी लेफ्ट नोट्स हो, जिसकी वजह से उसको जो है ना ये जितनी भी रूट्स हैं ये कंप्रेस हो रही हैं और पेन हो रहा हो, जी ठीक है। सेकंड ये है कि सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, क्यों आप देखेंगे सुप्रा क्लेविकुलर फोसा? सर, अगेन लिम्फ नोड्स के लिए ही देखेंगे। लेफ्ट नोट्स तो नहीं होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सर। आप जो है ना कोई भी अपेक्स का जो है अपाइकल लंग सीए, ठीक है ना, कैन जी। प्रोड्यूसेस अ पेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो आपको ये दोनों चीजें जो है ना ये भी देखनी जरूरी है। वही मैं कह रहा हूँ कि आपका सोच का जाविया जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि आप कंसल्टेंट लगे। ये नहीं होना चाहिए कि नेक पेन है, आर्म में पेन जा रहा है, मैं एमआरआई करवाऊंगा, एमआरआई में अब कुछ भी नहीं आया, अब मेरे हाथ पैर जो है ना ठंडे होना शुरू हो गया कि अब मैं इसको फिट क्या करूं। और हमारे जो आम जो है दूसरे डॉक्टर हैं उनको जब ये नहीं समझ में आती है, छोटी मोटी डिस्क समझते हैं, तो वो समझते हैं कि नस दब रही है, हालांकि नस का कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। तो आपका काम है एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन शुड बी अ गुड न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आपको जी। पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है एज अ इलेक्ट्रिशियन, ओके।
Okay, sir. फिर आपने कहा कि आपने जनरल फिजिकल ये इसके बाद आपने मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन किया, तो आपने मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन करना है, लेकिन पावर और सेंसेशन रिफ्लेक्सेस देखने हैं, अपर लिम्स के भी, लोअर लिम्ब के भी। लेकिन यहाँ जहाँ तक स्फिंक्टर्स की बात आ रही है, वहां पे आपको एग्जामिनर को ये कहना है कि सर, एज आई नो or I assume that the patient is having a localized problem in the neck and the left arm. So can I proceed for the sphincter examination? तो एग्जामिनर कहेगा नो। ठीक है, ये नहीं कहना है कि क्या मैं करूं। नो, आप क्यों करेंगी जब मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं कि पेशेंट को स्फिंक्टर का प्रॉब्लम है। मैं खुद भी कंसल्टेंट हूं और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट के साथ बात कर रहा हूं। मैं आज स्टूडेंट हूं, वो मेरे टीचर हैं, वो मेरे एग्जामिनर है, लेकिन कल को मैं भी कंसल्टेंट बनने जा रहा हूं। तो आपका बात करने का तरीका भी यही होना चाहिए कि कैन आई गो फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द स्फिंक्टर, डू यू थिंक दिस वुड बी, बिकॉज टू मी आई डोंट थिंक सो दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच डिस्टर्ब्स द पेशेंट्स स्फिंक्टर्स। ठीक है, जी सर। ओके। और अगर कोई एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कोल्ड कोल्ड एटीट्यूड दिखाता है कि आपकी मर्जी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप डिसहार्ट हो जाए, लेकिन बोलें इस तरह से कि हमें लगे कि आप भी कंसल्टेंट हैं। जी सर। तो एग्जामिनेशन में फिर आपने कहा कि मैं क्लिनिकल पे चली जाऊंगी। हालांकि आप जब पेशेंट से बात कर रही हैं, आपने पूरी पेशेंट से हिस्ट्री ली, आपको खुद पता लग रहा है कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स नॉर्मल हैं, पेशेंट का फेशियल पैरालिसिस नहीं है, पेशेंट को ग्लॉसोफेरेंजियल वेगल का मसला नहीं है, पेशेंट की ये चीज़ें भी आपने देखी होंगी, हाथ ऊपर करके उसको कोई जो है ना 11-12 का भी मसला नहीं है। तो ये चीज़ें तो हो गई, ठीक है, ये तो आपको खुद भी एग्जामिनेशन में या बात करते हुए समझ में आ रही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेरिबुलर एग्जामिनेशन वो आपको करना है इसमें, ठीक है, और जी एथ सर। क्रेनियल नर्व्स के बारे में भी मालूम करना है आपको। जी सर। जी, आगे चलें। So, sir, should I show the examination findings? नो Then नो, we can- जी जी आप बताएं, फाइंडिंग्स बताएं, लेकिन हम इनसे कंक्लूड करवाते हैं कि आफ्टर दिस लॉन्ग हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, व्हाट इज योर परसेप्शन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द प्रॉब्लम टू द पेशेंट एंड व्हाट वुड बी द डिफरेंशियल्स। ओके सर। अब आपके पास कुछ चीजें आ गई हैं, वो खुद ही रीड करें और बताएं। जी सर। Sir, general physical examination is unremarkable. The hermit sign is positive. Sperling's test is positive on the left. Bulk is normal in all limbs. Power in the left elbow extension and wrist extension is 4/5. Reflexes are normal. Sensations are grossly unremarkable, and pronator drift is negative. Okay. Okay, sir. Okay, now on Yes, sir. these positive findings, where the Hermit sign is positive, Sperling test is positive, and the rest of examination is unremarkable, except there is a left elbow extension, wrist extension is little bit weaker compared to the rest of the examination. So, what do you think? What could be the problem? Sir, I would localize it to the lower cervical spine, mid cervical spine, and Okay. as this seems to be a case of cervical radiculopathy, and as everything else is normal. Okay. So, what is the cause of the cervical radiculopathy? Can you tell me the differential diagnosis? Sir, the patient is 45 years old, so I would go for degenerative first, and as this could be a degenerative disorder, that could be a prolapsed disc, or it could be an osteophyte that is compressing it, or it could be ossification of localized ossification of the posterior longitudinal ligament down in my differentials. And so it could also be infective, although less likely. However, sometimes TB can also present like this, but there is no history of fever or weight loss or any constitutional symptoms. So again, I would keep it down the list. And sir, apart from that, neoplastic is very, very less likely. So I would not mention it, sorry. So, how you will investigate this case? Sir, I would like to get an MRI
I would like to get an MRI cervical spine screening done first of all. And as there is no history of trauma, I am not going for X-rays or any dynamic studies right now. I would get the MRI cervical spine screening done first. And then चले MRI शो help करें. accordingly. Interpret the MRI. So this is an MRI T2 weighted images, sagittal view and axial views of my patient that are showing compression at the level of compression of the thecal sac at the level of C6 and C7. 5-6, sorry, sir. At the level of C5 and C6. And on axial images as well, I can appreciate that there is compression over the left side where the left foramen is severely narrowed and at the level of C5 and C6. However, I cannot appreciate any compression over the thecal sac significantly in the axial image. The foramen seems to be pretty obstructed. How will you manage this case? First of all, I would start off with counseling. I would tell the patient that we have found a compressive lesion inside your spine, that is a degenerative lesion, however, and this might need surgery. Otherwise, it could progress as well. The surgery would be through the anterior part of his neck, and we would remove the compressive lesion, and hopefully, since it's a radiculopathy, he would have improvement in pain, and sooner he would also have improvement in the numbness and the motor weakness as well. Did you ask the patient about the treatment which he was taking since 6 months? No, sir, I missed that. Okay. So before counseling, you have to ask the patient whether he was taking the medicine and what kind of the medicine he was taking, and was that having a positive impact on the patient, relieved the patient's symptoms or not? जी sir. आपने तो फौरन छुरी तैयार कर दी. जी sir. तो बताएं ना क्या करेंगी आप? सर अगर पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट से इम्प्रूवमेंट है तो फिर हम उनको काउंसिल करेंगे कि अभी आप मेडिकल मैनेजमेंट कंटिन्यू करें. वही तो बताएं कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या देंगी आप? Oh, अच्छा सर. Sir, I would ask the patient to modify her lifestyle. First of all, I would ask her to not how to perform a daily task without bending the neck too much and without no lifting of any heavy weights. And after that, I would proceed to the medication. I would start off with pain medication. First of all, NSAIDs. I would start off with NSAIDs, and I would also give her some relaxants as well, since I can appreciate that there is spasm as well because of the pain. And I would tell her that she does not need any bed rest. She can go about her normal daily living, just with a little modification. And she can also go for physiotherapy, and that would be it. और So a soft cervical collar, but also again not for prolonged periods of time. सर्वाइकल कॉलर भी लगाएंगे ना? जी सर. ठीक है. देखें, आप कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बनने जा रहे हैं और दुनिया में जो है ना बहुत से तरीका इलाज है, मेडिकेशन है, कॉलर है, फिजियोथेरेपी है. अब तो जो है ना लोग जो है पेन मैनेजमेंट में भी आ रहे हैं. तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि योर डिसीजन एंड योर स्किल्स आर सुपीरियर टू ऑल दोज थिंग्स व्हिच कैन रिलीव द पेशेंट परमानेंटली? ओके. अगर ये आप नहीं करेंगी तो आप फिर एक अच्छी कंसल्टेंट नहीं होंगी. ठीक है. जी.
So you have to prescribe the medication. Second, you will apply a good collar, okay, not a soft collar, but a coliform collar or a collar which can restrict the movement. आप जो उसको कह रही थी कि रेस्ट्रिक्शन करनी है, कौन ऐसा इंसान है जो सिर्फ आपके कहने पे, आप खुद ही करके देख लें कि अगर आप कहें कि मैं रेस्ट्रिक्शन करूंगी गर्दन की मूवमेंट की, तो कैसे करेंगी आप? आपको डेफिनेटली हर वक्त जो है ना गर्दन चलानी है। क्या चीज उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है? एक्सटर्नल ऑर्थोसिस विच इज द कॉलर, ओके। तो कॉलर अप्लाई करना है। फिर क्या करेंगी आप? पेशेंट को, मैं पेशेंट हूँ, आप मुझे कहती जाएं, मुझे ठीक करें। डॉक्टर अमशा। Yes, Dr. Amsha. हेलो जी। सॉरी सर। जी सर मैं मेडिकेशन फिर आपको एडवाइस करूंगी। ओके। मैं कितने दिन लूं मैं? कितने दिन मेडिसिन लूं? कम से कम आप 2 हफ्ते लेके देखें और ओके। फिर 2 हफ्ते से 1 महीना कभी कभी लग जाता है इस तकलीफ को आराम आने में। आप कम से कम 2 हफ्ते लेके देखें और फिर आप हमें आके दिखाएं कि आपको कोई फर्क महसूस हुआ है या बिल्कुल भी फर्क नहीं महसूस हुआ है। ठीक है डॉक्टर अमशा, मैं 2 हफ्ते लेके फिर जो है मेडिसिन मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है। 2 हफ्ते गुजर गए, डॉक्टर साहब आपका मुझे अपॉइंटमेंट दिया था, मैं आज आया हूँ, ठीक है। जी सर। डॉक्टर साहब मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि मेरा हाथ ज्यादा सुन्न होता जा रहा है। तो देन आई वुड टेल देम के बल्कि सर सॉरी आप पेशेंट आपकी बीमारी जो है वो दबाव डाल रही है आपकी एक नस के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसमें हम ये करके देख लेते हैं कि अगर दवाई से कोई आराम आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर दवाई आपने 2 हफ्ते ली है आपको आराम नहीं आ रहा है और आपके सुनपने में इजाफा हो रहा है, तो फिर हमें जो है वो ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। इस ऑपरेशन में ताकि हम जो चीज़ दबाव डाल रही है आपकी नस के ऊपर उसको हटा दें, तो हो सकता है इंशाल्लाह ताला आपको उससे आराम आ जाए और आपके सुनपने में मजीद इजाफा ना हो। डॉक्टर मैंने सुना है ये ऑपरेशन जो है ना कामयाब नहीं होता। ये ऑपरेशन के अपने हर ऑपरेशन के अपने मसाइल भी होते हैं। इस ऑपरेशन में कुछ मसले हैं, मसले मुतवक्के होते हैं जो हम आपको पहले से बता देते हैं, लेकिन इस तरह हमने होते हुए बहुत देखा नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी को जो है वो कोई मसला हो। अमूमन हमारे मरीज जो है वो बहुत बेहतर होकर यहाँ से जाते हैं। बाकी ये कि अगर आप ऑपरेशन करवाने का फैसला करते हैं तो फिर हम आपको उसके हवाले से तफसीली बताएंगे कि हम ऑपरेशन में क्या करेंगे और इस ऑपरेशन में मुमकिन जो मसले हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या मुमकिन मसले हैं, क्या हो सकता है मुझे? इस ऑपरेशन के बाद जो है देखिए, किसी भी ऑपरेशन के बाद जो है हमारे पास एक खदशा होता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, खून जाया हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है इस सर्जरी में क्योंकि ये क्लीन सर्जरी कहलाती है। तो लेकिन ये बताना आपको जरूरी है। दूसरी चीज ये कि इस ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे अमूमन ऐसा होता है कि आपको खाना निगलने में थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन ये तकलीफ टेम्परेरी होती है और ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती है। और चलें हर डॉक्टर किसी अमशा, जी डॉक्टर सर। अमशा, टेल मी द स्टेप्स ऑफ anterior cervical discectomy at this level. ओके सर, फर्स्ट ऑफ Not ऑल the step, not the step, but bring the patient in the OR, ठीक है ना, and tell ओके me सर। how you will perform whole of the surgery. Okay, ओके सर। steps बताते जाएं। Sir, first of all, after the counseling, I would obtain the consents and the pre-op labs. I've taken the patient to OR now. And in the OR, after the induction of anesthesia, I would position the patient. First of all, I would extend the neck and then I would mark my incision. How you will extend the neck? Sir, I would place the head on a horseshoe headrest and that would hopefully extend the neck enough. Otherwise, I would also add a shoulder roll to elevate the shoulders. That would also help in extending the neck. What do you mean by shoulder roll? Sir, a shoulder roll is a packet of gauze or some kind of padded substance that we place under the shoulders, under the shoulder blades of the patient, that lifts the shoulder up and extends the neck. Which means that is the interscapular region. Okay, sir. Interscapular region. Right. ठीक है? Yes, sir. Okay. Here. Sir, once the patient is, once the neck is extended, I would mark my incision. लेकिन आप तो नेक एक्सटेंड करेंगी, लेकिन नेक तो नीचे भी आ सकती है दोबारा, तो उसके लिए मुझे स्टेप बताया ना। मुझे ऐसा लग रहा है
आपने ये ऑपरेशन कभी किया भी नहीं है और असिस्ट भी शायद ऐसे करवाया है जैसे ओआर में दूसरे रेजिडेंट जाते हैं और इधर उधर जाके फिर वापस आ जाते हैं। Sir, अब I ये would ये अब जो है ना, ये एग्जामिनर सब नोट कर रहा है आपकी चीजें। ये आप नहीं समझे कि एग्जामिनर को पता लग रहा है कि आपने कितना काम किया है। हमारा एग्जामिनर का जो है ना ज्यादा कंसर्न थ्योरेटिकल नहीं होता, वाइवा में ये होता है कि कैसे आपने जो है ना ये 5 साल गुजारे अपने वार्ड में। जी सर। और ये बहुत ही कॉमन सर्जरी है, मैं समझता हूँ हर रेजिडेंट को एक एक स्टेप आना चाहिए। क्या आप शोल्डर्स पे टैपिंग करेंगे? जी सर, क्यों करेंगे? सर उससे जो है वो शोल्डर स्टेबलाइज्ड रहेंगे, शोल्डर रोल स्लिप नहीं होगा, और हमें जो है वो C7 तक का भी व्यू फिर अच्छा मिल जाएगा फ्लोरोस्कोपी पे। सिर्फ सी आर्म के लिए, और जी कोई सर। शोल्डर इधर उधर नहीं होता। अगर मुझे सी आर्म का चक्कर ना हो तो मुझे कोई जरूरत नहीं है मैं टैपिंग करूं, ठीक है। शोल्डर्स को नीचे की तरफ जो है ना एक्सटेंड कर ये रिटेक्ट करने से आपका व्यू जो है ATC5 का बड़ा अच्छा नजर आएगा सी आर्म पे। और कहाँ टैपिंग करेंगे? सर हेड पे टेपिंग करेंगे। हेड पे नहीं करेंगे बेटा, चिन पे करेंगे, ठीक है। हेड पे क्यों करेंगे? चिन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेपिंग करेंगे पीछे की तरफ, चिन ऐसे एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। तो आपका पूरा जो एरिया है दैट क्लियर। ओके, आगे बढ़ें। Then I would prep and drape the patient. I would first mark my incision at the horizontal incision at the level of C5 and C6. I can confirm it by fluoroscopy. ये कौन सा लेवल होगा? अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है सी आर्म की तो जी सर। अमूमन कहाँ पे होता है ये C5-6 का एरिया? सर ये क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन की लेवल पर होता है। तो क्रिकोइड कार्टिलेज पैल्पेट करेंगे, उससे जस्ट नीचे हम तो फर्स्ट ट्रैकियल रिंग, ठीक है। जी सर। ओके, आगे बढ़ें। देन सर हॉरिजॉन्टल इंसिशन मार्क करेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर्स का। हॉरिजॉन्टल इंसिजन कहाँ से कहाँ तक मार्क करेंगी आप? सर फ्रॉम द मिडलाइन टू द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। ओके, गुड। And sir, after marking, and if I have fluoroscopy, then I would confirm that my marking is correct, and then I would proceed to prepping and dripping the patient. Once I make the incision, then I would deepen it to the subcutaneous tissue. I would open the subcutaneous tissue and reach the platysma. I would split the fibers of the platysma and identify the tissue plane medial to the sternocleidomastoid. And I would confirm that the carotid sheath is lateral to my tissue plane, and I would place a retractor over it so that it stays out of my way. I would also laterally, I would keep dissecting in that plane, and I would also medially retract the trachea and the esophagus. I would place a retractor over that as well, and I would keep dissecting until I reach the longus colli muscles in the midline. Once I reach the longus colli muscles, I would use cautery to incise those muscles and separate them and dissect them off the कितने लॉन्गेस्ट कोला मसल होते हैं? सर मिडलाइन में 2 होते हैं। अच्छा, तो आपने कहा मिड लाइन में 2 नहीं होते, 2 तो डेफिनेटली साइड पे होते हैं। मिड लाइन जो है सेंटर के मतलब साइड पे होते हैं, ठीक है। प्री वर्टिब्रल स्पेस पे 2 लॉन्गेस्ट कोलाई मसल्स होंगे। जी सर। तो उनको क्या करेंगी आप? सर मैं मिडलाइन में जो है वो कॉटरी से इंसाइज करूंगी और फिर जो है वो उनको सबपेरियोस्टली डाइसेक्ट ऑफ द बोन करूंगी। मसल को वो करेंगी, नाइफ लगाएंगी? नहीं सर, मसल को नाइफ नहीं लगाऊंगी, मैं कॉटरी से उसको डाइसेक्ट ऑफ करूंगी और फिर उसको रिट्रैक्टर उसके बाद प्लेस कर दूंगी जब मुझे कितना डाइसेक्ट आउट करना चाहिए? कॉटरी कितनी यूज करनी चाहिए मसल में? सर मोर देन 5 to 10 मिलीमीटर नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि यार ये आप तो मुझसे मतलब सबसे बहुत होशियार हैं, आपको मिलीमीटर भी काउंट करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज्यादा कॉटरी करने से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? सर गुड ज्यादा गुड गुड। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं बार बार देख रहा था कि 10:45 हो रहे हैं, लेकिन फारूक साहब ने जो है ना पहले से ही टाइमर भी लगा दिया और बड़ा अच्छे म्यूजिक के साथ उसने हमें रोका भी है। लेकिन हम 2 मिनट शायद लेट भी थे। चलें, Yes, मुझे ये we can- बताएं कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी? सर अगर हम ज्यादा कॉटराइज कर देंगे तो सिंपैथेटिक चेन्स होती हैं जो लॉन्गस कोलाई में होती हैं, उसके अलावा सर मसल ब्लीड भी करता है, तो इट कैन ब्लीड एंड ऑब्स्ट्रक्ट कॉम्प्लिकेशन बताएं पोस्ट ऑपरेटिव। सर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले डिस्फेजिया है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व पैल्सी है,
इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, सर वो तो सब क्या है। होगा, क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा? सर पेशेंट को जो है वो सर स्ट्राइडर हो सकता है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो सकती है, एंड डिफिकल्टी स्ट्राइडर, स्वॉलोइंग। स्ट्राइडर नहीं होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नहीं होगी, मसल को ज्यादा डैमेज करने से क्या होगा? पेन होगा सर। नहीं, जाके पढ़ लीजिएगा, हॉर्सनेस होगी, ठीक है। सो पेशेंट का दूसरे दिन जो है ना हस्की वॉइस होगा। तो आप मेहरबानी करके इसको ज्यादा डायसेक्ट नहीं कीजिएगा, लॉन्गोस कोला मसल को, उसके सिर्फ मार्जिन्स को थोड़ा करते हैं ताकि जो है ना वो ब्लीड हो ना, मिलीमीटर देखते हैं ना कुछ, ज्यादा से ज्यादा उसको छेड़ना नहीं चाहिए और डिस्क निकालनी चाहिए। अगर आप ज्यादा छेड़ेंगी तो दूसरे दिन पेशेंट को हॉर्सनेस हो जाएगी। सो डॉक्टर फारूक, हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यस सर। मैं समझता हूँ दूसरा हम केस ले लें। ठीक है सर, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट केस, बट और सर अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें बाकी कैंडिडेट्स और इस केस के हवाले से, पर्टिकुलरली इफ दे see such kind of patient in the exam, so how should they, I mean, आप उन्होंने सुन लिया आपको, but still sir, if any other comment you would like. मैं कहूंगा ये वो केस है जो किसी के पास अगर एग्जाम में आ गया, उसको बुक उठाने की जरूरत नहीं है। अगर उसने 3 या 4 साल जो भी अपने वार्ड में काम किया है वो सही तरह से अगर वो बताता जाए वाकई उसने काम किया है, तो किसी किताब की नॉलेज नहीं। ये सब चीजें डिस्कस होती हैं। हम हर रेजिडेंट को ड्यूरिंग सर्जरी अगर कोई आगे खड़े होते हैं, हम उनको ये पूछ रहे होते हैं कि ये बताओ इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। तो जिसने अगर अच्छे तरीके से 3 साल, ये तो मैं समझता हूँ महीने में 2-3 केसेस आ जाते हैं। आप अगर 12 महीने का करें फिर 3 साल का दिखाएं, तो जिस बंदे ने 20-25 केसेस किए हों और यही चीजें रिपीट हों, तो किताब को खोलने की तो जरूरत ही नहीं है हमें। हमें तो टिप्स पे क्या दिमाग में हमारे होना चाहिए कि कैसे हम जाएंगे, क्या जाएंगे। उस रेजिडेंट को सोचने की जरूरत नहीं है, वो रेजिडेंट वो बताता जाए। बल्कि मैं समझता हूँ जिस वे में वो बताएगा हमें अंदाजा हो जाता है कि उसने कितना टाइम दिया है वार्ड में। सर जरा ये हमारी जो ना क्या कहते हैं, दोबारा ट्रेनिंग करवाना तो मुश्किल हो जाएगा लेकिन सर आप इनको पास करवा सकते हैं। मैं समझता हूँ रमशा नासिर ने बहुत अच्छा जो है प्रेजेंट किया है और अच्छी तरीके से हिस्ट्री ली है। कुछ चीजें थी जो मैं उनको वक्फे से उसी टाइम पे बताता गया कि जी इस सर। तरह से सोचें। अब उनको सोचना चाहिए कि उनको बोलने का तरीका किसी स्टूडेंट का या फर्स्ट ईयर रेजिडेंट का नहीं होना चाहिए, एक फाइनल ईयर रेजिडेंट और एक कंसल्टेंट का, प्री कंसल्टेंट स्टेज का होना चाहिए। दूसरी बात, वो चीजें ज्यादा बोलें जो वार्ड में होती हैं, जो हम लोग करते हैं। बुकिश नॉलेज तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो असेस हमें हो जाता है कि कौन बुक पढ़ रहा है, बुक बता रहा है, और कौन। अभी मैं जिस तरह से इनसे वाइवा ले रहा था वो सारा मैं वही पूछ रहा था जो हम वार्ड में करते हैं। मुझे तो यस। मुझे तो पता नहीं बुक उठाए हुए कितना अरसा हो गया, लेकिन हम सारी वो बातें कर रहे हैं जो हम वार्ड में करते हैं, हम थिएटर में करते हैं। जी सर। ओके सर, डॉक्टर मुनीजा विल बी द नेक्स्ट कैंडिडेट सर, जी and I hope she has turned on her mic. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, we can hear you, Dr. Amsha. Sir, should we move to the next case? And yes, sure. okay, Dr. Muniza, this is your case, and I'm starting the timer. You will have 35 minutes. 40 years old male patient presenting with headache for 5 months and walking difficulty for 2 months. Sir, proceed करें. जी शुरू करें। So I will begin with introducing myself and then obtaining some biodata from the patient that will include his area of residence, his full name with father's name, his area of residence, his occupation, and handedness. After getting the biodata, I will proceed to further elaborate the presenting complaints. My patient is presented with history of headache, so I will first evaluate the site of headache, whether it is in the front of the head, back of the head, or on either sides. Then how did it start? Was there any specific factor that he can associate with the onset of his headache? Was it sudden or was it progressive? And how is it whether is it increasing or has remained the same over the past 5 years? And what's the character of his pain, whether it is throbbing, it is dull in nature, or a constricting band-like sensation?
what's the timing of the headache, whether it is intermittent, continuous, increased in the morning or in the evening, any associated factors, including nausea, vomiting, and weakness or other focal neurological symptoms, followed by aggravating and relieving factors, and also any history of medicines which would have been taken in the past for relief of his symptoms. Sometimes patients are given steroids and painkillers, and they may or may not remember the name of the medicines they've used. After thoroughly elaborating the headache, I will move on to the second presenting complaint, that is walking difficulty, which is there for the last 2 months. I would like to again elaborate the site, whether it is only involving one lower limb, one leg, or both. And how did the weakness progress? How did it start? And is it associated with numbness or any other complaints? Also, I would briefly survey about other cranial signs, including personality changes, incontinence, neglect, visual problems, hearing problems, ability to maintain balance, and swallowing difficulty, hoarseness of voice. Also, I would like to ask him whether he developed any weakness of the face, like someone may have pointed out to the patient that his face looks unusual or asymmetrical. Then I will proceed to other symptoms, generally surveying the whole body, including neck pain, back pain, any abdominal pain, chest pains, any history of cough, weight loss, fever, night sweats. Also, I would ask about any drug allergies or any food allergies. I would like to know about the patient's addiction and addictions, any past surgical procedures, any history of past hospital admissions or past history of trauma, blood transfusions. And I will conclude with asking the patient's social history, socioeconomic history. Is it? Sir, I think I have covered almost every aspect of history. Okay. Can you describe briefly one thing about I your missed. history? One thing I missed was family history. I would also like to ask about the patient's family history, if there is any significant history of diabetes, hypertension, TB contact, any known malignancies running in the family. Okay. So your history is having the headache for 5 months and walking difficulty. So what kind of walking difficulty is that? Is the patient is having a weakness in the legs, osteoarthritis, ataxia, apraxia? Sir, I would like to ask that on, I mean, Did I you would like ask to the patient know. about? Did you ask the patient that whether he is having a difficulty just because of the pain in legs or the pain in the joints? No, I did not ask about ये joint पूछना pain. चाहिए ना, आपने पूछा ही नहीं ना। अब अगर किसी को ये पता है कि मैं चल नहीं सकता हूँ, तो अगर पेशेंट बैठा हुआ है और कहता है मुझे डिफिकल्टी है चलने में, तो आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी ना कि क्या वाकई टांगों में ताकत नहीं है, या टांगों में तो ताकत है लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है, और दर्द कहाँ है, टांगों में है या जॉइंट्स में है, या फिर अगर ये पेन भी नहीं है, तो क्या पेशेंट को जो है विजन में डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से वो चलता है तो चल नहीं पाता है, या फिर उसके जो है ना कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सवाल तो आपको करने हैं ना। जी। 5 महीनों से जो है एक पेशेंट को हेडेक है, आपने उसके जो है ये मालूम करना है कि वेदर इट इज अ नॉन स्पेसिफिक पेन और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रेज्ड आईसीपी। तो उसके लिए कौन से क्वेश्चंस आप करेंगी?
सर अबाउट उसके लिए एक तो मॉर्निंग हेडेक्स का पूछते हैं कि नींद से जागते हुए सुबह के टाइम सर में दर्द तो नहीं होता, और सर में दर्द के साथ उल्टी या मतली तो नहीं होती, उल्टी होने से सर के दर्द में फर्क आता है या नहीं आता, और ये कि खांसने से या जोर लगाने से सर का दर्द बढ़ता तो नहीं है, या आगे झुकने से सर का दर्द बढ़ता तो नहीं है। जी हाँ, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। Okay. डॉक्टर मोनिजा। Typical headache that wakes the patients up at night and worsens with Valsalva. It is mild to moderate but associated with vomiting and dizziness. Complaining about blurred vision, power in all limbs is intact, and difficulty in walking and maintaining balance. ठीक है सर। Okay, so how you will start your examination? Sir, proceeding towards examination, I will first take the consent from the patient again. I will begin with general physical examination. I will look at the resting position of the patient, whether he's lying or he's sitting with support or without support, whether he's using his arms to hold his body up. Is there any tremor visible in his arms or not? Then I'll proceed to the vitals and sub-vitals, check the blood pressure, pulse, and temperature of the patient. And simultaneously, I will ask the patient to raise hands and look for um, tremor in the hands, flapping tremor, pronator drift, and rebound. I tend to do it at the beginning so that I don't miss in the end. Then I'll proceed towards examination of cranial nerves from 1 to 12. सर सारा डिटेल में बताती जाऊँ किस तरीके से परफॉर्म करना है। सर सर आपकी आपका आवाज माइक नहीं आ रही। बताती जाएंगी तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो वैलिड होगा। ठीक है सर, मैं स्टेप वाइज बताती जाती हूँ। क्रेनियल नर्व 1 से शुरू करते हैं। उससे पहले हम इंस्पेक्ट कर लेंगे पेशेंट की नोज फॉर एनी ऑब्वियस ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ डीएनएस पॉलिप, देन we'll check the sense of olfaction in both nostrils. After that we'll move to cranial nerve 2. First, since patient को vision blurred है तो we'll assess the visual acuity in both eyes. उसके बाद color vision दोनों eyes में separately check करेंगे। उसके बाद हम प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे दोनों आईज में, डायरेक्ट, कंसेंचुअल एंड स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट, तीनों चीजें। उसके बाद पेरिफेरल विजन के लिए हम कन्फ्रंटेशन देख लेंगे पेशेंट से, आई मीन पेशेंट के सामने बैठ के, और चारों क्वाड्रेंट्स में ऑन द राइट साइड अप, और दोनों आईज की सेपरेटली, पहले राइट आई एग्जामिन कर लूंगी फिर लेफ्ट आई एग्जामिन कर लूंगी पेरिफेरल विजन के लिए, फील्ड ऑफ विजन के लिए। उसके बाद आई मूव टू फंडोस्कोपी। इस पेशेंट में गिवन द हिस्ट्री एंड given the history, I expect to see papilledema in both eyes. फंडोस्कोपी के बाद हम क्रेनियल नर्व 5 की तरफ जाएंगे। तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस में V1, V2, V3 डिस्ट्रीब्यूशंस में दोनों साइड्स पे पिन प्रिक और लाइट टच चेक करूंगी। उसके बाद जॉ जर्क, मोटर कंपोनेंट ऑफ द 5th cranial nerve including temporalis masseter, lateral and medial pterygoids, और उसके बाद फिर corneal reflex। उसके बाद 7th पे आ जाऊंगी। 7th के लिए आईब्रो फ्राउनिंग करा के देख ली, टाइट क्लोजर ऑफ आईज, नेजोलेबियल फोल्ड, स्माइल एंड ब्लोइंग विसल। उसके बाद फिर 8th क्रेनियल नर्व पे आ जाएंगे। 8th क्रेनियल नर्व के लिए पेशेंट की हियरिंग क्रूडली चेक कर लेंगे, आइदर रबिंग द फिंगर्स और जस्ट a simple snap in front of both ears. If we can appreciate, then we can move to tuning fork tests including Reni's and Weber's to identify whether air conduction is better than bone conduction and is the Weber's lateralized to any side. After that, I will ask the patient to open the mouth and examine the resting position of the tongue, palatal arches, and uvula. After that, I'll ask the patient to say ah. If both the palatal arches move simultaneously and the uvula is not deviated to either side, that means the 10th cranial nerve is normal. I will also notice any fasciculations of the tongue and assess the power of tongue by asking the patient to put his tongue into his cheeks on both sides. I'll ask the patient if I could perform gag reflex so that I can assess
the ninth cranial nerve, the sensory component of the gag reflex. After that, I'll move to the 11th by assessing the patient sternocleidomastoid and trapezius. After that, I will move to the neck. I'll ask the patient if he has any neck pain and if his active neck movements are normal, if he can move his neck without any pain, I'll ask the examiner to perform the Lermit sign. After that, I'll move to examining the arms and legs of the patient. I will first of all make proper exposure and then see if there is any obvious wasting of the limbs, any fasciculation, any visible fasciculations, scar marks. Then I'll check the tone in both arms, in all joints, and assess powers in all major myotomes of arms, followed by checking reflexes and sensations. Also, I will check Hoffman sign in both arms, and then I'll assess for cerebellar signs in arms. I will check for finger-nose coordination and this diadochokinesia. Rebound, I've already checked. Moving on, I'll assess the patient's lower limbs, again in the same pattern with exposure, followed by inspection of the bulk and fasciculation, followed by tone, powers, and reflexes. After that, I'll check the planters. When I check, and I'll also do the heel shin test for coordination. When I'm doing the reflexes, I'll ask the patient if he could sit over the edge of the bed and hang his legs over the bed so that I can assess the knee jerk for pendular jerk. If the patient is able to sit upright on his own, then that's a test for truncal ataxia. If he's able to sit upright, then I'll ask the examiner if I could assess the gait of the patient, and I'll ask and help the patient to get up from the bed. If he is able to, I will look how he stands. Is he able to stand with his feet closed, or does he have a wide base on stance? Then I'll ask the patient to put his feet together and I'll support him from the sides. He may or may not be able to stand with his feet together. If he can, without losing his balance, then I'll make him close his eyes. If not, then I'll not make him close his eyes to check for rhombugs. Then I'll ask the patient to walk on his own to assess the normal Okay. gait. Okay. Dr. Farooq, positive findings दिखाएं. Yes, sir. Lobe signs negative, acuity 12/12, fundoscopy, moderate papilledema, finger nose positive on the left side, tandem walk positive towards the left side, planters mute, powers and sensations intact. Okay, sir. So on the basis of your history and examination, what you think, where is the problem? Sir, one thing I would like to ask on examination about the hearing. Okay. तो आपने वो 8th नंबर नहीं की थी? सर मैंने की थी, आपने की थी? रिनी वीबर दोनों। नहीं तो फिर आपने हियरिंग का क्यों नहीं पूछा उस वक्त? किस वक्त सर? आप कह रही ना हियरिंग का मुझे मालूम करना है, तो जब आपने सर ये जो डॉक्टर फारूक ने एग्जामिनेशन प्रेजेंट किया है, मैं इसमें हाँ। पूछना चाह रही हूँ हाँ, कि इसमें इसको इंक्लूड करूँ या ना करूँ। अगर इसमें पॉजिटिव के- फाइंडिंग्स होती तो ये जरूर लिखते हैं। जी ठीक है, फिर नेगेटिव में ही रखते हैं उसको। ठीक है सर। चलें बताएं मुझे। Sir, my localization of lesion would be at the posterior fossa in towards the left side. Okay. So what would be the differentials? Sir, it could be any lesion in the left cerebellum. Mhm. His age was 40 years, I guess. So, there's a brief history, it's not a very long one. So it could be, for my top differential would be neoplastic.
neoplastic followed by infectious etiology, which is very less likely in this case, since there is no history of fever. But we can keep. ये जो आप कभी कहते हैं ना, और एग्जामिनर के सामने कहते हैं कि इन्फेक्शन, बट इट्स लेस लाइकली बिकॉज देन हिस्ट्री, तो ये आपको जो आधा घंटा या जो भी टाइम दिया जाता है ना, इसमें आप असेस करें, अपनी डिफरेंशियल्स बताएं, और उस पे जो है ना खड़े रहें। और ये बताने की जरूरत नहीं है, आप कंसल्टेंट हैं, आप बताएं कि टू मी इट्स लुक्स नियोप्लास्टिक। अगर आपसे एग्जामिनर ये कहे कि व्हाई नियोप्लास्टिक, व्हाई नॉट द अदर पैथोलॉजीज, तो देन यू कैन प्रूव कि देयर इज नो एनी हिस्ट्री ऑफ द एयर डिस्चार्ज, हिस्ट्री ऑफ द फीवर, टॉक्सिक सिम्टम्स, सो आई don't think so there is an infective pathology. Second, at the age of the 40 years, can it be congenital? I don't think so. There is Yes, a sir. congenital problem because the age is 40, and in acquired, I can suggest that this can be a neoplastic lesion. To me, it looks as a neoplastic lesion. Okay. Yes, sir. So what kind of the neoplastic lesion you are suspecting? At least ये इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको नॉलेज क्या है, इस जगह पे कौन कौन से नियोप्लास्टिक लीजन एट द एज ऑफ 40 इयर्स होते हैं? जी सर। सर इसमें इंट्राएक्सियल और एक्स्ट्राएक्सियल दोनों हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। गुड। एक्स्ट्राएक्सियल में मेनिंजियोमा आ सकता है हमारे पास, और नर्व शीट्स ट्यूमर्स आ सकते हैं। इंट्राएक्सियल में हेमेंजियोब्लास्टोमा आ सकता है इस एज ग्रुप में, देखिए, फिर आपने और थोड़ी सी जो चीज जो है ना, एस्ट्रोसाइटोमा आ सकता है। आपने एक चीज ये कही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ना, वो कंसल्टेंट वाला बिहेवियर नहीं है, आप लोगों का जो है अभी तक स्टूडेंट वाला स्टूडेंट्स बिहेवियर है। वाला है। नर्व शेड ट्यूमर हो सकता है, लेकिन कोई फाइंडिंग है, आपकी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो है इंटैक्ट है, ठीक है, जी कोई हेयरिंग लॉस नहीं है। मुझे ये बता दें कि और कौन सा नर्व शीट ट्यूमर यहाँ हो सकता है? सर, बहुत ही अनयूजुअल है, लेकिन ग्लोसोफेरेंजियल का भी नर्व शीथ ट्यूमर हो सकता है। हो सकता है, तो उसके बाद आपको मिलेगा भी वहां पे जो है ना, डिस्फेजिया, गैग रिफ्लेक्स और डेफिनेटली में। जी पेन होगा, उसकी वीकनेस होगी, ये भी तो जी, चीजें होंगी ना। गैग वीक होगा। जी हाँ। तो ये जो आखिरी 5 या 6 मिनट है ना, इसमें सोचा करें कि अब आपको बोलना क्या है ऑन द पॉजिटिव फाइंडिंग्स, एंड डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव फाइंडिंग्स, एंड और उसको फिर एक अच्छे वकील की तरह जो है ना, आप जो है पेश करें और उसको डिफेंड भी करें। जी सर। और क्या हो और सकता है? और और क्या हो सकता डिफरेंशियल्स है? में एस्ट्रोसाइटोमा आ सकता है। ओके। फिर फोर्थ वेंट्रिकल के ट्यूमर जो एक तरफ को अगर लैटरलाइज हो गए हो, वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। मेगलोब्लास्टोमा हो गया, एपेंडाइमोमा हो गया। जी। हम्म, अच्छा, ये उम्र जो है उसकी तो 40 इयर्स है ना, तो आप तो जी वो सर। ट्यूमर्स बता रही हैं जो इस एज में कॉमन नहीं है। इस जी एज में कॉमन ट्यूमर्स बताएं ना। आप अपीयर हो रही हैं इस एग्जाम में? जी सर, इंशाल्लाह। हाँ। फिर आपकी तैयारी होनी चाहिए ना। आपने वार्ड में क्या देखा है, क्या कॉमन होता है एक अडल्ट मेल में? कौन से पोस्टिव फोसा ट्यूमर्स जो है कॉमन होते हैं? हेमेंजियोब्लास्टोमा होता है सर। मेंजोब्लास्टोमा। क्यों नहीं याद आया जल्दी? सर मैंने बताया था शुरू में, सब पे आपने यही नहीं बोला बताया, आपने मेडुलोब्लास्टोमा बताया, आपने मेंजोब्लास्टोमा नहीं बताया, और आप चली गई है। सेंटर में। और क्या हो सकता है? और अब आप, मैं जब कहूँ, मेटास्टेसिस हो सकता है। अब मैं जब कहूंगा तो आप कहेंगे ये भी मैंने बताया था। एपिडर्माइड हो सकता है? हो सकता है सर, ये मैंने नहीं बताया था। ठीक है ना। 3 सीपी एंगल ट्यूमर्स कॉमन है, जिसमें एकॉस्टिक न्यूरोमा, सेकंड इज मेनिंजियोमा, थर्ड इज एपिडर्माइड। तो ये कॉमन एपिडर्माइड, कॉमन बिल्कुल। ट्यूमर तो आप बता नहीं रही हैं। ठीक है, चलें। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल द डिफरेंशियल्स, ठीक है ना, हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट दिस केस? सर, दिस पेशेंट हैज कम टू अस इफ इन इमरजेंसी, तो पहले हम सीटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें रेस्ट आईसीपी के साइंस हैं। इफ नॉट, देन वी कैन गो फॉर एमआरआई फुल स्टडी विद कंट्रास्ट, एमआरआई ब्रेन फुल स्टडी विद कंट्रास्ट। ठीक है जनाब, दिखाएं एमआरआई।
Can you interpret the MRI? Sure, sir. Sir, I am seeing MRI brain with contrast. The first image on the left is a T2 weighted axial section in the posterior fossa. The second one is a T2 weighted sagittal section through the midline. And the third image is the T1 post contrast image through the posterior fossa. This MRI is showing a large cystic lesion with a small solid component in the left cerebellum, pushing the fourth ventricle, completely obliterating it and causing upstream hydrocephalus. The mural nodule of the lesion is the only enhancing component. Rest of the cyst and its wall are non-enhancing. So now, what is your diagnosis? My top differential here again is hemangioblastoma. Hemangioblastoma. How you will investigate this or manage this case? Sir, in a patient who presents with cranial hemangioblastoma, there is a tendency for other lesions as well, and it may be associated with tumor syndrome, which is the VHL. So we should, so if there is no family history, then it's less likely that it is syndrome related. But if there is a positive family history as well, then it makes it more likely. So I'll go for an imaging of the spine as well to see for other associated lesions. I will go for formal ophthalmologic review and fundus photographs because these are associated with retinal angiomas as well. Also, we can go for an ultrasound of the abdomen and CT of the chest to evaluate for lesions elsewhere in the body. Why not I will also- why not the CT of the abdomen? सर कर सकते हैं पैन सीटी भी कर सकते हैं कर सकते अल्ट्रासाउंड नहीं है, फर्स्ट करना है ना? इन्वेस्टिगेशन हाँ अल्ट्रासाउंड फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है सीटी डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन है Definitely. फिर उसके अलावा हीमोग्लोबिन पेशेंट का देखना होता है क्योंकि हेमेंजियोब्लास्टोमास आर यूजुअली एसोसिएटेड विद क्या नाम है रेज्ड हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट किस वजह से जो है ना हीमोग्लोबिन रेज होता है? सर मुझे एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी याद नहीं है बट इट्स समथिंग टू डू विद रीनल एंजियोमास आई गेस Anyone from the ज्यादा audiences? होता है Anyone from the audiences can you people write it down on the chat? Redux की वजह से सर एक एक करके बताएं या टेक्स्ट कर दें Okay. ठीक है. So how you will manage this case? I will first counsel the patient about the disease itself, surgical options, and post-operative complications. So first of all, the initial thing to address is hydrocephalus because it's acute presentation. So hydrocephalus can be dealt with via placing a shunt or simultaneously during the surgery of the posterior fossa we can place an external ventricular drain. हमारे सेटअप में हम लोग यूं ही करते थे if the patient is presenting to us in OPD so we will not go for a shunt first we will go for the surgery of the tumor directly and before starting the posterior fossa surgery we will place a frontal EVD and keep it to a higher pressure level. Then this tumor shall be surgically removed completely. So if the nodule of the tumor has been taken out, then the cyst will resolve on its own. So we don't have to go after the whole cyst wall in this case. So this will be the So take the surgery. patient, go in the OR and make the position. Sir, after induction of anesthesia, I would first do the EVD in supine position. After that, I will make the patient तो आप prone. EVD supine position में क्यों कर रहे हैं? आप फ्रेजर बरोल में क्यों नहीं कर रहे हैं? जी सर फ्रेजर पे भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास
लेकिन जो हम उधर प्रैक्टिस करते थे तो हम फ्रंटल पे करके ईवीडी, ताकि उसकी मैनेजमेंट पोस्ट ऑप वुंड केयर और वो सारी चीजें आसान होती हैं जब हमने फ्रंटल पे ईवीडी की होती है तो। ओके। फिर उसके बाद मैं प्रोन करूंगी पेशेंट को। प्रोन करने से पहले मे फील्ड अटैच करूंगी हेड पे, और फिर जब प्रोन करेंगे तो फिर दो रोल्स होंगे, वन सपोर्टिंग द चेस्ट एंड द अदर सपोर्टिंग द पेशेंट्स pelvis. The knees should be bent to 90 degrees angle and padded properly. Head में फील्ड में होगा slightly flexed position और straight midline की तरफ। ये पोजीशन हम बना लेंगे। उसके बाद फिर हम अपना इंसिशन मार्क करेंगे फ्रॉम इनियन टू C2, और मिड लाइन में होगा इंसिशन। फिर उसके बाद हम ट्रांसवर्स साइनस मार्क कर लेंगे, सो दैट वी हैव एन आइडिया कि हमें क्रेनियोटमी कहाँ तक रखनी है। प्री आफ्टर डूइंग द मार्किंग्स वी विल पेंट एंड drape द पेशेंट। उसके बाद give the incision, dissect down to the bone, save the pericranium if need be for later reconstruction of dura. Save the pericranial flap. I will then make 4 burr holes and do a craniotomy above the foramen magnum and below the transverse sinuses. Torcula तक नहीं जाना, उससे नीचे नीचे ही रहना है। This will be approx 4 by 4 centimeter craniotomy. C1 की आर्च इसमें लेने की जरूरत नहीं लग रही है। फिर उसके बाद हम ड्यूरा ओपन करेंगे वाई शेप मैनर में। ऑक्सीपिटल साइनस लाइगेट कर देंगे अगर पेटेंट होगा तो। उसके बाद हम सिस्टर्ना मैग्ना से फ्लूइड एस्पिरेट कर लेंगे CSF, ताकि हमारे पास सेरिबेलम को स्पेस मिल जाए। After that we are going to enter the cerebellum, identify the nodule, excise the nodule, take down its vascular supply and just drain कर लेंगे। नोड्यूल तो सरफेस पे पड़ा हुआ है। अच्छा, जी, आपने इन्वेस्टिगेशन ये मुझे नहीं बताया मैनेजमेंट में कि और इन्वेस्टिगेशन क्या मैं करवाऊंगी जिसकी वजह से आप थोड़ा सेफ भी सर्जरी के टाइम पे हो जाए। सर हम MR एंजियोग्राम कर सकते हैं, तो उस पे हमें इसके फीडर्स का भी पता चल जाएगा, साथ साथ साइनसेस जो नजदीक हैं उनकी पोजीशन का भी पता चल जाएगा, और पेटेंसी का। ओके। तो MRV इसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। इसके अलावा हम DSA भी करवा सकते हैं, वो उसमें भी हमें नोड्यूल का प्रॉपर ब्लश नजर आता है। So what are the complications of this surgery? सर प्रोसीजर रिलेटेड और फिर पोस्ट ऑप। एक तो प्रोसीजर रिलेटेड हमारे पास इन्फेक्शन, ब्लीडिंग। इस केस में मेंजोब्लास्टोमा हाईली वैस्कुलर ट्यूमर्स होते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग का सिग्निफिकेंट रिस्क होता है बिकॉज ऑफ द ट्यूमर इटसेल्फ। इसके अलावा इफ इंजरी टू द साइनस इंजरी होगी तो फिर एम्बोलिज्म का भी रिस्क होता है। एक्सपोजर करते वक्त वेरी लेस लाइकली, लेकिन वर्टेब्रल आर्टरी और पाइका इंजरी का भी रिस्क होता है। फिर यह है कि डैमेज टू सेरिबेलर टिश्यू, इफ वी टेंड टू गो डीप, खुदा ना खास्ता, तो फिर ब्रेन स्टेम को भी डायरेक्ट डैमेज हो सकता है इफ यू आर नॉट कॉशियस इनफ। ये इंट्रा ऑपरेटिव हो गई। फिर पोस्ट ऑप में ये है कि इनकम्प्लीट एक्सिशन थी या नोड्यूल मिस हो गया, जो उसका सॉलिड कंपोनेंट था वो हम नहीं निकाल सके। दैट्स वन ऑफ द नोन कॉम्प्लिकेशंस। दूसरा ये कि ataxia may become worse. फिर लेट hemorrhage हो सकता है। Why the ataxia will be worse? सर अगर नॉर्मल सेरिबेलर टिश्यू डैमेज होता है बिकॉज ऑफ कॉटरी और बिकॉज ऑफ नॉट सो जेंटल हैंडलिंग ऑफ टिश्यूज, तो उससे वर्स हो सकती हैं चीजें। बस ये कि हमें हैंडलिंग बहुत मेटिकुलस रखनी होती है अपनी। असल बात है इस केस में जो है ट्यूमर जो है वो तो सॉलिड नोड्यूल तो बिल्कुल सरफेस पे है, ठीक है। जी। होल इज द cyst. When cyst will be decompressed, you can also see the nodule very clearly, and also that is on the surface, and you can also Yes, sir. dissect carefully
with the help of the your bipolar and remove it completely. Yes, sir. So what is इसमें तो the नोड्यूल काफी प्रोमिनेंट है, अगर इससे भी स्मॉल नोड्यूल हो तो वो समटाइम्स मिस हो जाता है, एंड लेटर ऑन पेशेंट मे कम विद रिकरेंस ऑफ सिस्ट. so what is the post-operative management? Sir, post-operatively, the patient is usually kept in ICU for overnight and on ventilator, and then gradually weaned off. If the anesthetist assessment is such that the patient is patient can be woken up right away, then there is a possibility. Still, the patient will be shifted in ICU for monitored care. After that, we will obtain an MRI, MRI with contrast in the initial 48 to 72 hours to look for excision of the lesion and establish a baseline. If the facility of MRI is not available or the patient is ventilated, then we can go for a CT brain plane to look for post-operative hemorrhage or any other complication. EVD will be kept in situ for another 5 days, 3 to 5 days, and see how the patient tolerates to EVD block challenge. If the fourth ventricle is open and the patient can tolerate the block challenge, then EVD can be removed. If the patient does not tolerate the block challenge, then we may have to think for other CSF diversion procedures, including ETV and VP shunting. I think this is the last test, and this cannot create a problem. Only deflation can improve the patient. Otherwise, sir. if the tumor would be of a such size, then there are the problems of the post-operative inflammation and maybe a later lingering of Compression of fourth ventricular drain. Right. I think that on the second day, I think drain should be removed. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, I think we have completed and the time is nearly going to be end up. So, anything, Dr. Farooq? Dr. Sir, Farooq? sir, we have 5 more minutes, and I would like you to comment on both the cases, both the candidates, and we can take any question if someone has from you. So we will take the opportunity of having you with us. Dr. Maniza also presented very well, and the thing is that this virtual have a limitation, and Yes, sir. we will see the patient how they perform at the time of the examination on the real patient. So again, they have a very good approach of the taking history and examination, and they know very well about the theoretical knowledge. Only you, little sir. bit problem which we observe is the nowadays the students attachment with the ward, that every senior is watching and also having a share with the others, that the students are not giving the time to the ward, and this we easily assess from the when the student start talking, and during conversation we know that how much the student have taken given his time to the ward. So please be in touch with the ward, because there is no any other thing other than the ward. Your training is totally dependent on that. Your training doesn't need your any library. The library is your ward. All the time you can, if you need some knowledge, you can take out the book and start, but always be in the ward. And when the patient comes, definitely 3 hours of the period has the repeated entry of the same patient. So try to get one patient at that time and start reading, and the second time again read if you don't remember, but third time you know, okay, what kind of the patient is this, if it is a tumor, it is a spinal trauma, infection, then discuss with each other, and whenever you feel any lack of the knowledge, then again you can consult with the book or your senior or discuss it. Going into the library,
I never like the student in these examination can sit down in the library. These examinations are not offer library oriented. This is completely your knowledge and skill based, and that comes when you will be attached with your award. Okay. Yes, sir. Sir, thank you so much, sir, for giving Thank us you so much. time. And, Sir, Thank I'm you, very sir. humbled, sir, to have you. And Keep hopefully, it up this good work, Farooq. thank you so much, sir. Thank Okay, you. Allah Hafiz, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. So we are done with the 3 cases. So this was the annual. Okay. So just let me call the next examiner. He hasn't joined, I guess. So give me a minute. If you guys have any question, you can leave them here. I will try to answer your questions. And then we can move to the next station. We have 3 more minutes. So let me call him. So next examiner will be with us in a minute or so. Dr. Abdul, you will be the candidate. So I hope you guys have heard Dr. Riaz Raja that he told you that we may have 2 long cases. This has been planned for quite good time now, but they were unable to implement it somehow. But I don't know. We will have a senior examiner with us, so we can ask this question from him as well, if he can help you out or clarify this decision. So let's see. So if we have 2 long cases, as he said, हमारे पास जो है वो we will have short time. It will be minimized to 30 minutes or maybe 45 minutes. So you will have to focus your history and examination. So better if you practice. I mean, we try to do it over here, that we ask you to do the focused history and examination. So it will kind of help you in that regard, but still you will need to practice it. Okay. And clear up your mind. जैसे मैंने पहले भी बोला, if you think जैसे like यहाँ पे spine का case था, so you do not need to go deep into that. So you can just ask few questions from cerebellum, few questions from lower cranial nerves, and just 1 or 2 questions from the supratentorial component of the brain. Otherwise, you do not need to go deep if you think this is a case of spine. And you can simply, and while talking, you can just simply mention to the examiner as well that you are suspecting a case of spine. So your examination and history will be focused on the particular component of the neurospine. Okay, so we have my senior, my mentor and supervisor as well. We have Professor Lal Rahman with us. So everyone knows about him. So जितने भी सेशन आप लोग सारे अभी तक देखते आ रहे हैं ऑनलाइन भी, यूट्यूब चैनल पे भी, and he is the active part of those sessions. So sir, अस्सलाम वालेकुम sir. जी अस्सलाम वालेकुम और कैसे? Thank you. Sir, alhamdulillah. Sir, thank you so much sir. आपने हमें टाइम दिया, and we would like to do 2 cases. और सर आपसे पहले हमारे पास सुबह में डॉक्टर आमिर सईद थे and for 1 case, और उसके बाद डॉक्टर रियाज राजा, तो we did 2 cases, 1 brain and 1 spine, and we would like to do 2 more cases with you. And सर एक चीज डिस्कशन में आई थी सामने, so I would like to clarify. डॉक्टर रियाज ने सर ये बोला कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, but we might have 2 long cases on during this exam. So if you can clarify it. मेरे ख्याल में फाइनल नहीं है अभी तक, क्योंकि इतने हमें उन्होंने बताया था और दी भी थी कि भाई 2 लॉन्ग केसेस होंगे, एक स्पाइन का और एक ब्रेन का,
लेकिन जी ये सर। तब होंगे जब फैकल्टी एग्री कर ले, और तो अभी तक फैकल्टी की इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल में वही पुराना, इस एग्जाम में वही पुराना सिस्टम होगा, शायद अगले एग्जाम से फिर हो जाए ना, जी सर। क्योंकि इस पे ओके कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों की राय है और कुछ लोग उसके वो नहीं मानते। तो अभी तक फैकल्टी की तरफ से अगर हमने हमारी मीटिंग होगी 15 को, जी जी सर। अगर उसमें हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर नहीं होगा, यानी मेरे ख्याल में नहीं होगा, मोस्ट चलिए प्रोबेबली। इस सर उन्होंने भी ये कहा था कि श्योर नहीं है, बट मतलब प्लान है कि शायद इस एग्जाम में या नेक्स्ट एग्जाम में जो भी हो। हमारे कॉलेज ने मान दिया, और उन्होंने मुझे चीजें भेजी थी, उनकी जो टाइमिंग्स और उनकी जो नंबर्स हैं, कैसे पास होंगे, पासिंग मार्क्स क्या है, सब चीज़ उसने मुझे एक्सप्लेन कर ब्रेन में। फिर मैंने फैकल्टी वालों को कर दी, लेकिन अभी तक उस पर हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो मोस्ट ये वही एक ही लॉन्ग से अभी तक होगा, मोस्ट प्रोबेबली। ओके सर, थैंक यू सर। सर शुड वी स्टार्ट द केस नाउ? यस। नो, बिकॉज जुमा है अच्छा, तो वी वुड लाइक टू हम जल्दी कंप्लीट कर कौन लेंगे। कौन कर रहा है? हु इज सर द डॉक्टर कैंडिडेट? अब्दुल रहीम है सर, डॉक्टर अब्दुल रहीम। सो ठीक है। Hi, hello, assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। Thank you very much, sir. अगर आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकें तो दैट वुड बी गुड, बट अगर नहीं है कंफर्टेबल या नहीं है इसी प्लेस पे तो इट्स ओके, सो वी कैन मूव टू दिस केस नाउ। ओके, गुड टू सी यू। अच्छा, लोग कितने हैं पार्टिसिपेंट करो? Sir, we have like 32 people joined on this Zoom meeting, और कैंडिडेट्स हैं ज़्यादा, बट आई डोंट नो कि वो हालांकि उन्होंने समहाउ पे भी कर दिया, और पे का मकसद हमारा सिर्फ इतना होता है कि लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें कि ज्वाइन करेंगे, बट Yes, स्टिल मोर देन 40 पीपल पेड, बट जनरली हमारे पास 25 to 30 के बीच में रेशो रहा है सर, जो पार्टिसिपेंट्स हैं। कितने दिन रहेगा? सर ये हमारा आज 4th डे है सर वैसे, अच्छा, और लॉन्ग केस का डे 1 है, बट अदरवाइज हमारा 4th डे आज चल रहा है, और हमारे पास एक दिन और है, हम कल पे सेशन रखेंगे एक और, वो भी लॉन्ग केसेस का। तो वी विल डू 5 more लॉन्ग केसेस टुमारो, सो टोटल ऑफ 10 केसेस, और फिर देखते हैं अगर कोई और सेशन रखना चाहेंगे तो वी वुड लाइक टू। जी सर। तो डॉक्टर अब्दुल, दिस इज द नेक्स्ट स्टेशन। सर हमारे पास 35 मिनट्स होंगे सर केस के लिए, एंड 10 मिनट्स फॉर डिस्क्लोजर, ताकि 45 मिनट्स हमारे पास पूरा ही केस के लिए होगा, फिर नेक्स्ट 45 मिनट्स दूसरे केस के लिए। ठीक है, ठीक है। 5 मिनट में इसकी एग्जामिनेशन हम कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए, एंड देन 30 मिनट्स फॉर डिस्कशन। सो दिस इज डिस्कशन ऐसी होगी कि हम जब हिस्ट्री पे डिस्कशन होगी पहले, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन की होगी, फिर जी सर। इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, इस तरह होगा ना? जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही सर, जैसे एग्जाम में करते हैं सर, बट ये कि हम थोड़ा सा शॉर्ट से हिस्ट्री दिए ताकि वी वुड लाइक टू नो कि ये और क्या पूछना चाहेंगे पेशेंट के हवाले से। पूछेंगे नहीं वो, बता अपना सिर्फ वो बताएंगे क्या क्या हिस्ट्री में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, वो फोकस हिस्ट्री लेना चाहेंगे, और देन वी विल शो हिम द हिस्ट्री पॉइंट्स, और सिमिलरली एग्जामिनेशन पे जाकर फिर आप डिस्कस करेंगे। जी अब्दुल रहीम सर। Okay, thank you. Okay, so this 35 years young lady presented with the back pain radiating to both legs for the last 4 months. So I would like to introduce, after introduction, greeting, introduction, and taking permission, I would start from the, like, how did it started? What were the factors, like any heavy lifting or any trauma? And how did it started? And it's radiate to the both legs. So in which direction it's in which dermatome the radiation is, either it is L4, L5, S1. And then furthermore, I would like to ask for any sensory disturbances, like any numbness, any saddle anesthesia, and would like to also to ask about, and also will be excluding like any fever, any weight loss, any yes, any sphincter disturbances, and any excessive pain, how much the pain is on the pain score from 0 to 10. 0 mean no pain at all, 10 means the worst pain you can imagine. So if you can help me and tell me that how much is the pain score in this patient, so I would be able to more tailor my history. So we will provide you, just go through your history point जो आप पूछना चाहेंगे, then we will provide you. Okay, so after that I would like to ask about the other spine symptoms,
like any weakness, and if there is any weakness, so where is the weakness and how much is the weakness? I need to quantify it. And after that, I would like to ask. Yeah. Then you continue. Okay. So after taking the associated symptoms of the spine, like weakness and weakness, pain, sphincters, and any red flag signs, any systemic history of any cancer, any infection, any IV drug abuse, or any immune compromised patients like having many other disease, CKD and liver diseases, end stages diseases, or any transplant history, any associated other other history, and specifically localization of the pain, and what factor aggravating the pain, like is it increasing with the movement? So if it is increasing with the movements, indicating toward the instability and degenerative disease, and if it is more at night time or more in the daytime, so if it is more at night time, indicating the neoplastic pathology, and how did it occur, like sudden or if sudden occurrence, then okay. So these are the things that I need to ask. Then I would also like to take some brief history from the brain, like any seizures, any headaches, any vomiting, and how is the overall the patient lifestyle, how much these symptoms affect the patient lifestyle, his appetite, his personal history, his appetite, his working schedule, and rest of the things like the family history, the drug history. In family history, I would like to exclude the NF1 and NF2 type of sort of disease, and any peripheral stigmata of that, and any cranial stigmata of those NF1 and NF2. And yes, then I would conclude my history by asking the past surgical history, past medical history, and past any trauma history, and any drugs, long-lasting drug history, or any previous surgery. So these are the important and targeted things that I would like to take in the 5 minutes time. But it will all depends on the initial questions that to which direction the history is going. So I will be tailoring my history either toward the infection, either toward the degenerative, or to the neoplastic. It all depends on the patient scenario. Yeah, thank you. आपने reflex के बारे में बात की, तो what you will ask? So I would like to ask any fever, any tenderness, and any debilitating pain, incapacitating pain, instead of the medications, any progressive neurological deficits, any incontinence or retention, or any sedal anesthesia, or any immune compromised states like any other comorbid conditions, or any malignant condition which prone the patient for the metastasis. So to me, all these are the important red flag signs. And also including the extreme of ages, either young age, very young age, or very old age. नहीं, but she's young. इसमें extreme of ages क्यों पूछ रहे हो आप? This patient is in front of you. आपने इससे reflect पूछने हैं. Okay. So if she give me some clue that either she has, okay. To me in this case seems like radiating to both legs. So probably it is. I would keep my differential, the degenerative, the disc disease. नहीं, देखिए हमने आपसे differential तो नहीं पूछा है ना, आप क्यों बता रहे? We have not asked you about the differential. I have just asked you about the red flags, and you are going for the differential. So why you are going for that? So in this case, I would So like to you were for Abdurrahim, you need to stop and listen to the examiner. Okay. Sure, sir. Okay. तो ये बताएं कि you are asking about the history of drugs की कौन सी drug history आप पूछ रहे हैं? Any IV drug abuse she's taking, or any anti-tubercular medications she's taking, or yes.
These two are important for me. Are any steroids she's taking? Okay. So आपके जहन में what do you suspect क्या हो सकता है इसमें? What is your differential diagnosis? So the differential could be degenerative on the top because very common, and it could be neoplastic. What do you mean by degenerative? Degenerative means it could be disc disease, any disc prolapse, or any bones osteophytes, but most commonly the disc herniation in this case. Because Degenerative में एक disc आ गई और क्या चीज आ सकते हैं? in the lumbar spine, there could be stenosis, and there could be osteophytes. Okay. There could So, be नहीं osteophyte जो है ना वो तो अलग चीज है ना. अगर stenosis आप cervical suspect कर रहे spine. हैं, Yes, boss. नहीं. What do you think? Where is the problem? Sir, the problem is in the lumbar spine. Lumbar spine, and you are suspecting stenosis as well. So, if you are suspecting stenosis, then what should we ask from this patient? So I would like to ask about the claudication distance, that how much she can walk. लेकिन आपने तो ये नहीं पूछा ना. So the patient is quite young, at the age of 35 years. I have very rarely seen the patient with the lumbar spine stenosis. नहीं, तो फिर आप अभी claudication क्यों पूछ रहे? So you ask about that if if the patient is presenting with a stenosis. नहीं, आप तो stenosis भी suspect कर रहे हैं ना. तो जब आप suspect कर रहे हैं, that is also one of your differential diagnosis. Then you should ask about the other thing, but you have not asked. Okay. और क्या चीज आपने पूछी इसमें? और क्या चीज आप suspect कर रहे हैं इसमें? Sir, I also suspecting the disc pathology. So the disc, that either the pain is increasing when she's bending forward or when she's raising her leg, or it is improving with the increase with the Degenerative के अलावा और क्या suspect कर रहे हैं? Pardon me, sir. One is your differential degenerative disease, ठीक है? दूसरा differential क्या बना रहे हैं? So it could be neoplastic. अच्छा फरूख, आपने जो टाइमिंग बनाई है तो जब मुझे फिर रोक लेगा, हिस्ट्री का टाइम पूरा होता है फिर मुझे बता जी सॉरी मैं टाइमर लगा लेता हूं सर. So the second is neoplastic. It could be some schwannoma, some neurofibroma, NRC tumor. Okay, so how can you say it might be schwannoma? किस बेस पे आप बता रहे हैं मुझे? So schwannoma can also cause a radicular pain, but mostly that is like unilateral. In this patient, इस पेशेंट में मुझे बताएं, आपने schwannoma की बात की तो आप किस बेस पे मुझे ये बता रहे हैं? There should be some evidence, history based evidence होना चाहिए आपके पास. तो आपने history ली. The patient is young. The patient is young. She is female, and there is a radicular pain to the radiculation of the pain. So schwannoma and nerve sheath tumors are one of the differential for these radicular symptoms. Okay, लेकिन ये तो इसको तो bilateral pain आ रहा है ना, फिर क्या है? So then probably it is the central disc which causes the pain. नहीं, वो तो degenerative तो हो गई ना अभी. ट्यूमर क्या है उसमें मुझे आप बता दे चीजें ना. The infection in this patient very unlikely. I will keep it in the bottom because why? Because the in the infection in our region, the tuberculosis is quite common, but that is more common in the dorsal spine and a bit rare in the lumbar spine. And the patient primary complaint in the infection would be back pain, incapacitating back pain, and excruciating back pain. So therefore, I keep it in the bottom. Okay. लेकिन bottom में रखने का भी there should be some reasons and there should be some evidence. नहीं, आप bottom में रखिए, top पे रखिए, लेकिन आप differential में तो रख रहे हैं ना. सर मुझे सिर्फ एक चीज बताई गई है कि रेडिकुलेटिंग विद बोथ लेग्स फॉर द 4 months. नहीं, तो बाकी चीजें आपने खुद जो है ना डग आउट करनी है. यू शुड आस्क कि भाई ये चीज है या नहीं है, चीज है या नहीं. तो आप आपके पास पॉइंट नोट करते जाएं. ओके, और क्या चीजें हैं, और क्या डिफरेंशियल बना रहे हो आप? ये तो आपने ट्यूमर्स बना दी, और क्या डिफरेंशियल बना रहे हो? सर vascular again very I will keep it in the bottom because देखिए आपने रखने हैं या नहीं रखने हैं, चाहे बॉटम में हो यू शुड जस्टिफाई, चाहे टॉप में यू शुड जस्टिफाई. आप नहीं रख रहे उसको जस्टिफाई करना है. Sir, at this level, I will keep the degenerative on the top and all the rest at the bottom. नहीं, वो तो आपने रख दिया ना. आप वास्कुलर की बात कर रहे हैं, तो वास्कुलर क्यों, किस बेस पे आप वास्कुलर इंक्लूड कर रहे हैं? Vascular can present with the
with the pain, with the long-lasting pain. But most probably, most of the time, the patient present with the acute and sudden नहीं exacerbation. देखिए देखिए आप चीज समझना, यहाँ पे बात होगी सिर्फ इस मरीज की। Sir, आपने टॉपिक डिस्कस नहीं करना है, आपने इस पेशेंट को डायग्नोस करना है, हमने आपने इस मरीज के बारे में बात करी। इसमें 4 months की वास्कुलर हिस्ट्री क्या है, बना, लॉन्ग लास्टिंग हिस्ट्री नहीं है। 4 months की हिस्ट्री आप इसमें जस्टिफाई करें क्या आप रखना इस चाहेंगे? पेशेंट में आपने बताना है, आपने हमें पढ़ाना नहीं है उस वक्त, आपने सिर्फ एग्जाम sorry, पास sir. करनी है, ठीक है जी। Okay, sir. Sir, after keeping the degenerative and the new plastic, I would like to examine the patient. I do नहीं not. एग्जामिनेशन, अभी हिस्ट्री की बात हो रही है, एग्जामिनेशन पर हम नहीं गए। Okay. वी आर ऑन द हिस्ट्री। So my top differential is both. In this case, it is degenerative disc disease. वो तो आपने बता दिया ना, उस पर डिस्कशन हो गई जी सर। बाकी जो आप वास्कुलर बता रहे हैं उस पे क्या वास्कुलर है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? Okay. To me, it is very unlikely vascular because the vascular can present with the long-lasting pain, but mostly in the dorsal spine, and the patient suddenly presenting with the spasticity in the lower leg, the upper motor neuron sign in the lower leg, and there is sudden severe pain and sudden severe deterioration in the neurology and the लेकिन आपने तो ये sphincters. चीज नहीं पूछी है, आपने तो ये चीजें पूछी नहीं है, तो आप किस तरह बता रहे? Sir, if I'm not wrong, I have mentioned that I would like to ask about the severity of the pain and the onset of the नहीं pain. नहीं, severity of the pain is something else, और जो अभी आप बता रहे हैं ये कुछ और चीज है। उस वक्त क्या वास्कुलर आपके जहन में था? Sir, for this patient, I नहीं have था उस वक्त kept में। it in my differential during थोड़ा my एग्जामिनेशन की तरफ जा सकते हैं? सर ये Yes. हम थोड़ा सा इनको हिस्ट्री दिखा देते हैं। दिस इज द डिटेल अच्छा। हिस्ट्री। ठीक है, देखिए ये पढ़ ले। जी भाई, पढ़ लिया। Yes. अब क्या हो सकता है? इस पेशेंट को बोथ लोअर लिम्स में वीकनेस है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी है, और ये प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग हो रही है। तो व्हाट डू यू थिंक? नो, द पेशेंट इज अनेबल टू वॉक। Yeah, so then it goes mostly in the favor of some vascular pathology. Like Pardon me, sir. Sorry, I cannot. आप कह रहे some vascular pathology, like what pathology? So because the patient is now presenting with the what kind of vascular pathology? So it could be AV malformation, and secondly, it could be neoplastic lesion because there is progressive worsening of the neurology and the sphincter involvement, and there is no history of trauma. मैं आपके 10 सेकंड लूंगा प्लीज। जितना सवाल कर रहे हैं ना आप उसी पे फोकस करें, हमारा टाइम भी इसमें बचेगा और आपको एग्जाम में भी फायदा होगा। मकसद आपकी प्रैक्टिस कराना है, सो प्रैक्टिस में यू हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चन प्लीज। अगर सिर्फ पूछा है, नाम पूछा है, डिफरेंशियल पूछा है, तो आपको जस्टिफाई नहीं करना, आपसे प्लीज उसी पर है काइंडली। Okay, sorry sir, sorry. So मैंने पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ वेस्कुलर, जो भी आपको एक दो बताने बताएंगे दैट्स इट। So the vascular malformation and very unlikely could be keratoma in the at the Keratoma कहाँ पे? Keratoma in the lower dorsal spine and the conus lesion very unlikely both. अच्छा, आपने उधर कितने केराटोमास अभी तक देखे? सर कोई नहीं देखा, sorry. अच्छा, okay. Vascular AV malformation, I have the dural AV malformation are the pyramidulary and the other one the glomus intramedullary. अच्छा, वास्कुलर जो AV malformation हो तो क्या उसमें पेन रेडिएट करता है लोअर लिम्स में? नो सर, उसमें ज्यादा रेडिएशन तो नहीं होती। अच्छा, ओके, यानी आप वास्कुलर मालफॉर्मेशन, फिर व्हाई इट इज नॉट वास्कुलर मालफॉर्मेशन? क्या चीजें हैं जो कि होनी चाहिए वास्कुलर मालफॉर्मेशन में, इसमें नहीं मिल रही आपको? यस, आपने जो डिफरेंशियल बताई है ना, आपने उसको जस्टिफाई भी करना है, और जो चीजें उसमें नहीं मिल रही आपने वो भी बताना कि शायद ये ना भी हो, क्योंकि सारे तो नहीं हो सकते, कोई एक होगी ना डायग्नोज आपकी। बाकी तो आप डिस्कशन कर रहे हैं ना, यानी ये भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता, इस तरह चीजें बताएं। तो व्हाई इट इज नॉट वास्कुलर मालफॉर्मेशन?
Okay, so it is not vascular malformation because the patient is not having sudden and acute deterioration, but the patient is young, so and there is no history of trauma, no history of any infection, so it could be vascular malformation, and it is neoplastic because the patient is young and there is progressive neurology, progressive deterioration, and there is no history of trauma. And if I would ask that either the patient has in the history I asked, but actually it is a virtual meeting, so she didn't respond that either she has any night pain or not. So therefore, Night pain क्यों पूछ रहे हैं? Why you are asking for night pain? What do you mean by night pain? So if it is any nocturnal pain, so it then goes in the favor of like neoplastic pathology. क्यों ये nocturnal pain क्यों होगा? क्या? Because What of is the yeah. Uh-huh. So probably because of the venous congestion, the Mhm. patient develop more congestion and more pressure, and it arouses the patient from the pain because the dura is a pain sensitive structure. नहीं venous congestion क्यों होगी? बाकी हम जब लेटे होते हैं हमारे अंदर क्यों नहीं होती? इनमें क्यों पेन होता है? So at night time there is the carbon the respiration is reduced, the rate is reduced, so the carbon dioxide accumulate and it causes vasodilatation. So it might be the cause. यहाँ पे congestion क्यों होती है? बाकी जगहों पे क्यों नहीं होती? Why here? तो legs में भी होनी चाहिए, तो upper limb में भी होनी चाहिए, spine में क्यों हो रही है? Because the canal is already compromised, then so therefore it early reaches to the decompensated stage. History में और कितना time है फिर? Sir, होगी complete sir. We are. ठीक है, अब examination तरफ जाएं, ठीक है? Sir, should we show अच्छा, the एक मिनट। examination? आगे पूछेंगे sir. Yes sir. एग्जामिनेशन में भाई आपने इस तरह करना है, ये नहीं आप ये समझे कि फरूख के साथ मरीज बैठे हुई है और Yes. आपने उससे चीजें मालूम करने की, ये चीजें हैं या नहीं, वो बताएगा कि आप पूछें कि फलां चीज है, अगर है तो बता देगा, अगर नहीं तो आपने नहीं हो रहा है कि लिस्ट बनानी है, फिर उस पर डिस्कशन होगी। समझ आ गया ना? जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले आपने उस बेस पे हमें डिस्कशन करनी है हमारे साथ, ठीक है? आप जो इन्फॉर्मेशन आप नहीं ली है वो डिस्कशन आपका हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो सर मुझे बता सकते हैं फोकस होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें। जी जी बताएं, पूछेंगे आप? अच्छा, इस पेशेंट में आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और जो कलेक्शन आपने की हमने उस पे बेस पे डिस्कशन करनी होगी। अब बाद में नई चीज उसमें हम नहीं मानेंगे अभी। So should I ask few questions from Mr. You should Farooq? ask questions. You should ask Yes, questions. Relevant questions. Specific question पूछना। साइंस पूछें क्या क्या? Okay. So सर फारूक आप ये बताएं कि आपको ये पेन ये कहाँ अपर है और ये कितने दर्जे का है और ये कब ज्यादा होता है? एग्जामिनेशन की हम बात करें, हिस्ट्री की बात नहीं करें। काइंडली एग्जामिनेशन में आप क्या चेक करना चाहेंगे, आप बताएं, मैं आपको जवाब देता हूँ। Okay. So upon inspection, is there any skin stigmata on the spine? No. Any scar? Any hairs? Okay. Any deformity? Okay. On palpation, is there any tenderness? Not significant, very mild. Mild. Okay. Is there any difficulty in the active movements, in the forward flexion, in the extension? Not much. Not much. Bending is also okay. Yes. Okay. So then I will proceed toward the lower limb examination, and I will check on the inspection. Is there any skin stigmata, any scar, any wasting of muscles, any hairs or any foot deformity, any tropical ulcer, anything? No. Nothing. Okay. Can you please tell me about the myotome? In which myotome, how much is the power like in the L1, L2, L3, L4, L5? Grossly bilateral power है 3/5. दोनों grossly. Okay. The 3/5 bilateral equal in all myotome. जी. In the history, there were mentioned that only in the
In the thigh flexion, there is some weakness. Okay, so how much is the SLR? Power 3 है उसकी. Sir, SLR कैसा है bilaterally? वो नहीं है, नेगेटिव है, उसको ऐसा लिफ्ट करने में पेन नहीं है, बट उसको रिस्ट्रिक्शन है ना, लिफ्ट पूरा कर नहीं पाएगा उसकी के अंदर. ठीक है. जी. Can the patient feel any pain when we are moving the leg up? No. No pain. Okay. And how? What is the sensory level? सेंसेशन जो है उसकी डिक्रीज है. अनश्योर है वो उम्बिलिकस और इंग्वाइनल के बीच में समझने के उसको कुछ है, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा. अच्छा. Near the umbilicus, roughly we can say. No, below the umbilicus. Okay. More toward the inguinal. Okay. Okay. How are the sphincters? Sphincters आपने चेक ही नहीं किया, एग्जामिनेशन में आप कर नहीं पाए. Okay. The patient is not allowing us. Okay. जी. Okay. Okay. Anything else you would like to know? And how is the planters? Planters kind of mute है, तो खास उस पर रिएक्शन नहीं है. Okay. So the power is almost 3. So can the patient walk with support or not? Would you like a patient with the power of 3 to walk? No, I would not ask because it is 3. So, but if with support he or she was able to walk, I would ask her. So Why would be? क्या रीजन है, क्यों कराना चाहेंगे वॉक? उसको जब पावर 3 है, क्या देखना चाह रहे हैं वॉक करा के? Okay. Okay. So I'm omitting this step. So so these are the findings जो आपके पास हैं. अब आप सर के जो है वो क्वेश्चन का जवाब दें. बस ये फाइंडिंग्स है और इसके अलावा कुछ खास फाइंडिंग नहीं है. अच्छा, इस पेशेंट में कोई चेस्ट एब्डोमेन, कोई lymph nodes वगैरह या सारी चीजें. बाकी बताएं कि ये सामने आपकी इंफॉर्मेशन आ गई, आपने कुछ पूछ भी लिया. व्हाट अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू सी? ओके, बल्क नॉर्मल एंड ऑल इन पावर. या अगर आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट है तो मुझे बताएं ताकि मैं आपसे डिस्कशन शुरू करूं. Can I extend my examination toward the cranium? ये देखिए, ये पेशेंट आपके सामने है. ठीक है सर. Okay. Okay. How is the hearing of the patient? Normal है. Normal है. Any skin stigmata, any capillate spot, any flickering and any flickering of the skin, or any neurofibroma, or any lumps नहीं, and ऐसा bumps? कुछ लिखा हुआ जनरल फिजिकल ग्रॉसली अंडर मार्केबल है. And how is the vision of the patient? Normal है. It's normal. Okay. So I think my examination is completed, the relevant specific examination. Okay. ये बताएं कि what do you think, where is the pathology? The pathology is in the lower dorsal spine, probably at the level of like D10, D11. D10, D11. Yeah. Okay. So why you say this? Because Mr. Farouk said that the sensory level is below the umbilicus, like near the inguinal ligament. तो inguinal ligament पे level क्या बनता है? L1 बनता है sir. So in the lower dorsal spine, we assume like 2 or 3 level above lying the lesion. The spinal cord level is 2 or 3 above. Okay. ये sensory level कौन सा level है? आपने कौन सी sensation आपने check की? So boss, I checked as in the information he said that the sensation is compromised, just like there was no specific level, but he said that near the umbilicus, below the umbilicus, she can feel. So roughly the lesion is at D11 or D10 in this area, or could be in the L1. Okay. So अब जो है ना आपकी differential क्या बनती है? Sir, no, my differential on the basis is of history and examination is neoplastic lesion in the lower dorsal spine or the dorsolateral junction, probably in the lower dorsal lesion. Neoplastic, एक तो neoplastic हो गई, कोई और differential बना रहे हो कि नहीं? सिर्फ एक ही neoplastic है बस. जी? It could be disc, but because it could be dorsal disc, but very
I will keep these two on my top. Disc और क्या? New plastic. New plastic, yes. So what type of new plastic you want to include in this patient? I would like to keep the benign lesion. The patient is, yeah. The Benign, nerve- the benign का extra मतलब क्या? means like schwannoma or meningioma. Schwannoma और meningioma. So अब schwannoma क्यों शामिल कर रहे हैं इसमें? What is the reason? So because the patient is young, the history is of 4 months, and there is radicular pain on the history, and on the examination there is no tenderness, there is no limitation of movements, the range of movements is normal, and there was no, though there was no peripheral stigmata, but the patient's sphincters are compromised and there is weakness in bilateral lower limbs. वो तो देख ये चीज तो किसी भी लीजन में हो सकती है, लेकिन अब schwannoma के लिए स्पेसिफिक क्या चीजें मिल रही हैं आपको? Because, okay. वो तो कोई भी लीजन हो, ट्रामा हो, डिस्क हो, ये सारी चीजें हो सकती है, इसमें लिम्स की वीकनेस होगी और सेंसरी बनेगा. But you are mentioning about the schwannoma. So why you are mentioning schwannoma? What are the things which favor schwannoma in this patient? The slow progression of the neurology and the patient signs symptoms, like it gives the radicular symptoms. So schwannoma क्यों? नहीं, ये तो ridiculous, लेकिन ये दोनों साइड पे है ना? तो क्या दोनों साइड पे schwannoma है? So both the second one in the neoplastic, I would also. अच्छा, ये schwannoma क्यों नहीं है? schwannoma क्यों नहीं है? Because schwannoma mostly it gives a hemichord like presentation unilaterally, so it is not schwannoma because it is bilateral. So अच्छा, hemichord के लिए आपने examine किया मरीज को? What should be the findings in the hemichord? In the hemichord, both there would be on one side there would be pain, and on the contralateral side there will be the temperature and the pain sensation will be lost. तो क्या आपने ये चीजें देखी इस मरीज में? No, sorry sir, I forget this. Okay, तो फिर आप क्यों कैसे कि hemichord होगा और ये नहीं है इसमें? तो आपने तो देखी नहीं है अगर. Both you asked that what are the factors which is contradicting. नहीं, आपने कहा कि schwannoma में इसलिए नहीं कि hemichord होना चाहिए, अब इसमें तो आपने पूछा नहीं. अच्छा, और क्या differential बताएं आपने? Meningioma is my second one, and it is most probably meningioma because it gives bilateral symptoms. And the other thing, the patient is female, and there is a slow progression. The natural history is more in the favor of like meningioma. 4 months. The history is of 4 months. Okay. और क्या differential बना रहे हो आप? ये तो दो चीजें आपकी हो गई. So these two are both on the top, and the third one it could be disc. Disc क्यों बता रहे हैं आप? Why it could be disc prolapse? इसकी रीजन क्या है? देखिए, मैं बताऊं, एग्जाम में जो बात आपके मुंह से निकलती है, that is value, and there should be justification for anything which you are saying there. क्योंकि आपका एग्जाम हो रहा है ना, तो आपने डिस्क की बात की, आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि डिस्क आप क्यों बता रहे हैं. So disc is also not that much unusual in the population, that the dorsal disc can occur, but mostly at the upper level. This is quite lower level, so I keep it at the bottom because the disc in the lower dorsal is a bit rare. And the second thing, like the patient has neurology, and the things which are not in the favor of the disc, because the limitation of movement was okay, and but she has neurology, like sphincters are compromised. Sphincter can compromise in the disc. The bilateral neurology can happen in the disc, and there is no tenderness, no history of trauma, and no systemic features of any malignancy and these things. And the patient age is also young, so I would like to keep my 3 top differential on the top: meningioma, then it could be schwannoma, and very rare it could be disc. Okay. Unlikely. और कितना टाइम एग्जामिनेशन में, या हम प्रोसीड करेंगे?
सर प्रोसीड करें सर, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है सर ओवरऑल। अच्छा, मुझे आप बताया करें ना, ताकि मैं उसके हिसाब से चलूं, ठीक है? बीच में जैसे अपन आपको timer लगे तो दिखा मुझे दें। मुझे रोक ले करें। Okay. अच्छा, ओके भाई, सो व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल गो फॉर इन दिस पेशेंट? In this patient, as the patient has neurology, so I would straight away go for the MRI lumbar spine. I can do CT spine, thoracolumbar spine, and I can also do X-ray epilateral oblique view, and yes. And I would also like to do neurophysiological examination, and can do the urological examination in this patient, PVRU and the bladder ultrasound, but she has obvious that would not be much helpful. So I would straight away go for the MRI lumbar spine. आपने एक्सरे की बात की, एक्सरे क्यों करना चाहते हैं? And what do you want to see on X-ray in this patient? Both in the X-ray, I would like to see for any neuroforaminal dilatation or any bone remodeling or any scalloping of the vertebrae and the vertebral end plates. Yeah, and that is an easily available test everywhere available. नहीं, वो तो अलग बात है। आप रीजन बताएं, वो तो इजीली अवेलेबिलिटी, तो दैट इज समथिंग एल्स। Yeah. आप एंड प्लेट्स क्या देखना चाहते हैं एंड प्लेट्स में? Sir, that is not much relevant in this case because my differentials is either neoplastic. So in the neoplastic, that is not much helpful. So I would straight away go for the MRI dorsolumbar spine with and without contrast. Okay, so MRI में क्या देखना चाहते हैं? In the MRI, I would like to see the cord, any cord compression, how is the CSIP signals, how is the surrounding effects. Either there is dilatation of the CSIP column or any compression of the cord, or how is the alignment and the curvature of the spine, and how are the discs, and yes, all these things. और आप सीटी स्कैन क्यों करना चाहते हैं? To see that because if the patient is having some meningioma or neurofibroma, which is extending to the neuroforamen, so that will help me in the anatomical like planning of the surgery. Okay, इसका जरा MRI दिखाओ फॉर। Okay, this is MRI of this patient. Can you read this MRI? Yes. So this is a sagittal and the axial cuts of the MRI. On the sagittal cuts, there is a diffuse dilatation of the cord at the level of the 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 9 at the D6, D7, D9 level. Probably I could not see आपने the लेवल T2. आपने लेवल कैसे मालूम किया इसमें? Sir, I counted it from the sternal angle, but more reliably I can count it from either the C2. Yeah. नहीं, तो C2 तो नहीं है इसमें ना, इसमें आपने कैसे काउंट किया डायरेक्ट 9, 10 बन रहा है? Roughly, boss, I said that it is roughly posterior to the in the dorsal spine D6. Let me count it again from the sternal angle, just posterior to the. Okay. इस पेशेंट में कोई और इन्वेस्टिगेशंस करेंगे कि ये काफी है? Sir, definitely I would go for the MRI, for the CT scan, but CT scan क्यों करना चाहते हैं इसमें? At this level, the MRI is sufficient because there is a cord lesion, central cord lesion, so which is obvious. What is your differential diagnosis now? So on the basis of this MRI, it could be ependymoma, and it could be medulloblastoma, and it could be like the same schwannoma. मेडुलोब्लास्टोमा क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया कि। और schwannoma क्यों है? Why schwannoma? Why medulloblastoma? Sorry, sir. Not medulloblastoma, astrocytoma. A tongue slip. Sorry. Tongue slip. तो astrocytoma इधर भी आपकी tongue slip हो रही है। astrocytoma क्यों है?
Sir, there is diffuse dilatation of the cord and there is a cystic and solid lesion, and the cord is diffusing uniformly, and there is obliteration of the CSIP column. So I would also like to see the T2 sagittal, the T2 sagittal cuts. नहीं that आपकी it- यहाँ आप एग्जाम में आपको हम एक ही दिखाते होते, बस ये आपके सामने है, आपने इस पर डिस्कशन करनी. Okay, so there is a solid and cystic lesion which is diffusely enlarging the canal, and the curve, there is increasing kyphotic there is increased kyphosis in the spine, but there is no erosion of the vertebral bodies, and rest of the alignment, and that is नहीं काइफोसिस क्या आपको इस काइफोटिक लग रहा है स्पाइन? there is a bit Thoracic में क्या होता है? increase in the Okay. a bit of increase in the Okay. kyphosis. तो ये पेशेंट आपके सामने है. How would you manage this patient? Sir, first I would like to complete my investigation to see for the other cuts of the MRI that to make the plan for the surgery. And then after counseling the patient, first I like to counsel the patient about the nature of the disease and what to do next. So after इस पेशेंट में ये जो Mhm. पेशेंट आपके सामने है, how would you counsel this patient? After introduction and the proper setting for the discussion for the family conference, I would explain the nature of the disease, that there is a neoplastic disease, there is a tumor, एक रसूली है उसमें या जी कार्ड के अंदर हमें लग रहा है, और अभी हम इतना वो है कि ये ट्यूमर है. अभी किस किस्म का ट्यूमर है तो ये जब हम बायोप्सी लेंगे फिर उसको भेजेंगे लेबोरेटरी में. आफ्टर दैट we can say in surety that what is the lesion, but there is high chances that your neurology will get worsened. What is the aim of the surgery? So the aim of the surgery is to establish the diagnosis and to do maximal safe resection to decrease the compression on the rest of the cord. So there are chances that your neurology will improve because of the decompression, but there is also chances that your neurology will get may further worsen. And yes, after that we can decide that either he or she may be needed chemotherapy or ये radiotherapy. बताएं, नहीं वो तो बात की बात है, ये बताएं कि what are your concerns and what are the concerns of the patients? So my concern would be that I would not take the tumor, the complete tumor. I might be able only to take the biopsy, and the concern of the patient would be that I will get complete paralyzed. And Okay, ये पेशेंट आपके वो जो है ना, पेशेंट इज विलिंग, यस डॉक्टर साहब बस सब कुछ आपके हाथ में है, आप जो करना चाहते हैं करें. So what do you do with this patient? So after completing the pre-op workup, the lab investigations and everything, I would also plan for surgery and will get the neuromonitor, and so we'll position the patient in prone position after giving antibiotics and after completing the neuromonitoring workup. And if the neuronavigation is available, I would also take the help of that and will prepare the per-op ultrasound. And if the per-op MRI is available, and all the things, all the stuff should be आप ready. जो है ना, आप वो Yeah. अल्ट्रासाउंड क्यों अरेंज करना चाहते हैं? So both after laminectomy, if I see that there is that what are the margins of what is the extension up to which extent the lesion is extended, because sometimes we feel difficulty when we reach to the dura. If there अच्छा, is no, अल्ट्रासाउंड का मैकेनिज्म क्या है, वो क्या करता है? both that is based on the we see that either it is hyperacuic, hypoacuic, the ultrasonic rays, it shows the density, that how much is like it is hyperacuic, isoacuic, or ये हाइपर इक्विक और आइसो ये क्यों बनती हैं चीजें? because of the density of the lesion. And नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये क्यों इमेज इस तरह क्यों बनता है? ओके, और क्या चीज आप कर रहे because हैं? of the reflection of the और and क्या चीज? सर हमारा टाइम कंप्लीट हो रहा है सर. okay, sir. So after wide laminectomy, one level above, one level below, I will confirm the location again, and we'll do the ओके, maximal safe resection. लोकेशन बिल्कुल सही है, आपने एग्जैक्ट जगह पे है, फिर क्या करोगे आगे?
Okay, so after midline durotomy, I will take the H's and will widely open the dura and will take the and under neuronavigation, I would ask. उसमें न्यूरो नेविगेशन आपने जब खोल लिया तो वहां पे न्यूरो नेविगेशन कैसे हेल्प करेगी? So actually we take the first the baseline reading for the MAP and for the SSAP. ओके, and for कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी इसमें? क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? further worsening of the neurology and yes, C-SIF leak could be there, and because of the cord edema, the patient will get further neurology damage. Even hematoma can form later on, and all these are the complications. The sphincters will further compromise, and नहीं, तो स्फिंक्टर्स फर्दर कैसे कंप्रोमाइज होंगे? वो तो ऑलरेडी रिटेंशन में है ना पेशेंट। ओके, टाइम Sorry, खत्म हो गया फॉर। जी सर, अगर आप सर कंप्लीट करना चाहते हैं तो 1-2 मिनट हम ले सकते हैं। ठीक है, बस बाकी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन अभी कर ले, क्या करें? सर वो दोनों केसेस के बाद एक साथ कर लेते हैं मेरे ख्याल में सर, ठीक है, ताकि हम अपने सही। टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे सर। मेरे ख्याल में अगर इस पे अभी कर ले तो ताकि चीजें क्लियर हो जाए, फिर चलिए बाद सही में सर, मिक्स अप हो जाएंगे। यस सर, वी कैन टेक 5 मिनट्स। ओके, बस सर हम 5 मिनट करेंगे। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि व्हाट हम्म। डू यू थिंक, आपका ये केस कैसा रहा? सर अच्छा तो नहीं था ज्यादा। यानी आप खुद को पास करेंगे या फेल करेंगे? यानी अपना फेवर नहीं करें, जनरल अगर आप एग्जामिनर हैं तो क्या करेंगे आप इस बंदे के साथ? Sir, I cannot comment on this, but actually the patient was not in front of me, so I was not able to नहीं, take the We know the target. लिमिटेशन front- मालूम है, हमें लिमिटेशन ना सर। पेशेंट नहीं, पेशेंट आपकी फ्रंट में क्यों था? आपको भाई फरूख आपको ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अगर आप चीजें पूछते ना, पेशेंट इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जितना आपको दे रहा था। लेकिन इसमें आपका ओवरऑल क्या इंप्रेशन है? व्हाट शुड बी डन विद सच टाइप ऑफ कैंडिडेट इन एग्जाम? I could not say anything, sir. ओके, This अच्छा is my मैंने जो first चीजें time, नोट की, so I am trying to improve the things and I am नहीं learning. वो तो अलग चीज है ना। इसमें इसमें हम तो फैक्ट्स बता रहे हैं ना कि इसमें क्या होता है। ये एग्जाम में पता है, बाद में लोग कहते हैं कि भाई मुझे फेल किया, मुझे पास नहीं हुआ, ये उसमें काफी सारी चीजें होती है ना। इसमें एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके मुंह से जो लफ्ज निकलता है दैट हैज वैल्यू। वो वापस लफ्ज वापस नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एग्जाम हो रहा है। आप 1 घंटे के बाद आप कंसल्टेंट बनेंगे, तो वहां पे आपने गलत बोला बस वो भी नोट हो गए, और आपने सही बोला वो भी नोट हो गया, ठीक है। और दोनों के नंबर काटते हैं या बढ़ जाते हैं उसके हिसाब से। इसमें जो रेड फ्लैग्स है ना, आपने उसको कोई खास लिफ्ट नहीं कराया। सच पेशेंट जिसको पेन है, उसको वीकनेस हो रही है, तो रेड फ्लैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, 7-8 चीजें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आइदर दिस पेन इज प्रेजेंट ऑल द टाइम, सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, हर वक्त पेन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पेशेंट को पहले कोई रेडिएशन तो नहीं मिली है, ये पेशेंट स्टीराइड तो नहीं ले रहा, और बाकी जो स्फिंक्टर्स वगैरह और फ्यूर तो अलग चीज है ना। तो रेड फ्लैग्स को काफी ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। व्हेन वी आर मेंशनिंग अबाउट द रेड फ्लैग्स, तो आपको बताने चाहिए, ठीक है। फिर आपने यानी हिस्ट्री तो अपनी ठीक है उसकी तरह, लेकिन आपने हिस्ट्री में पूछना है कि भाई ये चीज़ है या नहीं है। तो इस तरह आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, तो हिस्ट्री कंपेरेटिवली बेहतर थी बाकी चीज़ों के मुकाबले। एग्जामिनेशन आपका सही नहीं था, आपने सिर्फ लिम्स एग्जामिन किया, स्पाइन एग्जामिन किया, बाकी आपने अपर लिम्ब एग्जामिन नहीं की, आपने क्रेनियल नर्व्स एग्जामिन नहीं किया, आपने बाकी ब्रेन को कोई खास लिफ्ट नहीं कराया, आपने सिस्टम एग्जामिनेशन नहीं की। बिकॉज इट्स लॉन्ग केस में सारी चीज़ें होती हैं। आपको हर आप तो बला की चीज़ें पूछ रहे कि भाई वो कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, कोई रेडिएशन तो नहीं मिल रही है, उसको कोई किडनी डिजीज तो नहीं है, लेकिन आपने एग्जामिन नहीं किया चीजें। आपने हिस्ट्री में पूछी, आपने एग्जामिन भी करने चाहिए। एंड दिस इज योर लॉन्ग केस, नॉट शॉर्ट केस। सो आपका एग्जामिनेशन जो है ना, बिल्कुल दैट शुड बी इन डिटेल, और आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो कि आपने नहीं की। फिर इस पेशेंट का जो है ना 3/5 पावर है, और आप बार बार SLR की बात कर रहे हैं, हालांकि फारूक आपको मना भी कर रहे हैं, फिर भी आप SLR की बात कर रहे हैं, तो वाई यू आर गोइंग फॉर SLR? फिर लेवल जो है ना ठीक है, फिर पेशेंट को आप वॉक करा रहे हो, 3/5 में कैसे वॉक कराएंगे मरीज को? ठीक है, फिर अच्छा और चीज जो है ना, आपका एग्जामिनेशन तो कंप्लीट नहीं था। अच्छा दूसरी बात, जब आप बात करते हैं एग्जामिनर को, कभी बॉस बॉस नहीं कहना, या सर कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये बॉस का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल नहीं करें। ये एग्जामिनर जो है ना, इसको ये चीज वहां पे एग्जाम का लहजा नहीं है ये कि आप उसमें बॉस बॉस करें, ठीक है। ये चीज जरा नोट कर लें। आपने जो डिफरेंशियल बनाई, तो आपने किसी भी डिफरेंशियल को जस्टिफाई नहीं किया।
ना आपने डिजेनरेटिव को किया जस्टिफाई, ना आपने स्टेनोसिस और उसको भी नहीं किया, फिर आपने बार बार कह रहा है कि भाई शॉनोमा है, और आपने स्पाइनल ट्यूमर की तरफ कोई सोचा भी नहीं कि भाई इंट्रामेडुलरी ट्यूमर भी हो सकते हैं। बायलेटरल है वीकनेस इस पेशेंट को, दोनों तरफ अब सेंसरी लेवल बन रहा है, फिर आपने सिर्फ पेन प्रिक देखा और आपने डॉर्सल जो बाकी सेंसेशन है जिसमें पोजीशन वगैरह है आपने देखे नहीं, आपने वाइब्रेशन का पूछा तक नहीं है और न देखा आपने। तो ये चीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि आपने देखना है कि ये लीजन कहाँ पे है, राइट लेफ्ट पे है या इंटीरियर पोस्टीरियर है, कहाँ पे है, आपने उसको नहीं करा है। आपने वास्कुलर बता दिया और फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते थे, हालांकि हिस्ट्री में आपने वास्कुलर की रिलेटेड कोई चीज नहीं पूछी थी। तो जो डिफरेंशियल आप बताएंगे, दैट डिफरेंशियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट इंफॉर्मेशन। आप अपनी तरफ से इधर उधर बातें ना करें, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की उस बेस पे देखें कि ये डिफरेंशियल बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बनता फिर बता दिया भाई ये नहीं बनता। दूसरा, फिर आपने जब मैनेजमेंट तरफ हम गए, अच्छा इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे आपने सारे मेंशन किए लेकिन एक्सरे आप सही जस्टिफाई नहीं कर पाए। सीटी स्कैन में, इसमें अगर आप मेनिंजोमा या डिस्क सस्पेक्ट कर रहे हैं तो व्हाई नॉट वी शुड लुक फॉर कैल्सिफिकेशन, या कैनाल के अंदर कोई इस तरह चीज तो नहीं है, या मेनिंजोमा में कैल्सिफाइड हो सकता है, या डिस्क थोरेसिक वाले अक्सर कैल्सिफाइड हार्ड डिस्क होते हैं, तो वी शुड मेंशन अबाउट दोस थिंग्स। आप सीटी स्कैन करा रहे हैं लेकिन जो एग्जैक्ट चीज है वो नहीं बता रहे उसमें। फिर जो है ना, जब बात आती मैनेजमेंट की, तो आपकी काउंसलिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। यानी आपकी कंसर्न ये है कि भाई पेशेंट 3/5 पावर है, मजीद में खराब ना करो। मरीज तो ये चाहते हैं कि भाई मेरा ये स्फंक्टर ठीक हो जाए और मेरी लिम्स वापस आ जाए, वो उसके कंसर्न वही है, उसको कोई बाकी फिक्र नहीं कि भाई आप कैसे ऑपरेट करेंगे, ड्यूरा कैसे खोलेंगे, उसके साथ कोई गरज उसका नहीं। उसके बस बेचारी कह रही है कि भाई मेरे लिम्स मैं कब चल पाऊंगी और मेरा ये जो यूरिनरी प्रॉब्लम कब ठीक हो जाएगा। और आपका कंसर्न ये है कि यार मैं तो ऑपरेट कर रहा हूँ, इंटरमेडियरी लीजन है, पता नहीं क्या बनेगा। अच्छा, फिर इंटरमेडियरी लीजन है और कभी आप शॉनोमा बता रहे हैं, कभी आपने और चीज बता दी क्या, कोई और मेडुलोब्लास्टोमा नहीं, मेडुलोब्लास्टोमा पता है कि कोई और चीज बताई आपने। तो इस तरह चीजें उठ पटांग वाली चीजें नहीं बतानी वहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें नोट हो रही हैं और उसकी मार्किंग होती है और आपके पास ये आधा घंटा टाइम होता है, इसमें आपकी मुस्तकबिल का फैसला किया जाता है। फिर आपने इस पेशेंट में माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं किया, आपने ड्यूरा खोला और आपने अल्ट्रासाउंड भी लाया, लेकिन माइक्रोस्कोप आप नहीं लाया, हालांकि इसमें माइक्रोस्कोप का ज्यादा अच्छा रोल है। तो दीज वर द थिंग्स, बाकी आपने वो सही बताए जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग जरा इस पे, अभी भी 1 महीना है, महीने ज्यादा टाइम है आप लोगों के पास। तो स्पाइन में इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई आपने स्पाइन देखना है, लिम्स देखें, स्ट्रक्चर्स देखें, देन गो फॉर द सिस्टम एग्जामिनेशन। और ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, आपने बिल्कुल उस पर कंसंट्रेट, सबसे आसान केस स्पाइन का होता है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा डिटेल नहीं होती। लेकिन whenever we are in the long case, we should go for the system examination, we should do the cranials, we should do the cerebellar examination, आपको सब करनी है। ठीक है, सो इस तरह केस में बंदा पास नहीं हो सकता, सॉरी टू से, लेकिन फिर कहते हैं कि यार मुझे फेल कर दिया, हालांकि कोई एग्जामिनर किसी को फेल नहीं करता जब तक आप खुद अपने आप को फेल नहीं करेंगे। सो दिस वाज अबाउट माय इंप्रेशन। बाकी फारूक बता देंगे आपको कि क्या जी उसने सर। अच्छा किया, क्या बुरा किया। नहीं सर, मेरा कहना बनता नहीं है, आपने बता दिया सब कुछ। एंड आई गेस सर हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, तो हम ठीक सर है नेक्स्ट केस की फारूक, तरफ चलते हैं सर। ठीक है। अच्छा, सर उस आधे नेक्स्ट उसके लिए आधा घंटा कितना टाइम है उसकी लॉन्ग सर केस के हमारे लिए? पास 35 मिनट्स है इन टोटल, ठीक है, तो जैसे भी आप कहेंगे सर वैसे कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, बंदा कौन है जो कर रहा है, मैं ताकि सर उससे मैं डॉक्टर बात करूं। कमल इज विद अस। डॉक्टर कमल, काइंडली टर्न ऑन योर माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें आपने ऐसा करना, जिस तरह यही लॉन्ग केस जिस तरह हमने डिस्कस किया, इसमें आपने टू द पॉइंट हिस्ट्री पूछनी है फरुख से, और वो चीजें जो है या नहीं दोनों नोट करने हैं, उस पर डिस्कशन होगी। फिर आपने टू द पॉइंट एग्जामिनेशन करनी है, जो फाइंडिंग्स है या नहीं है वो आपने नोट करनी है, देन वी कैन गो अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो 5 मिनट ठीक है सर। हिस्ट्री, 5 मिनट एग्जामिनेशन, और फिर बाकी 10-15 मिनट हम बाकी डिस्कशन पे गुजारेंगे। ठीक सर है, तो फिर जो हिस्ट्री के बाकी कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सपेंड नहीं करूँ, पास हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको उसको स्किप छोड़ कर दें, दूँ? उसको छोड़ उसको दें, छोड़ उसको दूँ छोड़ दें। और एग्जामिनेशन भी बिल्कुल ब्रीफ रखूँ जैसे हम शॉर्ट केसेस में रखते हैं उसी तरह? इसमें जो रेलेवेंट रेलेवेंट एग्जामिनेशन, रेलेवेंट एग्जामिनेशन क्या रेलेवेंट चीज बनती एग्जामिनेशन के। है। ठीक 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 है सर, जी। ओके अंडरस्टूड। सो दिस इज योर केस। ये एक पेशेंट है, उसको पढ़े आप। Okay, so this is a 52 years old female patient presented with headache for last 1.5 years and decreased vision for last 4 months. ओके, फर्दर हिस्ट्री ले लें और जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो पूछ लें। ठीक है। डॉक्टर फारूक को पेशेंट कंसिडर करके हिस्ट्री ले लूँ सर? यस, कुछ ठीक है, ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम
मेरा नाम डॉक्टर कमल है। आपसे आपके बीमारी के मुतालिक मुझे कुछ सवाल करने हैं। जी जी जैसे कि आपने बताया कि आपको 1.5 साल से सर के दर्द का मसला है, 4 महीने से आपकी नज़र का मसला है, इसी तरह है? जी। ठीक है। प्लीज़ मुझे ये बताइए कि आपका सर का दर्द शुरू कब से हुआ? किस तरह से शुरू हुआ? सॉरी, अचानक शुरू हुआ या आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हुआ? आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। ठीक है, कितनी शिद्दत का दर्द है? दरमियाना होता है, बस ये कि हर वक्त रहता है तो तंग करता है। और किस जगह पे होता है? कोई खास जगह नहीं, पूरे सर में ऐसा लगता है कि किसी किसी वक्त ज्यादा भी हो जाता है, बट नॉर्मली वो हल्का रहता है लेकिन मुसलसल रहता है। ठीक है, सर का दर्द एक ही जगह पे रहता है या कहीं और नीचे की तरफ या पीछे की तरफ किसी तरफ जाता भी है? मैंने आपकी बात नहीं समझा। सर का दर्द आपका एक ही जगह पे हाँ, रहता है या जगह बदलता है या किसी और जगह तक भी नहीं, बस जाता है पूरी इतना सर नहीं शिद्दत? रहता बस। ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर क्या करते हैं आप? बस कभी पैनाडोल ले लेते हैं, और बस कभी एक दो बार डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बस यही दर्द की दवाई लिखी है। ठीक है। किस तरह का दर्द होता है? चुभने वाला या भारी या किस किस तरह का दर्द महसूस होता है? भारीपन होता है थोड़ा सा, कभी कभी आंखों में भी लगता है कि ऐसा दर्द हो रहा है ज्यादा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि सर का दर्द सुबह में ज़्यादा होता हो या रात में ज़्यादा होता हो? इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, वो होता है बस सर। कभी कभी लगता है कि शायद सर में होगा सुबह के टाइम पे ज्यादा, लेकिन ऐसे ज्यादा नहीं हो पाता पहचान। ठीक है। सर के दर्द के साथ उल्टी या बेहोशी या मिर्गी के झटके इस तरह का कोई और मसला तो नहीं है? ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि नज़र का मसला आपने कहा कि 4 महीने से है आपको, तो जी। ये दोनों आँखों में एक साथ शुरू हुआ या पहले किसी एक आँख में शुरू हुआ? तो पहले से मुझे लगता है कि जो है वो सीधी आंख से पहले शुरू हुआ, हुँ, हुँ। लेकिन फिर बहुत जल्दी जो है वो दूसरी आंख में मसला आना शुरू हो गया था। ठीक है। किस तरह का मसला शुरू हुआ? किस तरह महसूस होता था आपको? कम देख रहा था और हुँ, चलने हुँ। में बड़ी मुश्किल होती थी। धुंधला नज़र आता था या रंग चले गए थे या एक तरफ से आपको कम नज़र आ रहा था? किस तरह से? शायद एक तरफ से, मैं बता रहा हूँ कि सीधी आंख से पहले हुआ, और हुँ, तो हुँ। एक तरफ से लग रहा था मुझे, हुँ, फिर हुँ। जो है वो दूसरी आंख में भी ऐसे ही हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी दर्द तो नहीं है आपको? कहाँ पर? सर में दर्द है? नहीं, आँखों में? जी नहीं, आंखों में दर्द नहीं। ठीक है। अच्छा, इस तरह महसूस तो नहीं होता कि आँखों का जो बाहर वाला जो नज़र का हमारा हिस्सा होता है, आधा हिस्सा आपको स्याह नज़र आता हो या बिल्कुल नज़र ना आता हो, दरमियान में बिल्कुल सही नज़र नहीं, आता हो? कम कम नजर आता है थोड़ा साइडों से। साइडों से थोड़ा-सा कम नज़र आता है। ठीक है। जी। अच्छा, इसके अलावा कोई भी आपको मसला रहा हो? आप किस किस्म का पूछ लें मुझसे, और कुछ चीज। ठीक है। आँख से पानी वग़ैरह तो नहीं आता? जी नहीं। ठीक है। 2-2 नज़र तो नहीं आता आपको? एक ही चीज़ आपको 2-2 नज़र आती हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। चेहरे पे सुन्न-पना वग़ैरह कुछ भी ऐसा मसला हुआ हो आपको? नहीं। शादीशुदा हैं आप? जी। बच्चे हैं आपके? जी। ठीक है। अभी आपको महीना आता है या बंद हो गया है? नहीं, अब तो बंद हो गया। ठीक है, उसको कितना अरसा हुआ है तकरीबन? 5-6 years में। ठीक है। अच्छा, छाती वगैरह से पानी तो नहीं आता या दूध तो नहीं आता? जी नहीं। ठीक है। वज़न आपका बढ़ा हो अभी पिछले कुछ अरसे में 1 डेढ़ साल से बहुत ज़्यादा या कम हुआ हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सर्दी या गर्मी ज़्यादा महसूस होती हो आपको? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं है। ठीक है। मिर्गी के झटके वगैरह आपने मुझे कहा है, इस तरह का कोई भी मसला नहीं है आपको? नहीं, आपने पूछा नहीं मुझसे। मैंने शुरू में आपसे सर के दर्द के बाद पूछा था कि आपको चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं अभी पूछ लेती हूँ। आपको कभी मिर्गी का झटका तो नहीं पड़ा है? जी नहीं। ठीक है। आई थिंक आई एम डन विद माय टू द पॉइंट हिस्ट्री सर। Okay, so what do you think? Where is the pathology? जनरलाइज्ड हेडेक विजन। Okay, so this is generalized headache which is mild, persistent, not associated with vomiting, and vision is decreased. कहाँ पे प्रॉब्लम किधर है? The problem is uh, most likely anterior skull base. Anterior skull base. तो anterior skull base में can you tell me about the boundaries of anterior skull base? Yes, sir, I can. But Mhm. can you just give me a minute, please?
मिनट तो भाई टाइम किधर है मिनट आपको? Sir, a second, just give me a second. Hmm. I would keep skull base. I would not restrict it to anterior or middle right now. I would only keep it skull base. स्कल बेस कहाँ से कहाँ तक होता है? सर skull base तो फिर anterior, middle, posterior दोनों तीनों आ जाएंगे. हाँ तो बहुत बड़ी दुनिया है. आप स्कल Sir, व्हाट डू यू मीन बाय जी? anterior और middle skull base. इंटीरियर और मिडल स्कल बेस. Yes, sir. So why you want to keep both the interior and middle skull base in this patient? Sir, because there's a generalized headache, lateralizing sign मुझे कोई नहीं मिल रही, vision bilateral decreased है. So, लेकिन ये है कि could be mostly sellar region, लेकिन फिर थोड़ा anterior भी हो सकती है कोई pathology midline. इंटीरियर में कहाँ पे हो सकती है? सर midline meningiomas जो भी हैं, क्योंकि it's a female patient. कहाँ पे इंटीरियर कहाँ पे? आप लोकेशन मुझे बताइए किधर हो सकती है? सर planum sphenoidal tuberculum sella. ट्यूबरकुलम सेला प्लेनस स्फेनाइडल. ओके, तो प्लेनस स्फेनाइडल में अगर है तो उसमें क्या व्हाई यू वांट टू से यू आर सेइंग प्लेनस स्फेनाइडल? किस बेस पे आप कह रही हैं? No sir, I am not specifically saying it. मैं उसको सिर्फ अपने differentials में नो, रख तो वही रही हूँ. डिफरेंशियल हम पूछ रहे हैं ना. आपने प्लेनस स्फेनाइडल क्यों बताया? सर क्योंकि पेशेंट को हेडेक है और विजन इज डिक्रीज, लेकिन प्रोग्रेसिवली डिक्रीज. तो अगर उसकी पोस्टीरियर ग्रोथ हो तो उसकी वजह से विजन अफेक्ट हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इट इज आइदर सेलर या फिर ट्यूबरकुलम सेला टाइप कुछ लेजन. वो ये आपके ख्याल में सेलर लग रहा है या ट्यूबरकुलम सेलर लग रहा है? सर आई वुड नीड एग्जामिनेशन फॉर दैट. नहीं, हिस्ट्री की बेसिस पे. हिस्ट्री के बेसिस पे सर मोस्ट लाइकली सेलर लग रहा है मुझे. अच्छा, सेलर में क्या डिफरेंशियल बना रही हैं आप? पिट्यूटरी सर. एक तो पिट्यूटरी होगा, और क्या चीज हो सकती है? सेलर रीजन पे जो बाकी लीजन्स हैं सर, उनकी प्रेजेंटेशन मैच नहीं करेगी इसके साथ, हिस्ट्री के मसलन साथ. मसलन क्रेनियोफेरेंजियोमा हो गया सर. क्रेनियोफेरेंजियोमा क्यों मैच नहीं कर रही इसमें? आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर सर, क्योंकि फीमेल अच्छा, you're पेशेंट not है sure. तो पिट्यूटरी एडिनोमा और नहीं मेनिंजियोमास तो वी विल कीप इट फर्स्ट. वो तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे कि बाकी चीजें मैच नहीं कर रही, तो क्रेनियोफेरेंजियोमा क्यों मैच नहीं कर रही इस पेशेंट में? ओके, और कुछ चीज हो सकती है इसके अलावा? आप इस पेशेंट से पूछ रही थी कि भाई आपकी आंखों से पानी तो नहीं आ रहा, आप क्यों पूछ रही थी? सर इन्फेक्टिव पैथोलॉजी और बाज़ औक़ात ये है कि इफ पेशेंट हैज़ डिक्रीज्ड कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस या कॉर्नियल सेंसेशंस, तो पेशेंट को एसोसिएटेड फिर वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है. वो क्यों होगी इस पेशेंट में, क्यों होगी? अच्छा, सर आई फिर एम आप पूछ रही थी कि भाई आपको दो दो तो नजर नहीं आ रहे थे, तो आप क्यों जी पूछ सर. रही थी? सर मैं ये रूल आउट करना चाह रही थी कि इफ इट इज सेलर लेजन अज्यूमिंग, तो उसकी कोई एक्सटेंशन तो नहीं है. अच्छा, ओके. ओके, इस पेशेंट को फर्क अब एग्जामिनेशन तरफ जाए हम. जी सर. अच्छा, इसको एग्जामिन कर लिया और रिलेवेंट एग्जामिनेशन करें. ठीक. So sir, I will skip the or I will just briefly do the general physical examination and mini mental examination very briefly, and then I will move on to cranial nerve examination. I'll start with cranial nerve 1. I'll check the nasal patency, any visible deviation, etc. I'll check for आप उससे पूछो, फारूक से पूछो कि चीज है कि नहीं है. वो कर रही है ना, लेकिन आप चीजें पे नोट करते जाए कि उसमें है कि नहीं है, और जल्दी ठीक है जल्दी करके बस इस वाले एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग है कि नहीं है. ठीक है. नहीं है वो आपको भी नोट करें, जो है वो भी नोट करें. ठीक है. ठीक है सर. आपको खुशबू बदबू में पता चलता है? जी. बिल्कुल सही से. जी. ठीक है. अच्छा सर, आई वुड ऑन एग्जामिनेशन आई वुड लाइक टू चेक प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस. आप उससे करें ना कि ये है कि नहीं, वो बता देगा आपको ना. प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस कैसे हैं? है, नॉर्मल है. प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस नॉर्मल हैं. ठीक है. विजुअल फील्ड्स, कन्फ्रंटेशनल विजुअल फील्ड्स हाँ, वो डिफेक्टिव है. कहाँ पर डिफेक्टिव हैं? बाय टेम्पोरल. ओके. आप मुझे बता सकते हैं कि फंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स क्या हैं?
नहीं, आप पूछिए ना क्या है, आप पूछिए कि ये चीज है कि नहीं है। जी, फंडोस्कोप पे पेशेंट को फंडस नॉर्मल है या कोई और फाइंडिंग है, एट्रोफी है, माइल्ड पेप्लोडीमा है इनको बायोलॉजी। पेपिल एडिमा है बायलेटरली। जी, ओके, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स कैसी हैं? वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है, ठीक है। कॉर्नल रिफ्लेक्स वो नॉर्मल है। वो भी नॉर्मल है। उसके अलावा जो ट्राइजेमिनल का मोटर कंपोनेंट है, टेम्पोरलिस मैजिटर, बाकी चीज़ें जॉर्जिया एक्सेट्रा सब नॉर्मल है, जी, ठीक है। सर लोअर क्रेनियल भी इसी तरह करूँ एक एक करके? बिल्कुल, आप पूछिए उनसे जो आपके काम की जो चीजें, वो आपको पूछिए लग रहा उनसे। है वरना मैं कुछ चीजें आपको मिल गई है ना उसके बारे में। इंपॉर्टेंट चीजें पूछनी उनसे ना, हर चीज नहीं पूछना कि ये जो आपको लग रहे हैं रिलेवेंट चीजें पूछिए। ठीक है। आपको सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, किसी एक कान से कम सुनाई तो नहीं देता? नहीं। ठीक है। निगलने वगैरह में कुछ और मसला, सांस लेने नहीं, में कोई तकलीफ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोनेटो ड्रिफ्ट पेशेंट का कैसा है? वो नॉर्मल है। ओके, नेगेटिव है। और नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हैंड ग्रिप भी बायलेटरली नॉर्मल होगी मोस्ट लाइकली। हैंड ग्रिप कैसी है? नॉर्मल, नॉर्मल है। ठीक है। और प्लांटर्स? वो अब 2 नंबर है, जैसे नॉर्मल है वो। नॉर्मल है, रिफ्लेक्सिव। प्लांटर्स नॉर्मल है, जी, ठीक है। और बाकी रिफ्लेक्सेस अपर लिम्स लोअर लिम्स में? ठीक, वो नॉर्मल है। फंडोस्कोप की फाइंडिंग आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं दोबारा, बायलेटरल पेपिल है? माइल्ड से ऐसा लग रहा है, मतलब नॉट श्योर, बट ऐसा लिमिटेड एग्जामिनेशन था उनका, उनकी ज़्यादा डायलिटेशन नहीं थी आईज। जी, ठीक है। आई थिंक सर टू द पॉइंट एग्जामिनेशन तो यही लग रहा है मुझे, बाकी तो सारा फिर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन हो जाएगा। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज द पैथोलॉजी? क्वेश्चन वही है, व्हाट, व्हेन, हाउ। तो पहले सर, आपने वेयर इज द लीजन, व्हाट इज द लीजन, ओके एंड सर, व्हाट यू विल डू विद दिस पेशेंट, ठीक है? तो वेयर इज द लीजन? बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया है सर, एंड देयर इज विजुअल एक्यूटी डिक्रीज्ड नहीं, बायलेटरली। मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने क्या वेयर इज द लीजन, मेरा क्वेश्चन ये है। सर मोस्ट लाइकली सेलर लेजन है। सेलर लीजन है, एंड व्हाई यू से इट इज सेलर लीजन? क्योंकि सर जो बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया है दैट इज वेरी नहीं, तो ये बताए कि सेलर लीजन बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया कैसे करेगा? ओके सर, जो भी सेलर लेजन होता है, इंट्रा सेलर लेजन, फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ अ पिट्यूटरी एडेनोमा, उसकी अपवर्ड ग्रोथ अगर होती है तो उसके बिल्कुल ऊपर जब ऑप्टिक उसकी कियाज, अपवर्ड ग्रोथ हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? सर सुप्रा सेलर एक्सटेंशन सुपर कहेंगे सेलर उसको। बताए ना, यानी जी सर, आई एम जब आप सॉरी। सेलर की बात कर रहे हैं तो सेलर नहीं कर सकता। जी जी ये सर, कहे कि सेलर सुपर सेलर हो सकता है ना, तो देन जी यू कैन सर, जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। जी, यस सर, सुप्रा सेलर एक्सटेंशन होगी, उसके बिल्कुल सुपीरियरली ऑप्टिक कियाजम पड़ा हुआ है, इट विल गेट कंप्रेस्ड, इट विल कॉज बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया इन द पेशेंट। ओके, एंड व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? Sir, my differentials will I'll still keep the tuberculum cella meningioma as the second differential, and I will keep craniopharyngioma as the third differential. ओके, और टॉपिक क्या रखा आपने? Top पे sir pituitary adenoma. ओके, आपने ट्यूबरकुलम सेला सेकंड पे रखा, क्यों? व्हाट आर द फाइंडिंग्स व्हिच आर फेवरिंग ट्यूबरकुलम सेला मेनिंजियोमा? तो tuberculum cella meningioma क्योंकि थोड़ा सा एंटीरियर होता है chiasm से, वो chiasm को posteriorly पुश करता है, तो उसमें हमें क्लासिक बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया it's not as common. तो फिर आप क्यों शामिल कर रही हैं उसको? सर डिफरेंशियल्स में रख रही हूँ, क्लोज डिफरेंशियल्स में। नहीं, डिफरेंशियल में जो आप चीज आपने रखनी है तो आपने इस पेशेंट की जो फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से रख लेना, एंड डिफरेंशियल मींस दैट यू शुड हैव सम पॉइंट्स इन फेवर ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। यस सर। तो इसके फेवर में क्या चीज आपके पास है कि भाई आप कह रहे यस मे बी कि ये पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजियोमा हो, क्योंकि मेरे पास ये फाइंडिंग्स हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ। जी, तो प्रेजेंटेशन उसकी भी मोर और लेस सिमिलर होगी, विजन इसी तरह से डिक्रीज होगा बायलेटरल, ठीक है। लेकिन उसमें कायाजम की पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसमें ऑप्टिक नर्व्स की कंप्रेशन पहले हो सकती है। और ये ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजियोमा क्यों नहीं है? देन अगेन सर
Bitemporal hemianopia, I think it is a significant examination finding. अच्छा, थर्ड आपने क्रेनिफेरेंजियोमा शामिल किया ना उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में. Yes, So sir. why you are including क्रेनिफेरेंजियोमा in this patient? सर बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रेनियो की, तो सेकंड पीक इज कॉमन इन 50s. देन अगेन हमारे पास कोई लेटरलाइजिंग साइन नहीं है मिडलाइन लेजन्स में इन दिस रीजन. इट कैन बी अ डिफरेंशियल. नहीं, why it is not क्रेनिफेरेंजियोमा? क्रेनिफेरेंजियोमा के पेशेंट की क्या प्रेजेंटेशन होती कॉमन? ये विजन विजन तो सबकी हो सकती है ना, ये तो any lesion lying there can compress the optic nerve, and optic Yes, sir. chiasm, there might be those things. Yes, लेकिन sir. क्रेनिफेरेंजियोमा की प्रेजेंटेशन should be somewhat different from other pituitary. तो क्या चीज है जो कि बाकी से डिफरेंट होता है? सर इस एज ग्रुप में तो आई थिंक इट वुड बी मोर और लेस सिमिलर. बच्चों में उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है. कैसे? सर दैट्स अ टिपिकल प्रेजेंटेशन के a child that has slowed mentation, increased appetite, and decreased IQ. फैटी बच्चा होगा, ओबीस होगा, मेंटेशन डिक्रीज्ड होगी, और भूख ज़्यादा लगती होगी, हाइपरफेजिया होगा उसको, और विजन उसकी अफेक्टेड होगी. Okay. लेकिन एडल्ट्स में क्या होगा? एडल्ट सर इसी तरह प्रेजेंट करते हैं, हेडेक और विजुअल कॉम्प्रोमाइज के Okay. साथ. पिट्यूटरी Okay. कंप्रेशन हो सकती है उसमें. Okay. इन इस पेशेंट में आप फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे आप? सर इस पेशेंट में आई विल अच्छा, एक और स्टार्ट. क्वेश्चन, उससे पहले एक और क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ. जी सर. इस पेशेंट में अगर ऑप्टिक एट्रोफी बन रही है ना, हम्म. सपोज, सो दैट विल बी प्राइमरी और सेकेंडरी? इस पेशेंट में अगर ऑप्टिक एट्रोफी बन रही है तो सर इट विल बी प्राइमरी. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी? सर प्राइमरी जब हम ऑप्टिक फंडास्कोपी करते हैं उसमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा? सर प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी में हमें बिल्कुल चॉकी वाइट डिस्क मिलती है. सेकेंडरी में हमें थोड़ी सी ग्रेइश मिलती है, मार्जिन्स ब्लड मिल सकते हैं हमें, क्योंकि वो लॉन्ग स्टैंडिंग पेपिलोडेमा के बाद होती है. ओके. ओके, तो क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे इसमें? इन्वेस्टिगेशंस में सर वी विल स्टार्ट विद MRI ब्रेन प्लेन विद कॉन्ट्रास्ट. दैट विल बी माय फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन. रेस्ट अच्छा, ऑफ माय एमआरआई वाले इन्वेस्टिगेशन. को आप जब एमआरआई लिखती हैं तो व्हाट इंस्ट्रक्शन यू विल गो टू द एमआर टेक्नीशियन? आपको कौन सा एमआरआई चाहिए? सर आइडियली इस पेशेंट में आई वुड लाइक MRI ब्रेन प्लेन विद पिट्यूटरी प्रोटोकॉल. ठीक है. उधर से जवाब आता है कि भाई हमारे पास फिल्म में नहीं है, कोई एक फिल्म हम दे सकते हैं आपको, तो विच फिल्म वुड यू लाइक टू हैव? Sir, in this patient, हम्म. I In would this like patient, to see the coronal section, sir. okay, coronal. So why coronal is so important for you? Sir, assuming that this हम्म. is सेलर एंड सुप्रासेलर लेजन, कॉर्नल में हमें उसकी जो पैरासेलर एक्सटेंट है वो पता चल जाएगी. कैवर्नस साइनस और ICA की इन्वॉल्वमेंट है अगर वो, तो वो हमें पता चल जाएगी. ठीक है. दूसरा कायाज्म की पोजीशन बता देगा वो हमें. ठीक है. और क्या बता देगा? सर उसकी स्पोनाइट साइनस में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है वो ठीक है. बताएगा. गुड. गुड. Okay. So when there is extension to the cavernous sinus, do you know about any classification there? यस सर. क्या नाम है उसका? और नॉस्प है सर, नॉस्प क्लासिफिकेशन. उसमें क्या होता है? सर नॉस्प क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि ICA की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, और अगर ICA इन्वॉल्व है कम्प्लीटली तो दैट मीन्स के कैवर्नस तक जा रही है इन्वॉल्वमेंट. इट हैज़ 4 ग्रेड्स. तो ग्रेड 3 में क्या होता है? सर ग्रेड 3 में कैवर्नस की इन्वॉल्वमेंट होती है. 3A एंड 3B. 3A इज द सुपीरियर सेक्शन ऑफ कैवर्नस विच इज इन्वॉल्व्ड, एंड 3B इज द inferior portion of the cavernous sinus that is involved. Okay. Or what other investigations would you go for? Sir, assuming that this is a pituitary. नहीं, assuming क्या मतलब? सही सही बातें करो. Assuming that. सर मेरे पास इमेजिंग नहीं है, लेकिन नहीं, उससे पहले क्वेश्चन आपसे. हाँ, अब ये सारी डिस्कशन हो गई ना, पिट्यूटरी है, सेलर सुप्रासेलर है, तो आप क्या और क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे? सर आई विल गेट अच्छा, अ जरा कंप्लीट. ये जरा एमआरआई दिखाओ फॉर. जैसे ये एमआरआई है, और कैन यू रीड इट? यस सर आई कोई एक कैन. रीड करिए, ये सजाइटल वाला रीड करें.
ठीक है इसको सर। जरा फारूक, इसको जरा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं सजेटल। Sir, I try to. Yes. इसको रीड करें सजेटल को। Yes sir, just give me a second. Okay, so this is MRI brain plane with contrast sagittal sections of this corresponding patient, showing a lesion in the cellar region which is extending upwards in the suprasellar region as well, and it is showing contrast enhancement, and there is no significant posterior extension. Anterior extension भी इतनी significant नहीं है, सिर्फ superior है, suprasellar extend कर रहा है tumor. Okay, so what is your diagnosis now? So this is a pituitary adenoma. Okay, so what further investigation would you like to do in this patient? डॉक्टर फारूक, अगर आप इसको सिर्फ छोड़ दें तो मैं अपने पास से जूम कर लूँ. इट्स हार्डर टू सी दिस वे. No, it's okay. Now you have seen the images, no? और क्या देखना इसमें है? इसमें और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? सर इसमें एंटीरियर टू सेला भी जा रहा है लीजन, इफ आई कैन सी द डाउनवर्ड सेक्शंस. सेला से आगे भी जा रहा है. ठीक है, लेकिन और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप इसमें? सर एंडोक्राइन वर्कअप करवाऊंगी मैं, पूरा एंडोक्राइन पैनल करवाऊंगी. ठीक है, विच तो विल उधर से इंक्लूड. वहां से फोन आते हैं कि भाई हमारे पास तो चीजें नहीं, हम सिर्फ कोई एक टेस्ट आपके लिए कर सकते हैं, तो कौन सा टेस्ट आप करेंगे एंडोक्राइन में? कोई एक कोई एक, हाँ। ओके, हमारे पास सिर्फ एक ही टेस्ट आपको मिल सकते हैं, बाकी हमारे पास नहीं है। तो कोई एक सर अगर है तो कौन सा आप करेंगे? क्योंकि शी इज अ फीमेल, इवन दो शी डज नॉट हैव एनी symptoms, लेकिन I will get a prolactin level. Okay, what is the normal value of prolactin? Sir, I am not completely sure. 20 to 30, between 20 to 30 nanograms per ml. अच्छा, ओके। उसके अलावा और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस पेशेंट में? आपने रेडियोलॉजिकल भी किए, आपने हार्मोन्स भी किए, और क्या करेंगे? सर विजुअल फील्ड की हम फॉर्मल टेस्टिंग करेंगे, पेरीमेट्री करेंगे फॉर डॉक्यूमेंटेशन. ओके, तो और I would why like a why CT. why 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 that documentation is important for you? So that documentation is important for two reasons. The first reason is to see how the post-op outcome is, and the second reason is to save myself from litigation. कोई sue ना कर दे मुझे बाद में, so I ठीक need है, that गुड। for documentation. ओके, And I would also need a CT head in this patient for my सीटी हेड क्यों? for my surgical planning. क्या मतलब सर्जिकल प्लानिंग में? एमआरआई पे आप सर्जिकल प्लानिंग नहीं कर सकते? सर मुझे bony anatomy देखनी है. ओके, तो कौन सा सीटी स्कैन चाहिए आपको? सर CT brain with thin section, CT bone window, CT head with bone window, thin sections चाहिए सर. सेंसेशन कौन से इमेजेस की? Ideally sir, coronal and maybe a few ओके, sections of और क्या sagittal. इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? तो रेडियोलॉजिकल तो हो गए, और क्या करेंगे आप? So endocrine workup था, radiology थी. I think Yeah. that. कोई और चीज करेंगे आप, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कि नहीं? Yes sir, वो तो baseline आएगा प्रोटोकॉल में. ओके, ये पेशेंट आपके सामने है, इसकी हार्मोन्स भी ठीक है, विजन थोड़ा सा बाइटेम्पोरल है, मेनो पे है, लेकिन माइल्ड सा वो है, एट्रोफिक चेंजेस है जो कि इतनी ज्यादा नहीं है। नाउ हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट? Sir, after optimizing her medically and after adequate counseling, I will plan surgery for this patient. सो व्हाट आर द सर्जिकल ऑप्शंस? Sir, I will just review the scans again. इसमें सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या है? Sir, इसमें the first surgical option, the go-to option would be transspinoidal, endonasal transspinoidal resection of this tumor. ठीक है, और क्या ऑप्शंस है? दूसरे ऑप्शन से transcranial है, and then the third option is doing a combined approach if tumor is extending. ट्रांसक्रेनियल कौन से ऑप्शंस है आपके पास? Transcranial में सर हमारे पास there is subfrontal approach, there is pterional approach. They are the Okay. FTOZ है तो हमारे पास. आप क्या करेंगे इसमें?
Sir, I will do a transsphenoidal approach in Transphenoidal, this patient. Yes, sir. ओके सो ये जो करोनल कट्स है उसको देखें तो इसमें ट्रांसफिनाइडल जब आप करते हैं आपकी क्या लिमिटेशंस हैं और व्हाट यू विल टेल टू द पेशेंट Sir, there is some lateral extension in this patient on the left Mhm. side. I will tell my patient, and also there is encasement, partial encasement of ICAs on both side. ठीक है Complete nahi hai, sir. Complete Okay. nahi hai. I'll assume this is most likely NOSP 2. Okay, तो आप So, क्या बताएंगे मरीज को मैं मरीज को ये बताऊंगी कि जितना मुमकिन हुआ हम निकालेंगे। बहुत मुमकिन है कि ट्यूमर का थोड़ा सा हिस्सा पीछे रह जाए, लेकिन ठीक क्योंकि है ये बहुत आस्तगी से बढ़ने वाला ट्यूमर है, तो उसकी वजह से आपको फौरी तौर पे कोई खतरा नहीं होगा। अच्छा मुझे ये हम बताएं कि ट्रांसफिनाइडल की कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या है Sir, there are two categories of transsphenoidal contraindication. One are absolute contraindications and the other are relative contraindications. हम्म Absolute contraindications में अगर पेशेंट को एक्टिव नेजल या साइनस इन्फेक्शन है, दैट इज एन ठीक है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। उसके अलावा अगर आईसीए की कोई भी वैस्कुलर एनोमैली है, कोई उसका ट्रैक जो है वो इट इज़ नॉट फॉलोइंग द टिपिकल पाथ, दैट इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। एंड द थर्ड इज के इफ द सेला इज नॉट न्यूमेटाइज्ड, अगर कॉन्कल टाइप है जो ठीक है बिल्कुल न्यूमेटाइज नहीं है, जिसकी वजह से हमें ठीक है एक्सेस नहीं मिलेगा, दैट इज ठीक है एब्सोल्यूट। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में इफ इट इज अ रीडू ट्रांसिस्फेनोइडल दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके और गुड अगर हमारे पास पैरासेलर टेल या मी टेल मी अबाउट द स्टेप्स ऑफ ट्रांसफिनाइडल ब्रीफली एक 2 मिनट में बताइए मुझे ठीक है ठीक है सर। Transphenoidal has 5 phases. The nasal phase, the sinus phase, then the cellar phase, then the tumor resection, and then closure. So, sir, I'll make my okay when we are in the nasal cavity so what are the yes, sir. important landmarks सर नेजल कैविटी में सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हमारे पास मिडल होता है, इट्स ऑन द टिप ऑफ माय टंग। टर्मिनेट ना यस सर, मिडल टर्बिनेट, आई एम सॉरी, ठीक है कॉमन वर्ड। मिडल टर्बिनेट होता है, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होता है नेजल ठीक है कैविटी में। तो आपको मिडिल टर्मिनेट मिल गया फिर क्या और सर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर मिडल टर्बिनेट से हम थोड़ा और ऊपर मूव करेंगे, वी विल फाइंड द कोआना। हम्म कोआना से हम थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे अराउंड 1 सेंटीमीटर रफली, वहाँ पे हमें स्फेनोइड रिसेस मिलेगा। ठीक है स्फेनोइड ऑस्टियम आपको ढूंढने की तरह। रेसिस मिल गए आपको अब क्या करेंगे सर स्फेनोइड ऑस्टियम आइडेंटिफाई करूंगी मैं। हम्म स्फेनोइड ऑस्टियम आइडेंटिफाई करके आई विल स्टार्ट वो आइडेंटिफाई हो एनलार्जिंग गया वो आइडेंटिफाई हो गया उसको एनलार्ज करूंगी सर विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी रॉन्जर्स, हम्म और सॉरी कैरिसन पंचेस, मैं उसको एनलार्ज करूंगी। आई विल ओपन अप द फ्लोर ऑफ स्फेनोइड साइनस। नहीं तो कैसे आगे जाएंगे इधर जो म्यूकोजा पड़े हैं ये काफी सारी चीजें उस सब क्या करेंगे आप सर जो स्फेनोइड ऑस्टियम है उसको जो म्यूकोजा है वो मैं फ्री करूंगी वहां से विद द हेल्प ऑफ पेनफील्ड डाइसेक्टर्स, एंड देन आई आपने विल म्यूकोजा फ्री कर दिया फिर क्या करेंगे सर मैं बोन पंच करूंगी विद द हेल्प ऑफ रॉन्जर्स। ओके देन बोन पंच करके मैं फ्लोर को एक्सटेंड, इसको ओपनिंग को पूरा एक्सटेंड करूंगी, एंड आई विल कैरी आउट माय डाइसेक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ सेला, सॉरी आप फ्लोर ऑफ स्फेनोइड। वी आर इन द स्फिनाइड साइनस तो यस सर। वहाँ पे क्या व्हाट आर द इम्पोर्टेंट structures which can be seen what are the important landmarks which can be seen there ओके सर, जो हमें ऊपर रूफ पे तो सेलर प्रोमिनेंस मिलती है, वो हम्म हमारे सुपीरियर लैंडमार्क होती है, और एंटीरियरली वी कैन सी द प्रोमिनेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, और लेटरली हमें कैरोटिड्स की प्रोमिनेंस मिलती है, दोनों के बीच में जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिको कैरोटिड रिसेस, एंड दैट इज आवर लेटरल बाउंड्री ऑफ द डाइसेक्शन ऑफ सेलर ओके फ्लोर। ड्यूरा कैसे खोलेंगे आप Sir, I will open the dura in a cruciate manner after using. Yes, ओके I'll open the dura in a cruciate manner. आपने ट्यूमर रिमूव कर दिया ना ठीक है Yes, sir. तो नाउ व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप Sir, after completely resect कर लिया है हमने tumor, उसके बाद I'll change the angle of the endoscope to just have a look around if I'm done with it completely, and then I will plan for the closure. तो Closure क्लोजर में कैसे सर करेंगे सर हम सेला के फ्लोर को पैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैट, एंड अगर
ड्यूरा ओके, का भी ये पेशेंट पेशेंट आपने एग्जामिन आपने ऑपरेट किया ना, शाम को आप राउंड कर रहे वार्ड आ रही है, सो व्हाट यू लुक फॉर इन दिस पेशेंट? Sir, I will look for, and the first thing that I will look for will be electrolyte imbalance और कोई signs of dehydration या कोई signs of ये कि patient hypervolemic तो नहीं हो गया है. मैं उससे पूछूंगी कि आपको प्यास तो नहीं लग रही बहुत ज्यादा या आपको पेशाब बार बार तो नहीं आ रहा. ठीक है, That will be my first lookout. और क्या देखेंगे आप? उसके अलावा CSF leak तो इतना जल्दी हमें नहीं मिलेगा. Sir, I will see that if the dressing is soaked completely, वो तो visible होगा. ऊपर से ओके, vision का इस पेशेंट में पूछूंगी. क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस सर्जरी? This patient can have multiple complications, sir. The हम्म CSF leak is one of them. ठीक है। CSF leak के अलावा DI हो सकता है patient को. हम्म, Immediate post-op period में, late post-op period में patient can have SIADH. और इसके अलावा visual Okay. deterioration हो सकती है और अगर मेरे ख्याल patient में को. और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ना, और टाइम तो कम है, हमारे पास सिर्फ 4-5 मिनट है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। जी सर, Okay. 3-4 मिनट। हाँ, ओके, तो यानी इसमें जिसका भी पिट्यूटरी ट्यूमर आता है ना एग्जाम में, तो देयर आर मोर चांसेस कि वो बंदा पास हो जाए ना। तो इट वाज वेरी गुड, यानी आपने हिस्ट्री भी ली, रेलेवेंट जो हमने आपसे पूछा, दैट वाज, हाँ, और उस पर डिस्कशन भी हो गई हमारी। ठीक है, लेकिन जब भी कोई पेशेंट आपके पास आ जाए हेडेक या विजन के साथ, तो हमने 4-5 चीजें हर मरीज से पूछनी है, जिसमें फिट्स के बारे में, जिसमें डिस्फेजिया के बारे में, जिसमें कोई वीकनेस के बारे में, जिसमें कोई वोमिटिंग वगैरह है, तो ये सारी चीजें पूछनी है, देन वी कैन elaborate the finding, the points which we have। स्पेशल में सिर्फ विजन और हेडेक की थी, लेकिन हेडेक में इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉर्निंग हेडेक है कि नहीं, और दिस हेडेक कंटिन्यूज और ऑफ एंड ऑन। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो वैसे भी हम पूछते हैं। जी जब भी सर. विजन वाला पेशेंट हो ना, विजन डिटोरेशन वाले या विजन लॉस वाले, तो ऑलवेज सेलर सुपरासेलर शुड बी इन माइंड। लेकिन हमने बाकी सारी चीजें पूछनी है, लेकिन इसको आपने इग्नोर नहीं करना, इन सेलर सुपरासेलर को जरूर पूछना है आपने कि भाई, एंड दैट कैन हेल्प यू। अगर आपको फील्ड डिफेक्ट मिल रहा है तो फिर लीजिए, फिर आप इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है इसमें। यानी ये इस तरह क्वेश्चन जॉब कभी नहीं देना चाहिए, स्कल बेस में है या इंटीरियर स्कल बेस में है, इसमें फिर बंदा फंस जाता है। तो ये आपको बाउंड्रीज में मैंने पूछा, आपने फिर क्वेश्चन जॉब चेंज कर दी, फिर आपने पूरा स्कल बेस बता दिया, तो ये सारी चीज कभी नहीं बताई कहाँ पे है जी सर. और क्यों है। यू शुड नो कि भाई इधर मैं क्यों बता रहा हूँ। देन आपने प्लेनस फेनाइडेल और ट्यूबरकुलम सेल और इसमें आप you are confused, you are not able to elaborate that easily। क्रेनीफेरेंजियोमा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेशेंट को प्यास नहीं लगती। क्रेनीफेरेंजियोमा की मरीज से देखिए, वो पूरी रात पानी पीता रहता है, एंड दे गो टू वॉशरूम अकॉर्डिंगली। तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उन लोग ओके में सर. इलेक्ट्रोलाइट्स देखने मस्ट है क्रेनीफेरेंजियोमा के पेशेंट में। बाकी चीजें अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस थी, एग्जामिनेशन भी आपने ठीक किया, आपने रिलेवेंट चीजें बता दी और आपने देख ली। फिर आपको जो बाकी चीजें मैंने पूछी, क्लासिफिकेशन जो वो है कैवर्नस साइनस का इन्वॉल्वमेंट है, दैट वाज आल्सो गुड। फिर रेडियोलॉजिकल भी ठीक था, यानी आप एमआर पे और आपने कोरोनल कास्ट देखे। लेकिन जब हम सीटी स्कैन में भी वही आपने उसको ये प्रोटोकॉल बताना कि मुझे छोटे प्रोटोकॉल चाहिए, क्योंकि उसमें भी वी शुड नो अबाउट द नोज, एनाटॉमी ऑफ द नोज, जिसमें टर्मिनेट्स वगैरह है, हमें स्फेनाइड साइनस का, और हमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वो सेप्टम देखते हैं मिड लाइन में, बिकॉज देयर आर 2 साइनसेस, तो मिड लाइन में या Okay, साइड yes पे sir. है, Yes उसके sir. हिसाब से हमने चलना है। ठीक है, बाकी सर्जरी भी आपकी ठीक थी, यानी तो ओवरऑल इट वाज ए गुड। इसको यानी Thank you sir. इसमें चांसेस होते हैं कि बंदा पास हो जाता है इसमें, क्योंकि यू कैन नॉट गेट 100% मार्क्स, तो हमें 60% चाहिए ना। तो हर सवाल के जवाब तो आप सही नहीं दे सकते, कुछ चीज़ आप ड्रॉप करते हैं, कुछ गलत बताते हैं, लेकिन है कि बाकी चीज़ों के नंबर बन बन के फिर बंदा पास हो जाता है। तो इसमें मेरे हिसाब से आप पास हैं इसमें। और Thank you sir. पिछूटरी जिसका भी आता है पिछूटरी, तो अगर बहुत बदकिस्मती ना हो तो पिछूटरी वाले लोग जो एग्जाम में लॉन्ग के साथ जाते हैं, तो देर आर मोर चांसेस कि बंदा पास, क्योंकि पिछूटरी हर वार्ड में है, यही चीजें होती हैं। ट्रांसफिनाइडल तकरीबन हर वार्ड में आजकल होते हैं ना। तो दिस वाज अबाउट माय इंप्रेशन। लेकिन एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों ने उस मरीज पे कंसंट्रेट करना है जो आपके सामने है। आपने जनरल बातें नहीं करनी, आपने उससे इंफॉर्मेशन लेनी है और आपने उस इंफॉर्मेशन की बेस पे डिस्कशन जवाब देने हैं। सर आई डिफरेंशियल वांट आपने, टू जी जी, सर सिनेरियो में था कि बायलेटरल डिक्रीज वीगन विद वॉकिंग डिफिकल्टी,
सर अगर वॉकिंग डिफिकल्टी तो हमारा फौरन ध्यान इंफ्राटेंटोरियल में चला जाता है कि मिडलाइन का कोई केस है नहीं या तो उससे उसका वो तो ठीक है, लेकिन आपने बाकी चीजें पूछ रहे हैं ना बाद में। वॉकिंग डिफिकल्टी उसकी वजन कम है, तो हर एक जिसका वजन कम होता है उसको डिफिकल्टी होती है। लेकिन सर ये नहीं डॉक्टर फारूक ने ना बायलेटरल पेपिलोएडिमा का, और अगर हमारा जो पिट्यूटरी है केस इसमें तो सर नहीं वो ऑप्टिक की उसको तरफ हाँ उसने वो थोड़ा उसने सा इस तरह नहीं कहा, उसने कहा माइल्ड सा है, आई एम नॉट श्योर, हाँ उसने ये भी कहा। तो उसने इस तरह नहीं कहा कि भाई, और क्या पिट्यूटरी में पेपिलोएडिमा नहीं हो सकता है कि नहीं हो कम सकता? होता है लेकिन हाँ हो जाता है उसमें। यानी देयर इज हाइड्रोकेफेलस, अगर सुप्रासेलुलर एक्सटेंशन है, उसने थर्ड वेंट्रिकल ब्लॉक कर दिया, देयर विल बी हाइड्रो एंड दिस पेशेंट विल हैव। इन लोगों की जो विजन जाती है, आपने देखा नहीं क्रेनियोफेरेंजियोमा वाले की विजन क्यों जाती है? डायरेक्ट कंप्रेशन भी है और उनको हाइड्रो भी होता है। सो देयर माइट बी हाइड्रोकेफेलस, जिस वजह से पेपिलोएडिमा हो सकता है। यानी जो भी चीज आप बताएं, आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। यू शुड नॉट कन्फाइन ओनली टू द सेलर सुप्रासेलर। सुप्रासेलर कैन एक्सटेंड अप एंड दैट कैन लीड टू हाइड्रोकेफेलस। कितने पेशेंट आते हैं, हम उनको शंट भी करते हैं, और आपने अगर डायलेटेड वेंट्रिकल और आपने पिट्यूटरी ऑपरेट कर दिया, खासकर ट्रांसक्रेनियल, तो पेशेंट खराब हो जाते हैं। सो दैट इज द रीजन कि बिल्कुल इस पेशेंट में बायलेटरल ग्रॉस पेपिलोएडिमा, ऑप्टिक एट्रोफी, सारी चीजें हो सकती हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। और किसी ने कोई सवाल करना हो सर है आपका सर? सर एक क्वेश्चन ये है कि काइंडली सर जरा एक्सप्लेन कर लीजिए कि जो पहला वाला केस था स्पाइन वाला, तो उसमें डॉर्सल यार वो केस खत्म हो गया, अभी डिस्कशन इस पे होगी। डॉक्टर जी अब्दुल, मैं आपको बाद में इसका जवाब देता हूँ, मैंने आपके सवाल सुन लिया। डिस्कशन इस पे और होगी। कोई हाँ, किसी ने कोई और सवाल करना है तो वो कर दें। अच्छा यानी इधर भी मैं आपसे वही कहूंगा कि यू शुड बी रेलेवेंट। जी तो एग्जाम में मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, एग्जाम में यानी आजकल एक स्ट्रक्चर्ड एग्जाम है जिसमें कोई बंदा आपको जानबूझ के फेल नहीं कर सकता। कोई एक एग्जामिनर अगर वो आपको 0 नंबर भी दे देना, आप फेल नहीं हो सकती, और न कोई बंदा 0 नंबर दे सकता है। देर आर 25 एग्जामिनर्स, लॉन्ग के शॉर्ट केसेस में 2 एग्जामिनर होते हैं। जब आपको दोनों फेल करे तो फिर आप फेल होने के चांसेस होते हैं। ना कोई एक बंदा आपको पास कर सकता है पूरे एग्जाम में, ना आपको फेल कर सकते हैं। आपको यानी अक्सर जो मैं देखता हूँ, इन लोग जो एग्जाम में फेल होते हैं, द ओनली रीजन, एक तो सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने पढ़ा नहीं होता, उनको बिल्कुल जो जवाब नहीं आता तो इधर उधर की बातें करते हैं। दूसरा ये कि एग्जाम से पहले मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि एक दिन पहले आपने किताबें बंद करनी है। अगर आपको पता भी चल जाए कि कल मेरा लॉन्ग केस सी पेंगल होगा, लेकिन फिर भी आपने सी पेंगल नहीं पढ़ना, बस आप वो एक दिन आराम कर ले और नींद कर ले, बिल्कुल अपने मोबाइल ऑफ कर ले, क्योंकि दिस एग्जाम इज एग्जाम ऑफ ओरिएंटेशन। जब तक आप ओरिएंटेड नहीं है, आपको आसान चीजें आपसे खराब हो जाती हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा है कि एग्जाम में आपने एग्जामिनर की बातें सुननी है कि वो क्या बोलता है, और आपने अगर आप क्वेश्चन की समझ नहीं आए दोबारा पूछ लें। आपका जो जवाब है और आपकी जो हिस्ट्री है और आपका जो एग्जामिनेशन है, दैट शुड बी रिलेवेंट, और उस पेशेंट के हिसाब से है। आपने डिफरेंशियल बनाया, कोई भी चीज बनाई आपने, तो दैट डिफरेंशियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। जब आपने एग्जामिनेशन किया मीटिंग दे देके लगते हैं। तो फिर आप एग्जामिनेशन के हिसाब से कर लीजिए। आपने इन्वेस्टिगेशन की, फिर आपकी चीजें बदलती रहती है ना। तो आपकी जो वो है जवाब है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स जो आपके पास आई हैं, और आपने उस पेशेंट से रिलेटेड जवाब देना है। आपने जनरल बातें नहीं करनी, क्योंकि जनरल बातें आपने पेपर में काफी चीजें की हैं, आपने बाकी चीजें की हैं, लेकिन यहाँ पे आपने चूंकि पेशेंट आपने अभी एग्जामिन किया और आप इसी पेशेंट पे डिस्कशन हो रही है, तो आपका जॉब इसी पेशेंट के हिसाब से होना चाहिए। आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर जब आप इन्वेस्टिगेशन पे आ जाए, तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट, जो आपसे पूछ लिया कि भाई क्या रीजन है, आप बताइए है, आपने एक्सप्लेन नहीं करना। अभी जिस तरह कौन अभी एक्सप्लेन, ये लड़की एक्सप्लेन कर रही थी कि भाई इस पे छोटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नो यार, व्हाट इज द डिफरेंशियल, जस्ट नेम, ये पिट्यूटरी एडिनोमा क्यों है। जब क्यों की बात आ जाए, देन यू शुड एक्सप्लेन द थिंग्स। फिर आपकी मैनेजमेंट शुड बी टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट, और जो आपको एमआरआई पे नजर आता है, आप ये नहीं कहा कि भाई ये मैं ये भी कर सकता हूँ। नो यार, आपने इसमें क्या करना है, इसमें जो करना है आपने सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करिए। और इस पेशेंट, ये तो ओपीडी में अगर आपका मरीज आता है, तो क्या आप उसको बताएंगे कि पहले मैं आपका ट्रांसक्रेनियल करूंगा, अगर उसमें सही नहीं हो तो फिर मैं आपका फ्लांक। नो यार, आपने डिसाइड करना है कि नो, मैंने ट्रांसफिनाइडल करना है, तो आपने उस ट्रांसफिनाइडल पे कंसंट्रेट करना है। तो यानी आपका जो मेन चीज ये है कि आपकी डिस्कशन दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। इधर उधर की बातें ना करें, फिर आपका पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप जनरल बातें करेंगे तो फिर वहां पे आप फंस जाते हैं, अपने लिए आप क्वेश्चन बढ़ाते हैं। जो जितने क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं गलती के, फिर आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वन शुड बी कॉन्फिडेंट, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज जरूरी है। नॉलेज के बगैर बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होता, और नॉलेज सिर्फ पढ़ने से आता है। तो अभी भी आप लोग के पास एक महीना है, एक प्लान बना लिया, आप
मेरे ख्याल में 20 डेज का प्लान बना, लेकिन मैंने 20 डेज में इतने लॉन्ग केसेस, इतने शॉर्ट केसेस और ये चीज़ मैंने पढ़नी है, चीज़ मैंने कवर करनी है। उसके बाद फिर आखिरी दिन में फिर आप इधर उधर जो जनरल लोग साथ डिस्कशन करें। लेकिन आज इसमें 2 प्लान्स बना लिए, 20 डेज का और एक आखिरी एक हफ्ते का प्लान बना ली। जी सर थैंक यू सो मच सर। आई गेस जो भी सवाल थे सबने पूछ लिए। एंड सर अगेन सर आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। Okay, sir. Relax. So now, if you guys want, we have like 25 minutes. I can spend 25 minutes with you discussing these cases, or if you want to ask any other question, okay? So we can discuss one by one कुछ question. देखिए आप लोग, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो है वो आप लोग की पार्टिसिपेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। वो आपके सामने वही 4-5 लोग फर्स्ट डे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, सो मुझे कोई इशू नहीं है उसके अंदर, बट आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा ये। एंड ऑफ द डे आप लोगों ने फेस करना और वही आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग कुछ चीज़ें अच्छी करते हैं, कुछ चीज़ें बुरी करते हैं। अभी पेशेंट नहीं था सामने, ठीक है, आपको हैंडलिंग नहीं करनी पेशेंट की, आपका वो सारा कंपोनेंट जो है ना वो हट गया। उसके बावजूद भी आपको जब फाइंडिंग दे देते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम हो रही होती है सामने। ठीक है, एक दो सवाल जो थे मैं उस पर आता हूँ वापस से। डॉक्टर अब्दुल रहीम, आपको मैं कुछ कमेंट्स पर्सनली मैं आपको टेक्स्ट भी कर दूंगा। एक तो चीज़ें वो ये कि जैसे आपने पूछा कि रेडिकुलोपैथी वाली बात, हमने आपसे नहीं पूछा कि जो है वो पेशेंट इंट्रामेडुलरी का है या क्या। हमने आपसे सिर्फ पहले तो आपको फाइंडिंग बता दी, आपको फिर डिटेल हिस्ट्री बता दी। डिटेल हिस्ट्री के बाद में आपसे डिफरेंशियल जब पूछ रहे हैं तो व्हेन यू सी कि देयर इज वीकनेस, ठीक है, उसकी डिटेल हिस्ट्री के अंदर कहीं पे मेंशन नहीं है कि उसको जो है वो लेग्स में कोई पेन ज्यादा जा रहा है या कुछ ऐसा। बट ऐसा है भी सही, अगर तब भी हो सकता है ना, स्टिल आपको डिफरेंशियल तो अपने बनाने हैं ना। एक्स्ट्रा मेडुलरी और इंटरमेडुलरी तो आपको रखना ही रखना है। आप सिर्फ एक्स्ट्रा मेडुलरी पे फोकस कर रहे थे, जबकि उसको पेशेंट को वो प्रेजेंट ही वीकनेस के साथ में हो रहा है। ठीक है, शुरू में आपको शायद उस तरह से नहीं दिया, बट उसके बाद आपको बता दी है ना हिस्ट्री। जब आपको हिस्ट्री बता दी तो देन आपके माइंड में होना चाहिए। इनकॉन्टिनेंस के साथ भी आ रहा है, आपने बहुत कम देखा होगा कि इनकॉन्टिनेंस एक्स्ट्रा मेडुलरी लीजन्स के अंदर आपको फौरन से आ जाए। सो इट्स मोर लाइकली टू बी माइलोपैथिक पेशेंट। तो जब माइलोपैथिक पेशेंट है तो यू हैव टू मेक योर डिफरेंशियल अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपका एक्स्ट्रा मेडुलरी, हम ये नहीं कह रहे कि आपने गलत बताया, बट जब बायलेटरल फाइंडिंग्स हैं तो आप वो भी तो देखें ना। व्हेन वेरी अनलाइकली कि पेशेंट डायरेक्टली बायलेटरल फाइंडिंग्स के साथ में आपके पास जाए विद schwannoma। ठीक है, तो वो आपने सारी चीजें बतानी है उसके हिसाब से। ठीक है, सर अच्छा इसी स्टेशन के हवाले से मेरा भी एक क्वेश्चन था। जी। ये जो इसकी आप एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स की स्लाइड पे जाएंगे, स्पाइन वाला जो केस था, देखें, हाँ इसमें ठीक जिस चीज है। ने, जी स्पाइन वाला, जी सॉरी, जी कौन सा केस है? यही केस है ना जी। जी सर, इसमें जिस चीज ने मुझे कंफ्यूज किया था ना वो रिफ्लेक्सेस नॉर्मल था। अब हाँ मैं आई मीन जनरली जब एक पेशेंट इतना वीकनेस के साथ है कि उसको 3/5 की स्पास्टिक वीकनेस हो रही है तो फिर वो डेफिनेटली स्पास्टिक होता है। रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क होने चाहिए, आपको इम्प्लांटर्स होने चाहिए। तो एक तो ये चीज़ ने मुझे कंफ्यूज किया था। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन है तो क्या हमने डिफरेंशियल्स में अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल पेरिफेरल नर्व्स या प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, ये वाली चीजें हम बता सकते हैं एग्जामिनर को, या हम ना जाए इतना डिटेल में? देखें, आप आपके जो है कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा सामने वाले को भी होता है कि यार अब इसका जवाब क्या दें। अब सिंपल सी बात है, आपने बोला पेरिफेरल नर्व्स, व्हाई वुड यू थिंक एक पेरिफेरल नर्व पैथोलॉजी जो है वो बायलेटरल वीकनेस कर रही है उसको? सर सिमेट्रिकल होती हैं कभी कभार, बायलेटरल एंड कम मतलब रेयर एक चीज बता रही है ना, वो भी आप आपको लग रहा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई ऐसी रेयर चीज उठा के दे देंगे जिसमें आपको पेरिफेरल नर्व ढूंढनी पड़ेगी, वो भी लॉन्ग केस के अंदर, वो भी बायलेटरली। वेरी अनलाइकली ना, आप ऐसी बातें नहीं करें। सिमिलरली सही सही। सिमिलरली जैसे आपने बोला रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने मिस कर दिया, रिफ्लेक्सेस करना ही मिस कर दिया, ठीक है, तो क्या आप रिफ्लेक्सेस के बगैर अपने डिफरेंशियल नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। ठीक है, तो जो जो चीजें आपको मिल गई हैं, आपको पेशेंट ने देख लिया कि उसकी जो है बायलेटरल वीकनेस के साथ में पेशेंट आ रहा है, आपको एक सेंसेशन का लेवल मिल गया, सेंसरी लेवल मिल गया, तो आप उसके ऊपर तो आप खेल सकते हैं ना, उसके ऊपर तो आप बात कर सकते हैं। व्हाई वुड यू थिंक यार इसको आप भूल जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप रिफ्लेक्सेस को लेकर बैठे रहेंगे। या अगर रिफ्लेक्सेस ठीक में है। फॉर एग्जांपल मैं अगर
कह देता हूँ कि यार वो रिस्क है, या मैं कह देता हूँ कि वो बिल्कुल एब्सेंट है, ठीक है, दोनों सूत्रों के अंदर फिर भी आपको आगे तो बढ़ना ही है ना। आप अपर मोटर बनाए या लोअर मोटर बनाए, आपको बट पैथोलॉजी तो आपको ढूंढनी पड़ेगी ना, फिर भी आप लोकलाइज तो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। समझ ना आपको, तो ये चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको जो फाइंडिंग दी हुई होती है आपने उसके हिसाब से ही बात करनी है। अगर कोई चीज आपने मिस कर दी है, या आपको हो सकता है गलत फाइंडिंग, आपको काफी बार होता है, आप भी देखते हैं कि पेशेंट जो है वो आपको प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देता है, या उसकी फाइंडिंग आपको प्रॉपर नहीं मिल रही होती, तो आप उसके बावजूद यू कंप्लीट योर एग्जाम ना, बिकॉज आपको जो कॉमनेस्ट चीजें हैं उन्हीं के ऊपर बात करनी है, और जो रेलिवेंट आपको दिया है उसके ऊपर बात करनी है। और किसी केस के हवाले से किसी ने कुछ बात करनी है? सर इस ये लेवल का बता देते सर। क्या, सॉरी? सर ये लेवल अगर C2 के बगैर कैसे काउंट करेंगे हम? लेवल जिस उन्होंने बताया वो सही बता रहे थे कि अगर आपको सामने से नजर आ रहा है, चाहे वो जिफी स्टर्नम आ रहा है, चाहे वो जो स्टर्नल एंगल नजर आ रहा है, ठीक है, या स्टर्नल नॉट्स नजर आ रही है, तो फ्रॉम दैट यू कैन आइडेंटिफाई। और अगर आपके पास व्यूज फर्दर हैं तो फिर आपको रिब से भी आपको पता चल सकता है, बट थोड़ा मुश्किल होगा, वो आपके ऊपर इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, बट जनरली आपको यही मार्जिन मिलते हैं। So, अगर नहीं है तो फिर आप उसको बता सकते हैं कि मैं या तो यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूंगा, या फिर आई वुड लाइक टू सी द फर्दर स्कैन्स, ठीक है। सर इस केस में जो ओके। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट था वो सिर्फ एक ही था, और वो बायलैटरल रेडिकुलर पेन था ना फॉर द 4 months, एंड लाइक इन द हिस्ट्री ऐसा कोई इसमें कोई और वो नहीं था ना जो इंट्रामेडुलरी में, टू बी वेरी honest, I haven't seen any patient to present with the bilateral radiculopathy with the देखें intramedullary अगेन dorsal डॉक्टर lesion. अब्दुल रहीम, अगेन आप वहीं पर ही जा रहे हैं, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ठीक है प्रेजेंटिंग कंप्लेन पेशेंट ने बतानी है, पेशेंट आपको गलत भी तो बता सकता है, बोलता है मुझे पेन शुरू हो गया, तो क्या आप उसके बाद डिटेल हिस्ट्री लेंगे ना, आप उसको फाइंड आउट करेंगे ना, और आपके सामने डिटेल हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर, अच्छा, आ रही बात समझ में? तो जी आप थोड़ा सा उसके साथ भी तो जाए ना कि यार यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि उसको पेन आ रहा है, उसको नंबर्स लिखी हुई आ रही है ना आपके सामने डिटेल हिस्ट्री के अंदर। असल में सर उससे पहले केस शुरू होने से पहले आपने एक स्कैन दिखाया जिसमें एक्स्ट्रामेडुलरी ट्यूमर था ना, तो मेरा पूरा फोकस ही उस पर हो देखिए वो गया कि आपके ऊपर है ना, अब ये तो आप नहीं इस तरह से एक्सक्यूज नहीं दे सकता ना एग्जाम के अंदर, तो टाइम चले। और कोई इसके ठीक सर, अलावा? ठीक सर। और किसी? देखिए कॉमन केसेस हमने ट्राई किए हैं कि जो हम हर तरफ से कवर करने की कोशिश की है। कुछ केसेस आपके, फर्स्ट केस आपके सामने इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर दिया था, ठीक है, और उसके अंदर यही मसला मतलब यही फोकस था कि आपको जो भी इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर्स हैं उनके ऊपर मिड लाइन ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो उस पर फोकस था, ठीक है। अब इसके डिफरेंशियल में अच्छे खासे आप ऑलरेडी डिस्कस हो गए थे, बट इसके अंदर कुछ और भी चीजें हो सकती थी, तो वो आपने डालनी है। लेटलाइजेशन साइन अगर आपको नहीं मिल रहा कोई, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मिडलाइन में जाएंगे। मिडलाइन वही बात मैं पहले से भी कर रहा हूँ कि फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर फोसा तक आपको हर जगह जाना ही जाना है, ठीक है, अगर आपको कोई लोकलाइजिंग साइन नहीं मिल रहा, ठीक है। और तो वो आप लोग मिस करते हैं, आप एक जगह पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। आपने पोस्टीरियर फोसा मेरे ख्याल में जिसने भी बताया था कुछ ज्यादा इसके बारे में बात नहीं की इसकी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री यू कैन पुट ऑल दीज थिंग्स। हाँ, फिर आप रूल आउट करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, बट आपको रखना तो है इसके अंदर। बिकॉज मैं साथ में असल में इसको मैनेज भी कर रहा होता हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नोट नहीं कर पाया कि मैं आपको बाद में एंड पे बताऊँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अगर आपने किसी ने कुछ सवाल करने हैं तो मैं फिर आपको उसके आंसर देता हूँ। दूसरा केस बहुत सिंपल सा था, ठीक है। इसके अंदर जिसने भी प्रेजेंट किया उसके अंदर थोड़े से खैर जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने भी आपको लीनियंसी दी इसके अंदर, बट इसके अंदर 2 लेवल के डिस्क दी है, ठीक है, और दो लेवल के इमेजेस आपको लगाए हुए थे, तो आपको क्लेरिफाई करना था अगर किसी को अगर इस तरह का इमेज दे दिया है तो उसके अंदर 2 लेवल के आपको डिस्क प्रोलैप्स मिल रहा है। दूसरे लेवल पे कम जरूर है, बट इट्स जस्ट सिंगल व्यू आपको मतलब नजर आ रहा है सजाइटल की तरफ। तो आपको एक्सियल व्यूज दिए हमने, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि और मतलब 2 लेवल पे लग रहे, एक पे सेंट्रल है, एक पे काइंड ऑफ लेफ्ट लेटरल है, मतलब लेफ्ट है उसके अंदर। सो वो थोड़ा सा ट्रिकी था, बट खैर वो आपको मैंने लीनेंसी दे दी और वो आगे चले गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे रखने का मकसद यही था कि हम आपसे डिस्कशन थोड़ी सी उस तरफ लेके जाएं कि सिंगल लेवल है या 2 लेवल है, और अगर 2 लेवल करना है तो वो विल बी योर अप्रोच, तो ये आपको थोड़ा सा वो करना है। सर सही है? लेकिन इसके एग्जामिनेशन में सर आपने जो बताया था कि वीक उसकी एल्बो एक्सटेंशन है, और सर वो तो हाँ। और रिस्ट एक्सटेंशन, ये तो सर दोनों C6-7 के लिए है। तो यहाँ जो ज्यादा डिस्क है वो 5-6 में है।
नहीं तो 5-6 में तो है इसके अंदर, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 5-6 वाला, मैंने आपको बताया नहीं कि वो सेंट्रल में आ रहा है। हमने तो सिर्फ लेटरल एक साइड की हमने फाइंडिंग बताई है ना, तो वो जो फाइंडिंग सही। बताई है वो तो नीचे से आ रहे हैं लेटरल्स की वजह से। अरे बस तो ये छोटी छोटी चीजें जी होती हैं, सर, बट जी सर। कहने का मतलब इसमें आपको ना, आपको पॉइंट आउट जरूर करना है कि यार मुझे 2 लेवल की टेस्ट नजर आ रही है, हाँ उसके ऊपर माइल्ड है, आप दोनों अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे दैट्स अप टू यू। सो ये है इसके अंदर। मूविंग टू द थर्ड केस, अगेन सिंपल सा केस था, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं था, और प्रेजेंट भी सही किया उन्होंने। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक दो चीजें क्या थी, आप मुझे बची, हाँ उन्होंने मिस किया था एंजियोग्राम वाली बात, तो वो इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको एंजियोब्लास्टोमा मिले तो आपको एंजियोग्राम की बात करनी। बाकी उन्होंने अच्छा बताया कि आपको डिटेल न्यूरोसिस का एमआरआई कराएंगे और सारी चीजें वो। बट स्टिल अगेन कमिंग बैक टू द दिस पेशेंट, हाइड्रोसेफलस की बात जितना मुझे याद आ रहा है मिस की थी उन्होंने कि मैनेजमेंट के हवाले से। ठीक है, या ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं हुई थी, तो मतलब सारे ऑप्शन हैं जो हाइड्रोसेफलस को ट्रीट करने वाले हैं कि शंट भी है, ईबीडीज भी है, इंट्रोपरेटिव, या उससे पहले भी ईबीडी आप कर सकते हैं, तो वो सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। समटाइम्स पीपल ट्राई डूइंग द सेफ्टी बरोल ओनली एंड रिमूविंग द लीजन, और वेट करते हैं कि जो है वो हाइड्रोसेफलस सेटल डाउन हो जाए। ओके, और यहाँ ये सवाल जरूर हो सकता है कि अगर एक पेशेंट है आपके पास में जिसमें ये एमआरआई भी है साथ में, ठीक है, पेशेंट को अभी कोई फाइंडिंग नहीं है सच कोई खास, बट ये लीजन भी उसके अंदर आ रहा है, सो हाउ विल यू अप्रोच, तो वो भी आपको एक डिस्कशन पॉइंट है, तो डिस्कस करने की जरूरत है। सिमिलरली ऐसा पेशेंट जब आपको पोस्टीरियर फोसा में लग रहा हो, ये देखिए 2-3 लीजन है जिनके अंदर आपको फेमिलियल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, या फेमिलियल हिस्ट्री के अलावा भी जैसे उसकी बॉडी पार्ट्स के अंदर, जैसे इन्होंने बाद में उसका जिक्र किया, लेकिन हिस्ट्री में आपने ये जरूर पूछना है कि यार ये चीजें उनको कहीं और लीजन तो नहीं है, ठीक है, और पर्टिकुलरली कोई फैमिली के अंदर ऐसा कोई लीजन उनको पहले से तो नहीं है, तो वो आपको हिस्ट्री से ही स्टार्ट कर लेना है। सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, बट अगर आप 1-2 सवाल भी कर लें तो वो उससे रेलिवेंट हो जाते हैं। बाकी फोन तो हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस कर लिया। लास्ट केस जैसे डॉक्टर लाल ने बताया कि वो काफी सिंपल सा केस था, बट अगेन इसमें जो है ना वो डिफरेंशियल आपके ब्रॉड होने चाहिए, सिर्फ पिट्यूटरी के ऊपर फोकस करना इज नॉट मोर देन इनफ, तो वो आपको उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको पैरासेलार, सुप्रासेलार, ठीक है, और एंटीरियर जो है ना तक जो सेला से आगे के लीजन है वो आपको डालने हैं इसके अंदर, तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर करनी है। और बाकी हिस्ट्री भी उसकी लॉन्ग थी तो ऑब्वियसली वो था, और बाकी मैनेजमेंट में आपको मेडिकल मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों पे जाना है अगर प्रोलेक्टिनोमा आते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि भाई हमने अगर एक टेस्ट का बोल रहे हैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कॉमन ट्यूमर कौन सा है जिसको आप पहले सोचेंगे, तो इस वजह से आपसे पूछ रहे हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन आप कौन सी करवाएंगे, ठीक है। सो ये समटाइम्स और भी कुछ चीजें पूछने की कोशिश करते हैं, वो थराइड का भी पूछने की कोशिश करते हैं, अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, इस पेशेंट को ऑपरेट करने जा रहे हैं, पेशेंट की विजन खराब हो रही है, आपने कुछ ज्यादा हार्मोन्स नहीं करवाए उसके या अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपको एक इन्वेस्टिगेशन कौन सी करना चाहेंगे उसके अंदर, तो वो फिर आपसे बातों का थराइड का पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिससे और इसी के अंदर वो आपसे पूछ रहे थे कि और कौन से टेस्ट करवाएंगे, तो आपको शुगर लेवल का लाजमी बताना है, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ में कि शुगर लेवल्स आपने लाजमी कराने हैं इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। नॉट स्पेसिफिकली कि प्रोलेक्टिनोमा में, बट अगर आपको एक्रोमेगाली के ज़्यादा मिलते हैं तो फिर तो 100%, बट जनरली वो पूछते हैं कि तो अभी तक आपको स्कैन दिखाए नहीं उन्होंने और पेशेंट सामने था नहीं, तो फिर जो है वो ये कहते हैं कि आपको शुगर लेवल्स बताने हैं साथ में, ठीक है। कोई और सवाल, अदरवाइज वी विल एंड दिस मीटिंग। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों की क्या ओपिनियन है स्पोर्ट्स के हवाले से, और आई वुड लाइक कि आप लास्ट में तो दे दें, बट एनी चेंज अभी आपको अगर लग रहा है कि कोई भी और चीज़ हम लास्ट डे के ऊपर कर सकते हैं चेंज, वी वुड लाइक के हमने इनवाइट तो किया मैं सीनियर एग्जामिनर्स को कल भी, सो वी एक्सपेक्ट कि वो होंगे हमारे साथ, 2-3 लोग ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं कि जो करना चाहेंगे एग्जाम कल, बट स्टिल सर कल कल 9 बजे से स्टार्ट हो गया, 10 बजे से? कल 10 बजे से सर फ्राइडे एक्चुअली की ना वजह से मेरी हम लोग बिल्कुल मेरी करते वो हैं। दोनों दिन ड्यूटी थी, मैंने इसलिए ना शुरू में भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली अगर नहीं, पॉसिबल हो आपने जब सकता है रिक्वेस्ट की थी उससे पहले लोग जो वो कमिट कर चुके थे, तो मैं रियली पॉसिबल नहीं था कि मैं किसी को मना करके और आपको पहले रखता, ये प्रॉब्लम थी, नहीं ठीक नहीं है। ठीक है सर, मैंने एक्चुअली जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी ना तब भी कह दिया था। चले कल सर अगर पॉसिबल है 1 बजे के बाद, क्योंकि वैसे 2 बजे तक ओपीडी होती है, तो अगर 1 बजे के बाद पॉसिबल है तो देखिए लास्ट में। बात बात ये है कि अब मैं सॉरी टू से कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना आप
आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग ठीक है, आप लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी सारी चीजें हैं, बट मैं अगेन बात वही कर रहा हूँ कि भाई दिस इज द एग्जाम टाइम ना। अब ये लास्ट मंथ है आपका एग्जाम टाइम का, और ठीक है अगर आपको पूरा महीना नहीं भी छुट्टी मिलती तो आप अपने एटलीस्ट कोर्स के दिन या कोई वैसी चीजें तो आप उसके अंदर अपना ऑफ लें, ब्रेक लें। अब ऐसा भी नहीं है कि यार हम भी सारे इस सिस्टम से गुजरे हैं, ठीक है। अब आपको अगर जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए ड्यूटी का क्या मतलब है, हम भी करते हैं सारी, हमारे पास भी सारी जॉब है, ठीक है। कोई प्राइवेट में कर रहा होगा उसको बहुत बर्डन होगा, बट जनरली जो गवर्नमेंट सेटअप के अंदर लोग हैं, अगर एक दूसरे से आप हेल्प लेना चाहें तो आपको बहुत आसानी से हेल्प मिल जाती है कि यार मैं कोर्स अटेंड कर रहा हूँ, आप साथ में काम देखते हो। तो आपके ऊपर है, मैं सिर्फ एक बंदे की बात नहीं कर रहा, इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हारून, मैं जनरली बात करूँ कि आपको पार्टिसिपेशन करनी चाहिए थी इस कोर्स के अंदर, इससे कहीं ज्यादा जो कि ऑलरेडी आपने मिस किया है। ठीक है, इट्स अप टू यू, हम तो सिर्फ अरेंज कर सकते हैं और गाइड ही कर सकते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद किसी को लगता हो कि यार चीज़ें बहुत मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, हमें कुछ ज़्यादा और देखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनका अपना वो है, हम किसी को उस पर नहीं फोर्स कर सकते। बट हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो फेल हो चुके हैं पहले से, रिपीटर हैं, ठीक है। और उन्हीं के दिमाग में, सॉरी टू से, बट थोड़े उल्टे सीधे सवाल भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। थोड़े उल्टे सीधे कंसर्न भी ज़्यादा आते हैं, चाहे वो एग्जामिनर से रिलेटेड हो, चाहे वो ओवरऑल एग्जाम के से रिलेटेड हो, चाहे वो केसेस के हवाले से हो, कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर घुस जाते हैं जो कि हमेशा प्रॉब्लम करती हैं। सो जिसका जो फेल हुआ है उसका ज्यादा रिस्क है कि वो दोबारा फेल होता है, बिकॉज उसका पहले डर वाला जो पहले वाला डर है वही नहीं खत्म हो रहा। तो इसी वजह से ये कोर्स अरेंज करते हैं कि प्लीज आप कम फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट योर केसेस, ताकि आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं वो यहाँ खत्म हो जाएं। हमारे भी सामने, मैं पिछले 6 सालों से तो ये कोर्स करवा रहा हूँ, पर हमें देखने में आ जाता है कि जो बंदा नहीं कर रहा होता प्रैक्टिस, ठीक है कुछ लोग होते हैं आउटस्टैंडिंग में, ये नहीं कह रहा कि सारे लोगों को कोर्स की जरूरत है या सब लोगों को हेल्प की जरूरत है। हाँ, आपके पास 10-15% ऐसे होते हैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स जो के ज़्यादा प्रिपेयर नहीं भी कर रहे होते, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और सारा जो बात जो सफ़र है वैसा गुजरा होता है कि वो आसानी से एग्जाम पास कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इनको एक तो टाइम हो चुका होता है एग्जाम से निकले हुए, दूसरा वार्ड नहीं जा रहे होते, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर्स करती हैं। तो आपके पास ये मौका है कि आप आके प्रेजेंट करें। आप कल लास्ट डेट है, मैं उसके बाद कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं लाजमी कोई उसके बाद भी आपको कोई डेट दूंगा, बट अगर ऐसा हुआ कि कोई क्वेरीज हुई ज़्यादा लोगों की, या कुछ डिस्कशन हुआ, या कुछ केसेस अगर डिस्कस करना चाहेंगे, तो यू गाइस आर मोर देन वेलकम कि आप कोई अरेंज करना चाहें तो मैं आपके साथ किसी और दिन भी अरेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा भी पहले भी ऑफर किया था कि आई एम हियर इन कराची एट जेपीएमसी। जो लोग ऑलरेडी हैं जेपीएमसी में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं या वैसे आ जाते हैं मेरे पास, तो दे नो कि मैं उनको टाइम देता हूँ जब भी होता है, ठीक है। और उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रही होती है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने जो है वो सिर्फ मुझसे नहीं, और भी इतने सारे लोग हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप अपनी हेल्प इसमें कोई इस तरह से नहीं होता कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। हेल्प का मतलब ये कि कोई आपको ऑब्जर्व कर ले और आपको गाइड कर दे कि यार ये बेहतर किया आपने, ये आपने और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है, और किसी ने कोई पढ़ाना नहीं है आपको। जो छोटी छोटी क्वेरीज हैं, जो डर हैं, वो खत्म करने हैं यार, ठीक है। अब आपके सामने 2-3 एग्जामिनर्स थे, हर एक का थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ हुआ, हर एक का थोड़ा सा बात करने का भी अंदाज, थोड़ा समझाने का अंदाज भी, और थोड़ा सा केस को लेकर चलने का अंदाज भी। तो ये आपके ऊपर है कि आप जो है ना वो अगर इस डर में रहे कि यार ये एग्जामिनर आएगा तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबने आपको लीड करने की कोशिश की, सबने आपको गाइड करने की कोशिश की, मुझसे भी बीच बीच में जितना इनपुट हुआ, ठीक है। जाहिर है उनको सीनियर एग्जामिनर्स को बुलाने का मकसद ये था कि मैं अपना इनपुट कम दूं और उनसे ही बात कर लूँ, ठीक है। तो देखते हैं इंशाल्लाह आप लोग आपकी इसमें से कितना समझे हैं, कितना नहीं समझे, इट्स अप टू यू। और यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। कोई और सजेशन भी है या कोई और बात भी है तो आप कर सकते हैं ग्रुप पे मैसेजेस। मेरे ख्याल में एंड करते हैं आज के लिए, ठीक है। और बाकी ये है कि कुछ लोगों को है प्रॉब्लम, कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम इन द सेंस कि दे हैव फेल्ड इट मल्टीपल टाइम्स। तो अगर आप पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहें तो यू गाइस आर मोर देन वेलकम। मैसेज करना चाहें, पर्सनली आके मिलना चाहें, ठीक है, तो आप आके डिस्कस कर सकते हैं इंडिविजुअली, यार कि मेरे लास्ट केसेस ऐसे हुए थे और मुझे लगता है कि यार ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी। देखिए आप खुद भी रियलाइज करें कि प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा आप अगर आप ये सोच के बैठे हैं यार कि मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एग्जाम का जो है पैटर्न उसमें प्रॉब्लम है या एग्जामिनर में प्रॉब्लम है, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम यही फेस करना पड़ेगा, फिर आप अगली बार भी यही बातें कर रहे होंगे। तो इस वजह से कह रहे हैं कि वो आपने अपने अंदर भी कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि जो आपकी वीकनेसेस हैं, ठीक है।
और जैसे लाल साहब ने बोला, ये हमेशा सब भी बोलते हैं और मेरा भी सबसे, अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार एग्जाम कैसा एग्जाम है FCPS का, तो दिस इज एग्जाम ऑफ ओरिएंटेशन। जो बंदा होश हवास में है, ठीक है, चाहे उसको बहुत बहुत नॉलेज नहीं हो, लेकिन अगर किसी को एवरेज भी नॉलेज है ना, और उसकी ओरिएंटेशन अच्छी है कि भाई मुझे एग्जाम में मुझसे क्या निकलवाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, या पेशेंट जो है वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो यू कैन इजीली पास दिस एग्जाम। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई ऐसा केस नहीं था जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना था। आपको सिर्फ उनके साथ में चलते हुए वहां डिफरेंशियल तक लेके जाना था, उसमें से एक डायग्नोसिस बन जाना था या 2 बन जाने थे आफ्टर द MRI, और उसके ऊपर सिंपल सिंपल डिस्कस हो जानी थी। आपके सामने किसी केस के अंदर कोई मुश्किल प्रोसीजर के बारे में बात हुई नहीं हुई। सिंपल केसेस हैं तो कहाँ से बात हो जाएगी उसमें कोई डिफिकल्ट चीज। तो एग्जाम में भी यही होता है, आप लेके जाते हैं एग्जामिनर को, तो फिर वो आपको वहीं तक लेके जाता है जहां तक आप जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर आपका वो टाइम इसी चीजों के ऊपर वेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो आपने ही करना है सारा कुछ, ठीक है। और कुछ लोगों को मैंने पहले ही भी कहा था कि मैं इस्लामाबाद में होऊंगा, तकरीबन 7-8 को तो लाजमी होगा, 6 को भी शायद मैं हो वहाँ पर इस्लामाबाद में। आई एम गोइंग टू अटेंड अ कोर्स विद डॉक्टर लाल नमान ओवर देयर। सो अगर किसी को वहाँ पर टिम्स में है कोई, या टिम्स में आके पेशेंट की प्रैक्टिस करते हैं, सो इफ दे वांट एनी हेल्प और एनी डिस्कशन, तो वो भी हो सकती है बिल्कुल। बाकी यहाँ पर भी अवेलेबल है और हम मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट प्लीज इस चीज को जो है ना वो करें आप, क्या कहते हैं उसको, फॉर ग्रांटेड नहीं लें। अगर आपसे कोई ऑफर कर रहा है तो अगर आपको वाकई जरूरत है तो उसको आप यूटिलाइज करें, ठीक है। और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे लिए, ठीक है। ये बात आपको मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्जामिनर हम यहाँ पे बुला के आपको फेस कराते हैं, ना उनकी ऑब्लिगेशन है, ना उनकी ड्यूटी है, ना मेरी ड्यूटी है, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, बट अगर आप हेल्प लेना चाहेंगे तो तभी हम कर सकते हैं हेल्प। जैसे डे के स्टार्ट में कोई बंदा रेडी नहीं था आज अटेम्प्ट करने के लिए, सो थोड़ा एम्बेरसमेंट मेरे लिए भी है कि मैं किसी एग्जामिनर को बुला रहा हूँ और उसको वेट करवा रहा हूँ कि यार कोई बंदा जो है ना वो रेडी नहीं हो रहा एग्जाम देने के लिए। सो इस वजह से मुझे थोड़ा सा हुआ, फिर उस वक्त ही मैंने कह दिया कि भाई अगर इस तरह से करना है तो फिर मैं कल का डे करता ही नहीं, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आपने थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज करें, ठीक है। चलें, गुड लक टू यू गाइस, और इंशाल्लाह फिर कल सुबह 10 बजे स्टार्ट करते हैं। स्टिल आई एम वेटिंग के और 2-3 लोग मुझे अपने नाम बता दें कि ताकि हमारे पास कोशिश होगी कल भी हम 5 केसेस करें, ठीक है। तो वो हम अगर आप नाम बता देंगे तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा उनको टाइम लाइन करना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।